देखूं अपना फायदा ना, मेहनत जाती रहेगा ना, बेबी पर बैठाएगा ना, बायगॉन्स तो बायगॉन्स, दस तोड़ूंगा कोई कायदा ना, लाइक द वे शी मूव्स मेक माय माइंड बॉगल, तू ही जैसे ग्रूव, तुझे दिया सारा टाइम पागल, मेलोडीज हम भूल जाते, करना तुम रिवाइंड जरा, बेबी मुझे लाइन दे रही, मैं ही कह रहा माइंड अगर, और जाम टूटेंगे शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में, सोचा लिखूंगा आज और नहीं, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, we can do it all night, scars on my neck and I don't mind, I don't mind, I don't mind, it's all about the patience girl, I'm cruising in my own lane, own lane, own lane, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, वो नूर या कोई हूर नहीं है, वो नजरों से दूर नहीं है, तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन बोलूंगा मैं झूठ नहीं बेबी ये गुरूर नहीं, सच का सबूत नहीं, सच तो एक दरिया है, दरिया में कूद नहीं डूब नहीं, all the cameras at me जबकि मेरा शूट नहीं, बस अपनी क्या मुझसे मेरे बारे पूछ नहीं, छड़ दे बहाने तू बनाने छड़ दे, तू पीछे साढ़े आना छड़ दे, तू दिल नू वीराना छड़ दे, ए तेनू पता है मेरी हाइप का, जदों आमा करा माइक ड्रॉप, यादें और इरादे बशमूल सारे वादे मैंने मिक्स करके पिए in my red cup by love, सोचा लिखूंगा आज और नहीं, मैं तेरे पास जब कोई और नहीं, we can do it all night, scars on my neck and I don't mind, I don't mind, अरे it's all about the patience girl, I'm cruising in my own lane, भाई कितना अजीब लग रहा है। पास जब कोई और नहीं, अबे यार आदत नहीं है भाई ऐसा। ओके गेम में सही है, सब सही दिख रहा है, पर यार ऐसे दिक्कत होने वाला है। क्या विनीत कोई मैसेज ही लिख देता, इमेज बढ़िया इमेज है आपकी। यो गाइस व्हाट्स अप भाई, यार ये टेबल बहुत बढ़िया लगी, मम्मी ने बहुत सही टेबल बनाई है सच बताऊंगा, नीचे से फुट रेस्ट भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक इशू हो गया, मैंने पीसी ऊपर रख दिया ये सोच के कि यार पीसी ऊपर अच्छा लग रहा है, बट अभी ध्यान में आया कि पीसी तो दिखेगा ही नहीं। अब पीसी में नीचे रखता है यार। we can do it all night, scars on my neck and I don't Yo, Ani Singh, what's up, bro? I'm waiting for your new song, है ना? Bro, थोड़ा बूस्ट कर दो मेरा आईडी सर। मैं लड़की को बूस्ट नहीं कर रहा, तू तो फिर भी यार कहाँ से कहाँ बात ला रहा है, क्या हाल है? हमसे भी मीटअप कर लो भाई, तू अभी बहुत डेंजरस है भाई। बट ओनली जोक्स अपार्ट भाई, विनीत तूने सच बताओ तो जो एक होता है कि लाइक कुछ कुछ सीरियस बात पे तूने चैट रिवील किया ना गेमिंग कम्युनिटी में, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट चैट रिवील करना इज द वर्स्ट थिंग आफ्टर द हैकिंग के बाद अगर कोई चैट रिवील कर रहा है तो वो बहुत बुरा है, लोग ऐसे बोलते हैं अनटिल यू आर डूइंग इट। अब पता नहीं मुझे क्या सीन था क्या था, जो भी है भाई। आप आज गेमिंग कैफ़े गए थे ना? हाँ मानव अरोरा, मैं लैंड शार्क गया था फर्स्ट टाइम देखने, बढ़िया लगा यार, मस्त कैमरा तो सही है। अभी मैं आज मैच खेलने गया, मैच ही नहीं था आज, हमें बाय मिल गया, अब कल लाना है, कल 12:30 बजे मैच है हमारा, तो मेरे को यहाँ से 10:30 बजे निकलना पड़ेगा। सैड लाइक ब्रो। कोई साथ होता ना मैं सही में फिर स्ट्रीम भी कर देता। वेबकैम से दिखाना सेटअप, भाई यही सेटअप है भाई। बाकी इंस्टाग्राम, तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि भाई मैं अब इस टाइम पे लाइव आने वाला हूँ या फिर आने नहीं वाला हूँ या फिर क्या है। फॉर ओल्ड सेटअप भाई, नहीं ऐसे नहीं। अब भाई अगर मान लो तुम सबने कह दिया कि भाई सेटअप चेंज करो तो फिर वापस सब करूँगा मैं, भाई नहीं, ये एडजस्ट कर लो थोड़ा, अब कभी कभी चेंज चलता है। और प्लस ये इसको दिखाना ज़रूरी था, ये मेरी पहली मैंने लगाई थी पोस्ट, मतलब पोस्ट इन द सेंस पोस्टर पहला लगाया था, बाकी सब बाद में आया, ये पहले आया था, याद है? कौन जीतेगा लाउड या फिनाटिक? भाई आज तो ईजी वर्सेस पेपर एक्स है। आप मोहित कहाँ जी रहे हो? करने के बाद मुझे भी रिग्रेट हो रहा था, कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं। ऑल्दो मैंने मेरी टीम में बायला ही है जो हम ये लाइन इवेंट खेले, उससे मैं बात किया नहीं इस बारे में, बट मे बी आई विल, अभी तक कुछ पता नहीं। हैंड कैम कर दो एक बार प्लीज, बिग फैन। ओ हाँ हैंड कैम भी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है गाइस। ये देखो
तुम्हें दिखा देता है भाई, हैंड कैम भी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं। ओह या बाय द वे सॉरी, मेरे को फ्लेक्स करना था इसलिए नीचे गया। ये है पता क्या है, ज़ावी का लगा दिया, वो सब चेंज हो गया और हैंड कैम आराम से हो जाएगा। कल को मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही, आइए लेट्स गो। सही है ना, आज वॉच पार्टी में ऐसी करेंगे, यूं करते हुए। सही लग रहा है भाई। ठीक है भाई, बाद में करेंगे बट हैंड कैम। अब भाई मैं कैमरा सेट गलत कर दूंगा यार, ये हद है भाई। थोड़ा कर दो डायमंड 3 to A2 कर दो प्लीज़ भाई मेरे। तू डायमंड 3 से अकेला इस इमॉर्टल तक भी पहुंच जाएगा, तुझे खुशी भी होगी, बट अगर बूस्ट होगा तो कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं, ट्रस्ट। तुझे करना है तू खुद कर भाई। मैं आऊँ कल कैफे। अबे भाई तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ बता भाई। हमें सेमीफाइनल में हम जीतते थे, हार गए चलेगा, और दुख नहीं चाहिए भाई। विनीत भाई ट्रस्ट मी भाई, इस टाइम पे ना मतलब देखो, मैं अगर किसी से नहीं मिलना चाहता ना तो मैं सीधा मुंह पे कहता हूँ, मैं अभी तेरे लिए डाउट में हूँ कि मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ। कभी मिलूंगा लाइफ में, अगर जयपुर आया तो मिल लूंगा, बट ऐसे मत। साहिल अब अगर पता क्या, अगर मान लो मेरे को कोई दिक्कत होता है ना कि जानना है वो कुछ, मैं साहिल को बोलता हूँ। साहिल भी उस दिन कह रहा है मेरे को, कह रहा है भाई तू कुछ भी बोल, मैं बात नहीं कर रहा अभी। मैं कह रहा ठीक है भाई, कोई क्या करेगा इसमें, कोई कुछ कर नहीं सकता ना, इधर यू जस्ट हैव टू फोकस। अब बाकी तूने अगर गेमिंग कैफे का करना है जयपुर में तो भाई मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर रेंट पे मत लियो, जगह खरीद ले, क्योंकि अगर मान ले कल को गेमिंग कैफे नहीं चला तो तेरा कम से कम वो जो तूने खरीदी हुई जगह है वो तू रेंट पे कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उससे रिटर्न आ सकता है। सो ऑलवेज गो फॉर द बाय इफ यू कैन। आप बैंगलोर क्यों नहीं गए स्काई स्पोर्ट वाली में? भाई मैं पता बहुत दुखी है, देख मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत क्रिएटर्स से मेरा फॉलोअप है, लाइक कनेक्ट हूँ, तो बहुत क्रिएटर्स जो मेरे दोस्त सब वहाँ पे गए हैं, फेलो स्ट्रीमर्स, फेलो क्रिएटर्स, फेलो फ्रेंड्स, और उनकी जो स्टोरीज आ रही है मैं देख रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग इनटू डिप्रेस कि you know only one thing I'm not getting कि why they didn't invite me, plus but if they didn't invite me, मेरे अंदर से कुछ अंदर से ये आया कि भाई अब इतना बड़ा बनना ही है फिर, कि I don't wanna cooperate with Sky Sports anymore. So अगर आगे कल को उनका कुछ सीन होता है, शो मैच या कुछ, मेरे को नहीं पता, मैं शायद ही लूँगा। अगर लूँगा तो सबको मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं पैसे के लिए करूँगा, अब नहीं करूँगा। मैं मे बी नॉर्डविन के लिए मैं फ्री में कर दूँ, बट स्काई स्पोर्ट नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। ये स्काई स्पोर्ट चेन्नई के जो लैन इवेंट हुआ था वहाँ पे भी यही हुआ था। उन्होंने फ़्लाइट के मुझे 6 दिन में से सिर्फ 2 दिन जब एंड में बोला आने को, मैं आया, उन्होंने मेरे को फ़्लाइट का टिकट दिया, दैट्स रियली ग्रेटफुल, ग्रेट जेस्चर। बट वहाँ रहने का मैंने खुद से किया सारा, और 2 दिन सबसे मिलके बस निकल लिया। उससे पहले भी एक इवेंट हुआ था बैंगलोर में, विद आई डिडंट गेट इट, और दिस इज द थर्ड टाइम। सो सॉरी बट डजंट मैटर, राइट? उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को बुला के कुछ करके, तो सेम वाइस वर्सा। सो आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ एनीमोर। रियली ग्लैड कि स्काई स्पोर्ट्स में मेरे को लगा कि भाई बहुत अच्छा है, हमने फर्स्ट टूर्नामेंट जीता था स्काई स्पोर्ट्स का वैलोरेंट में जो था, थैंक्स टू घाटक सर और जो भी स्काई वो सारी जो टीम में था। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। So I'm feeling like this is the real truth coming out slowly. तो इसलिए I'm not gonna focus on that anymore. Maybe इससे बढ़िया मैं ट्राई करूँ कि घर पे बैठ के ग्राइंड करूँ और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। मेरे को अगर क्रिएटर्स, हाँ नो डाउट यार, दैट्स रियली काइंड ऑफ फील सैड कि जहाँ सारे क्रिएटर्स जा रहे हैं तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए था, होना चाहिए था। एंड मैं चाहता तो अपने पैसों से जा सकता था बैंगलोर में, क्योंकि मेरे कज़न्स भी रहते हैं और साथ ही साथ मेरे दोस्त रहते हैं जो मुझे, जैसे खेलतू साठ है जो कहता है भाई घर पे रह लेंगे, भाई रियली स्वीट पीपल। तन्वी भी यही थी, वहाँ पे गौर मामा भी है, सारे अपने आसपास के क्रैक तक है, तो मैं रह सकता था। बट अगेन आई डोंट नो, आई रियली फील, क्योंकि अगस्त का मंथ है, मैं ऑलरेडी छुट्टियाँ बहुत ले चुका हूँ, तुम्हें पता ही है, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता था। सो या सॉरी, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, स्काई स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई यहाँ पे बात ना करो तो अच्छा है, थैंक यू। लेट्स फोकस ऑन द मैच जो आने वाला है, ठीक है? जस्ट
व्हाटएवर यार। आई थिंक वहाँ पे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब हैं यार। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ है। मैं हाँ ये है कि मुझे ये ज़रूर जानना कि कोई क्रिएटर ऐसा है वहाँ पे जो बिना पैसों के लिए गया है, लाइक अपने फ्लाइट से वो सब, तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। बट एडवाइस उसको यही रहेगी कि भाई तू गलत कर रहा है सच में। By the way, what's your opinion about orgs which literally have esports in their name, but all they organize and all they play in just BGMI? Yeah. Opinion on orgs which literally have esports in their name, but all they organize and all they play in just BGMI. I have no clue about that. Everyone deserves second chance. विनीत बिल्कुल आप second chance का deserve करते हो, but आपकी कहानी किसी को इतने ढंग से पता नहीं है. Worst part, you know me, right? And before doing this kind of such trick, you should have asked me at least. मैं यार कम से कम इतना knowledgeable नहीं हूँ, but इतना तो है कि अगर कुछ सीन है तो उसका, अब मान ले कल को मैं, अब मेरे को ट्रस्ट इशू हो जाएगा यार। अब मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ, कल को हम फ्रेंडली मिलते हैं, राइट? कल को मैं और तू खेल रहे हैं और तुझे हीट और मूवमेंट में तूने कुछ और शेयर कर दिया जो मेरे रिलेटेड भी नहीं है, कुछ नहीं है, और तो लगेगा तो मुझे भी ना। तो जब तूने ये किया मैं शॉक था भाई, मैं भी शॉक था कि आई डिडंट एक्सपेक्टेड यू टू डू दैट, यू नो। बाकी क्या कहानी है तेरे एंड से, दूसरे एंड से, किसी को इतना जानने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, नो डाउट तू वापस वही करता रहे, कुछ ये हो जाता है। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे करते हैं, क्रिएटर्स कह रहा हूँ, बहुत सारे गेमर्स हो जाते हैं। आप अगर खोडोगे तो मैं आपका चैनल ज्वाइन कर लूँगा। खोडोगे क्या होता है? अच्छा करोगे भाई। आई पोस्ट एनीथिंग विच आई फील इंटरेस्टिंग। भाई नाम अच्छा है, बट सॉरी यार मैं बूस्ट नहीं करता हूँ, चाहे आप कितना भी पैसा दे दो। हाँ अगर आप मान लो हम कभी लाइफ में मिल रहे हैं तो शायद कर दीजिए। मैं भाई लड़कियों को बूस्ट नहीं करता भाई, उनको भी यही कहता हूँ खुद खेलते रहो। I mean there have many servers on Discord with 100k members and they are just into BGI। भाई ये तो लोगों का है ना, लोगों को भी तो है। अब देखो जैसे पीसी गेमिंग में क्या है कि you wanna grow, I wanna grow, let's grow together। ये फेज बहुत कम है अपने पीसी या मोबाइल दोनों में एक्चुअली, ठीक है। तो इट्स लाइक अगर जैसे मेरे को तुमने देखा था और लॉकडाउन में मैं 2K इतने हाई पे गया था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत सारे लोग क्रिएटर्स आने लग गए, साथ खेलने लग गए, भाई इसकी बहुत हाइप आ रही है। एंड देन आफ्टर गोइंग डाउन एवरीवन गॉन। अब नाउ जो रह गए जो है, यही चीज़ है। दिस इज़ अ फ्यूचर मैन। आई मीन अभी तो हम NAU के जितना हुए भी नहीं है। आई एम जस्ट स्केर्ड कि आगे 1-2 साल 3 साल में क्या होने वाला है। पब्लिक जाएगी एक के पास, पूरी उसकी ट्रेंड बनेगा, उसका वो सब बनेगा, सारे क्रिएटर्स पे झपटा मारेंगे। एंड देन यू नो व्हाट आई मीन। So it's let's not, I don't know why, wait, what the fuck, where we are? हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हमें गेम खेलना आया हूँ, ये सब करना आया हूँ। Why you are asking about my opinion से? I don't want to give my opinions on this। भाई क्या वॉच पार्टी करना है भाई, अभी गेम भी खेलना है। अब एक इशू ये है कि मेरा जो मॉनिटर है वो राइट में नहीं हो सकता क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। ये इतना कनेक्ट हो गया ना पीछे से कि मेरे को दिक्कत हो गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ हाँ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक साइड हूँ ऐसा लग रहा है, तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। या तो मुझे पीसी को डाउन रखना पड़ेगा, पीसी अगर नीचे रखूँगा तो फिर स्पेस बन जाएगा, और पीसी नीचे आएगा कहाँ? वैसे तो आ जाएगा, देखना पड़ेगा। अभी मैं कल लाइट की वेट करो, मैंने एक एस्ट्रो वाली लाइट मंगवाई है, यहाँ पे लगेगी, ऐसे रोशनी आ जाएगी। मेरी साइड की स्टोरी लोग जानना ना ही चाहते भाई। विनीत भाई अब तू स्ट्रीम पे बुलवाना चाह रहा है तो मैं बोल देता हूँ भाई, देख तेरी स्टोरी मुझे भी नहीं पता और बहुत लोगों को नहीं पता, और दूसरी साइड बट पता क्या, एक पब्लिकली कुछ दिखता है, तूने कुछ वो डाला सब, ठीक है, कि कहते हैं तूने व्हाट्सएप प्राइवेट चैट डाली किसी एक लड़की के साथ बात करते हुए, तूने डिस्कॉर्ड की चैट्स डाली, ये हो गई तेरी 2। उसके बाद एक लड़की है, आई डोंट नो क्या सीन है, उस लड़की ने डाला कि तू उसको कॉल करता है, बार बार बुलाता है, खेलने को बुलाता है, क्या करता है, क्या है वो सी। अब ऐसी 1-2 और लड़कियों ने बोला है। अब अगर ऐसा सीन है, 3-4 लड़के 5-6 लड़कियां बोल रही हैं, तो थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आई मीन हम सब तो यही सोचे। अब भाई लड़कियों से भाई प्रेम तो मुझे भी है बट मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना जाके हाय आई एम नॉट लाइक अदर बॉयज, विल यू प्ले विद मी, ऐसा तो ना करूँगा। It just happen, like if somebody wants to play with you, they will ask you, and you can ask once, बस simple है। You cannot just spam, like I know kids do that,
किड्स लाइक 16 और 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे हाय 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 पूरा वो डाल देते हैं। कभी कभी लगता है कि ये बच्चा है, ये मजे कर रहा है, कौन है, ठीक है। एंड फिर कॉलिंग वाला सिस्टम आता है, ऑल्दो थैंक गॉड उस पर इतना नोटिफिकेशन नहीं आता, बट स्टिल ब्रो। एंड गलती तेरी भी नहीं है। आई वॉन्ट टू आस्क गर्ल्स कि भाई हाउ कैन यू कैन शेयर व्हाट्सएप। आई मीन ओके फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत जल्दी लड़कियों के व्हाट्सएप जो गेमिंग के उसमें मिल जाते हैं क्योंकि दे नो मी, दे नो कि पब्लिक जानती है, कम्युनिटी में है। बट आज तक मिसयूज़ नहीं करना कभी इन चीज़ों का, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग एक मिसयूज़ तुम्हें वो कर देता है कि यार और मिसयूज़, धीरे धीरे वो अंदर से आ जाता है, ईविल बन जाता है सीरियसली। बाकी यार मुझे भी नहीं पता भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग आज चल नहीं रहा। मैंने पता नहीं, मैं सच बताऊँ आज मैं मेरा बसड़ हो चुका है, मतलब मेरा बीटी मिली है। बीटी अगर मैं बताऊँ तो बैड ट्रिप कहते हैं, मतलब कि ऐसे समझो मैं यहाँ से गया, पहले तो सुबह उठा, पापा का फ़ोन आया कि बेटा ये कहते हैं तो वो आ रही तेरी टेबल, ये सीन है, ऐसे गाड़ी से भिजवा रहा हूँ, ठीक है। टेबल आई, सब वो किया, 4 घंटे के अंदर सारा सामान जल्दी जल्दी किया और यहाँ से मैं निकला 4 बजे। कहाँ पे? लैंड शैक के लिए, गेमिंग के लिए। एंड डूड 2 घंटे लगे मेरे को ड्राइव करते हुए, गाने बजाते हुए, ये सब करके पहुंचा। जैसे ही पहुंचने वाला था वहाँ मुझे आया कि भाई आज मैच भाई मिल गया है, कल आना है। वहाँ पे AKG, नेव जैसे बाकी लड़के जो बाइला और तनिषा खेल रही हैं, और एक और स्ट्रीमर थी, जेड से उसका नाम था, मैं भूल गया, उसका रियल नेम शैदी है, ठीक है। तो ये लोग थे, मैं वहाँ गया, मैं कहा चलो ठीक है मिल तो लेंगे। मिला, अच्छा लगा मिल के, नो डाउट, ठीक है। ये लोग खेल रहे हैं, फिर हम गए, फिर खाना वाना खाया, फिर मैं यहाँ से चला गया, घर पे आ गया और स्ट्रीम कर। मतलब मैंने किया क्या आज, मुझे यही नहीं पता चल रहा भाई। अब कल फिर जाना है, फिर कल 12:30 बजे मैच है और उससे पहले पहुंचना है, मतलब कि हमें 12 बजे तक पहुंचना है। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा 10:30। वैसे कल संडे है, 11 बजे भी निकलूंगा तो ठीक है, बट यार सीरियसली मैन। और फिर कल वापस 12:30 जीते, ठीक है। अगर हम सेमीफाइनल जीतते, फाइनल खेलेंगे, फाइनल करने के बाद 6 तो बज ही जाएंगे, और फिर आते आते स्ट्रीम फिर लेट हो जाएगा भाई, यही मेरी। और फिर रक्षा भी आ रहा है, रक्षाबंधन भी आ रहा है भाई। क्या हो रहा है इस अगस्त में, मेरे को कोई बताओ यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा। ओजी कैम इज बैक, या ओनली ओजी नोज दिस कैम, डूड आई एम सीरियसली लाइक व्हाट द हो रहा है। अगस्त में स्टार्टिंग स्ट्रीम किया, फिर उसके बाद बैंगलोर गोवा होने के बाद वापस आया, स्ट्रीम स्टार्ट किया कि वॉच पार्टी आ गया, नींद की, स्लीप की, सबकी लग गई। ओह यार, देयर यू गो डॉग। I'm fine. Bad mood? Just drink dog. Rakshabandhan I think 30 or 31st को है. Even I am not sure. Ta 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 ta. डॉग पी के मजा आ गया। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हो गया? चलो आज चिल स्ट्रीम भाई। गेम मैं सोच रहा हूँ खेलूँ या नहीं खेलूँ, मेरे को तो डर लग रहा है। नया माउस पैड है नो डाउट, बट स्टिल जाओगी का ले लिया भाई, देखते हैं गेम में। बट यार मेरे को डर पता क्या लग रहा है, मेरा ये एंगल, यार तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, इधर आ देख, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल यहाँ पे मेरा ऐसे बैठा हुआ, मैं समझ रहे हो भाई? तो आयरल स्ट्रीम हो जाएगी। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। वैसे पता मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। दिस लुक्स नाइस टू dude, this looks nice too. Whoa, this looks nice too. Seriously, that poster भी अच्छा लग रहा है।
But nah, I think I feel like I feel little embarrassed, like shy type. Mr. बेड के पास वाली लड़की नहीं दिख रही भाई, यही दो तो हैं भाई. What do you mean? Wanna be Harsh Kela, shouting streamer? Shouting streamer? I don't shout. No? किसने कहा तेरे को? मैं सिर्फ गेम खेलते खेलते आवाज़ ऊंची हो जाती, शाउट नहीं करता. सेटअप चेंज ब्रो, आई एम चेंज भाई. दिख रही है, स्ट्रेट मत रखियो कैम. अब दिख रही है. अच्छा, लड़की है कि शाय फील कर भाई? क्या मतलब है लड़की है? कुछ लड़कियां होती है जो शाय फील नहीं करती मोहित. दिस इज रॉन्ग ब्रो. यार मेरा मन नहीं करेगा यार, मेरे को लग रहा है सेटअप चेंज ही करना पड़ेगा. ये पीसी नीचे रख के यू करना पड़ेगा. एक बार खेल के देख, या तो मैं इसको चेंज कर दूं. मैं थोड़ा चल बे साले, क्या कर रहा हूं मैं. रुकना, ये ले. भाई अब मैं पीछे भी नहीं रख सकता, छुप जाएगा. You clean shave needed, really? भाई ये तू मत बोल. आई थिंक गर्ल्स विल. अबे उज्जवल बोल रहा है, छोड़ भाई. तू भाई उज्जवल ये भी कहेगा ना कि भाई तू, तेरी बात पे किसी यकीन ही नहीं होगा भाई, तू कुछ भी कहे एक्चुअली. I don't wanna fuck down every time you see. Dude, I'm feeling weird, but I don't know, man. Let's see how game will be. Dude, mousepad looks nice. बस इस mousepad पे कभी कुछ गिरे ना ये भगवान प्लीज. $12:30 स्टार्ट होगा आज फाइनल्स. यस. Wait. Yeah. Dude, यार seriously problem है यार. I don't wanna leave you now. अभी देखते गेम. Bro, is your YouTube your part-time job? It's full-time job, bro. Because of you, I am doing full-time. I can do. Oh, sorry. Bad English. Because of you, I can do full-time. That's better. Hey! Why it looks like... Okay. Okay, fuck it. आदत हो जाएगी. माउस पैड का प्यार है. माउस कैम भाई मेरे को लग नहीं रहा आएगा. साले तुम बार बार यही काम करवाते रहो मेरे से. एक बार ऐसे कर रहा हूँ फिर उसके बाद नहीं करूँगा बार बार, समझे?
एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास वो पड़ा हुआ है गाइस, कहते एक और कैमरा मैं कर सकता हूँ. I have a Punjabi girl who doesn't want long distance relationship but wants only IRL. What to do? Wants only IRL? Long अबे ओ IRL नहीं कहते उसको. Long distance relationship नहीं चाहिए but short distance कहेंगे उसको. I don't even know but IRL नहीं कहेंगे for sure. But I get the meaning. Punjabi but ये क्या मतलब है? You could have said you like a girl. वो ये पंजाबी गर्ल क्या होता सी? Who doesn't want long distance never wants. What to do? भाई अगर तू सही में करता है तो फिर ट्राई कर, उससे नहीं होता फिर उसको क्या? भाई ये तो तेरे पे डिपेंड है ना भाई. नीचे फेस के माउस कैम ही रख. सोच ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ब्रो. तुम लोग फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद भाई प्लीज तेरी शक्ल देखो. ओ ब्रो मेरी आईज पेन हो जाएंगी मुझे लग रहा है. थोड़ा तो गलत है. Let's see. Few months ago, I was in your compy game, and when I asked you to add me, you said Immortal 3, and now I am Radiant. Accept my request. Rochi is nasty. Shade. Okay. Fool. What do you mean? I feel like. Oh, God. Match found. Chad, I don't know, bro. But I can add you. Doesn't matter you are Radiant. Immortal 3 is enough. But what's the point? I rarely play with somebody until they are, you know. Death match. Warm up. अबे नकली प्लेयर. तो क्या हो गया, सभी नकली होते हैं. ये हरामी था. I added you. You're all more important than words on a brief. Look out for each other. Fight. No heroics. Follow तेरा protocol. करियर देखूंगा अभी. लीडर बोर्ड पे रेडियन है ना. फिर बताता हूँ. भाई ये नहीं हो रहा. भाई हो रहा है. आ रहा है. 3 down. भाई ऐसे ही चूती है. हाँ देखा. मैं सोचा मैं अच्छे प्लेयर्स को मार. मैंने डिले नहीं डाला तो स्ट्रीम स्नाइप हो भी गए तो कोई बात नहीं. By the way, I have right. भाई स्ट्रीम स्नाइप कर रहा है. डिले नहीं है आज तो सारे स्ट्रीम स्नाइप करेंगे. ये पक्का इंडियन है. इंडियन ही तो करते हैं ना स्ट्रीम. भाई गलत बात है. बाहर के लोग भी स्ट्रीम स्नाइप करते हैं अगर आपका गेम अच्छा है, वरना तो बिना स्ट्रीम स्नाइप के भी जीत सकते हैं.
भाई यार, ये रुको भाई। अब मैं करूंगा कैसे? Caution here. यार ये क्यों अड़ रहा है भाई? अड़ना नहीं है बस इसको। You have only one. माउस गिरी नहीं, वो अटक गया ना। ये अटक रहा है यार बार बार। क्या करूं मैं? ये देख, ये नीचे आ रहा है, इसको उधर से ले आना पड़ेगा। रुको, Halabra. अरे यार Hostile down. Die and be done. इधर आ। Dominating. Your favorite Vandal skin? Barbie. 10 kills remaining. Scratch one. So long. भाई कितना सिम करे? सिम क्या किया? अब क्या सिम है इसमें यार? Kill confirmed. 3 down. मैं मारूंगा, तू मर जाएगा। 5 kills remaining. Target down. मेरे आजा, मेरी गोदी में बैठ जाए, साथ चलेंगे। तू मारियो, मैं भगाऊंगा। अभी इतना लंबा क्यों चल रहा है ये मैच? Down. One kill remaining.
ओह भाई क्या अंदर चला गया? हाँ मोहित एक बात बता, जब अंदर जाता तो ऐसा लगता तेरे को क्या? ऐसी आवाज आती है जब कुछ लग जाती है ना चोट या कुछ, तब ऐसी आवाज आती है। ये क्या है भाई? मोहित तू जिस दिन मिलेगा ना मेरे को याद रखूंगा मैं। ओह ये वेलकम। Whoa! We are God! Let's go! We just threw every single thing. पूरी रिंग लाइट ही गई। Fuck hell. भाई तू क्यों, ये कैसे बच गया? तू भी गिर जाता भूल। अभी रखा कैसे था मैं भूल गया। बिना रिंग लाइट के ना ऐसे दिखेगा भाई। नहीं पिंक ta 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 ta. I hope अब ना हो इशू। कॉम्पी तो मैं खेल नहीं सकता आई गेस। Oh my god, check my career and अरे Chad, okay. Dude, please don't be like a kid, man. Please, I request you for that. Pretty good. Wait, you from any other country? I mean, I thought you were Indian. Oh, that's a good thing. Like from Immortal to jump to Radiant. That's good. Well done, bro. Well done. I'm 15. Sorry, bro. Okay, I tell you one history, huh? I am Nepali and I am the only Radiant for Nepali. Then I'm adding you. Just because of that, you said you're from Nepal and not only Radiant, there must be somebody else. But yeah, I'm adding you, bro. Yeah. But I'm not playing now. Okay. मैं सोच रहा हूँ कल के बाद सेंस चेंज करूँ, कल लैन खेल लूँ फिर। सोलो भाई, I played for 8 hours in post
9 मैचेस, आई रिग्रेट इट नाउ आफ्टर प्लेइंग। देखो नेपाल की लड़की अच्छी लगती है, वो उनसे तेरी बात करवाएगा। अबे भाई मोहित, हर बात को सीरियसली पता नहीं क्या है तू, लड़कियों पे क्यों ले आता है। मैं चल तेरे को बता देता हूँ। आई डोंट नीड एनी नेपाली गाय टू इंट्रोड्यूस मी टू नेपाली गर्ल्स। वाई? आई ऑलरेडी हैव। मेरे कॉलेज में भूटान के, नेपाल के थे, मैं उनसे बहुत कनेक्ट हूँ। लड़कियाँ थी, लड़के तो एक भी नहीं था। एक अरुणाचल प्रदेश का था जिससे मैं कनेक्ट हूँ। और अभी नेपाल की जो कहते हैं 1 2 तीसरी की तो शादी हो गई, 2 हैं नहीं 3 हैं, चौथी की एक की शादी हो गई, 3 हैं। एक इंटीरियर का ही काम कर रही है तो इसलिए मैं ज़्यादा ही कनेक्ट हूँ। दूसरी कनाडा जा चुकी है, बट आई वॉज द ओनली फ्रेंड दे हैड इन द कॉलेज, तो इसलिए अच्छी दोस्ती रही। तो हाँ, तो मेरे को कभी भी नेपाल आने का होगा। मतलब तो सिंगल नहीं है? अरे भाई फ्रेंड हूँ भाई, कोई फिजिकल नहीं है मेरा किसी लड़की के साथ। सो डोंट बी लाइक कि भाई सिंगल नहीं है। अब ऐसे भी होता तो बताता नहीं। बट सीरियसली आई एम मोस्टली यार, मैं फ्रेंड्स, मैं सबसे इमोशनली कनेक्ट जल्दी कर जाता हूँ। फिजिकल मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन पे। यार मुझे लग रहा वायरलेस यूज करना पड़ेगा माउस। ओह नो यार, ये तो बहुत बड़ी बीटी है यार। बट यू नीड एन बंगाली वन फॉर प्रपोजिंग अ बंगाली गर्ल, वरना काला जादू तो ऑप्शन है वैसे भी। क्या क्या? What the fuck? Wait, are we living in 2022 or 90s? I do have Bengali friends too, by the way. But yeah, I'm not really that much connected. What the hell? ये तुम्हारा VCT पैनल कैसे है भाई? राइट ने स्पेशली दिया है ये, क्योंकि मैं दे वांट मी टू बी इन VCT, बट मैं हूँ नहीं। मैं दूसरा वाला लगाऊँ, फिनिक्स वाला। फिनिक्स वाला अच्छा है कि कौन सा लगाऊंगा? इस फिनिक्स या सेज? सेज रो रही है जिला। सेज। ओ बाय द वे यूपीआई आ 5 घंटे रह गए यार। भाई वेट कर रहा था तब से, भाई दूसरी बार आ रहा है। बट यार मेरे को, मैं सोच रहा था ये ले रहा हूं, मैं सोचा था ये लूं। अरे यार बीटी हो गई यार। एक मिनट, यूपीआई सिस्टम पहले आया नहीं आया ये दिखाओ। मेरे को तो सुनने में आया था, आ गया गाइस। बाय द वे यूपीआई सिस्टम आ गया है वैलोरेंट में, जस्ट टू टेल यू। पहली रुको मैं बता देता हूँ। वैसे सबको बताना भी ज़रूरी है यार, फिर कहेंगे भाई आप इंस्टाग्राम पे बताते नहीं हो, फॉलोअर्स मिलते नहीं है, ये नहीं। मैं कब भाई यार करता हूँ, कैसे करना होता है। हाँ, वैलोरेंट में स्किन्स चाहिए, फ्री में नहीं मिलेगी, बट हाँ यूपीआई वाला सिस्टम आ चुका है, जाके चेक करो अभी के अभी। ये अच्छा था ना। कैलकुलेटर
अबे यूपीआई तो दिखाया नहीं। हाँ दिखा दिया। नाटी ओए भाई वो हो जाता अभी। गाइस क्या करूं गाइस यार, यूपीआई आ गया भाई। ओके 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 वेट 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 होल्ड ऑन। पहले इसमें खर्चा बहुत हो गया भाई, रुको देखने दो। पहले मैं देखूंगा फिर सोचूंगा फिर समझूंगा। भाई बंडल भी ले ले और अच्छा अच्छा आदित्य फिर पता है मेरे को बहुत सारी स्ट्रीम और कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि लोग पैसा की बरसात करे, समझ रहे? यहाँ पे लगे पड़े और तू स्किन के चक्कर में कह रहा है। वैसे स्किन्स लेनी नहीं चाहिए मुझे क्योंकि CS2 आ रहा है, समझ। और मैं सोच रहा था कि अभी मैं स्टीम पे जो पैसा रखा है ना 6000, उनमें से 3000 की गेम लूँ और स्टोरी मोड गेम करूँ, ये सोचा था। पैसा तो है मेरे को, इसमें कितना पे करना है? इससे बढ़िया तो यार गर्लफ्रेंड बना लूं। गर्लफ्रेंड को पैसे तो मिल जाएंगे, कम से कम प्यार तो देगी। स्किन इसका स्किन भाई एक बात बताओ, मैं सच से बता रहा हूँ भाई, एक बात बताओ, अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लो चाहे उस पर पैसा खर्च करो, कम से कम वो रिटर्न में प्यार देती तो है। ये गेम में भाई साला स्किन्स खरीदने के बाद प्यार तो मिलता नहीं और दुश्मनी मोड़ और ले लेती है भाई। क्या भाई मैं नहीं करना चाह रहा यार। भाई ये तो सही में भाई क्लिप बना के भेज दो हर जगह, सही में भाई सही बात है, बिल्कुल सही बात की है, मतलब नो डाउट वाली बात। भाई CS2 कब आने वाला है? भाई कैलेंडर के हिसाब से 27-28 को, बट मेरे हिसाब से अगले साल। नहीं भाई टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? भाई टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं? ठीक है यार, मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुझे तेरे से बात कर रहा हूँ। मनन भाई, आपका नाम भी मनन भाई, मेरा नाम भी मनन भाई, फिर भी कर दी ना मनन वाली बात। मानस क्या हाल है भाई? नेक्स्ट गेम जीता तो ले ले वरना बाद में सोचना। नेक्स्ट गेम जीता मतलब गेम नहीं खेल रहा मैं। What make me a good streamer? Solo. हेलो हाँ सेक्स ओह मतलब स्ट्रीम, हाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ, बता भाई। तू पागल है भाई, मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं 4 बजे से लेके 2 घंटे की ड्राइव करके दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया। तू उस टाइम बोलता मैं वहीं से तेरे पास आ जाता। आज एक्चुअली फाइनल्स है। स्ट्रीम कर रहा हूँ, तू यूट्यूब पे खोल के देखना एक बार। कभी आज तक खोला यूट्यूब? एक बार यूट्यूब खोल, SoloManan लिख। हाँ भाई अभी 40 आज 5 बजे रात के 5 बजे तक, क्योंकि आज वो है ना फाइनल्स है, तो देखने को मिलेगा। देख रहा हूँ मतलब वो कहते स्ट्रीम कर रहा हूँ देखते हुए, उसको कहते हैं वॉच पार्टी। नहीं अगर होता मैं आ जाता, सही में आ जाता। मैं तेरे को एक बार कहूंगा यूट्यूब पे ना जाएगा SoloManan लिख, उस पे तू जाके एक बार देख, उधर चैट होता है। सुन तो चैट है, एक बार वहां पे लिख दे हाय मैं हूं आदित्य, लोग समझ जाएंगे। फिर देख लोग क्या प्यारी प्यारी बातें करेंगे। कल को पता चले तेरे वहां पे भी आ जाएंगे स्टोर पे। चल ठीक है ओके। इसके स्टोर पे कोई 2-3 लोग आए थे, कहते SoloManan यहीं पे है, तो क्या था भाई पहले आपको ये सब खरीदना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। जो पूरा सेल आउट बन गया भाई। अरे हाँ हम ये ले रहे थे, क्या कर रहे थे गाइस? ले लूँ? ठीक है रुको ये 4300 भाई। कैलकुलेशन करना भी जरूरी है। अरे भाई
हाँ भाई रुको भाई, स्किन ही ले ले, स्किन जिंदगी भर रहेगी, बंदी नहीं भाई मोहित भाई। चल बंदी जिंदगी भर ना रहे, बट जो टाइम में रहती है ना वो मूवमेंट ही याद रहते हैं, उससे ना दर्द होता है, उससे उसकी क्या कहते हैं महसूस होता है, मूवमेंट होते हैं, ठीक है। और कल को सैड सॉन्ग पे फील आती है, बेंचो मेरे को सैड सॉन्ग पे कोई फील नहीं आती, इसलिए मैं सुन लेता हूँ। और फिर लोग कहते हैं भाई तुम सैड सॉन्ग कैसे सुन लेते हो, क्या बताऊं इसको कि भाई मेरे को कभी दिल टूटा ही नहीं, तो फिर इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं मेरा दिल टूटता नहीं भाई, मेरा जिगरा है, जिगरा 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 क्या था वो डाल, भूल गया ओके। भाई सच बता रहा हूँ, बट ठीक है यार, वर्थ इट पता नहीं होगा। 435 प्लस वी आर गोइंग टू बाय बंडल, राइट, क्योंकि चैंपियंस है ऑब्वियसली, ये अब तो बंडल मत बाय कर, ये वाला बंडल रहने दे। यार ये कंफ्यूजन हो गया, बंडल है कितने का, 6000। ओ बेस क्या, अबे 1667, अबे प्लस क्यों आ रहा है, 10,000 पैस किया। और भी अगर कोई नया बंडल आ गया है कुछ, वो तो लूंगा, नहीं लूंगा भाई, ले लूं, जस्ट बाय द गन। यार नाइफ भी तो अच्छा लग रहा है ना भाई, वैंडल और वो ले ले। एक सेकेंड भाई, एक बात बता, 33% ऑफ, ठीक है, और ये 33, अच्छा ये सस्ती हो गई। अच्छा नाइफ बहुत महंगा है, भैंस क्या, ये सस्ती है, 2675 2675। अबे अभी भी तो महंगा ही है, 7,000 तो फिर भी देने पड़ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, ले देख के तो मुझे यही वाला लेना पड़ेगा। 7,000 भी अगर वो करने ही है लेना, तो 8,000 वाला लेना पड़ेगा। 8,000 लिया तो मेरा ये ऑलरेडी है ही, तो फिर बंडल ही लूंगा, आगे के लिए बचाऊंगा थोड़ा ना भाई। बकवास है ये वाला, नहीं ले, बाकी तेरी मर्जी भाई। चैंपियंस 2023 में इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसके साथ क्या मिल रहा है, ये सब बकवास है। रुको सही कह रहा है, या तो मैं फिर ये ले लेता हूँ, है ना, ये ज़्यादा बेटर है, क्या कहते हैं। नहीं ये मैं नहीं ले रहा, माचो भाई, ये बिल्कुल नहीं ले रहा मैं, ये तो ले लेता हूँ, फिर यही ले लेता हूँ, बस ये ले लूँ, बस ये ले लेता हूँ। चैंपियन वैंडल नहीं ले रहा। अगर तुझे स्किन नहीं लेनी तो मेरे को दे दे। दास भाई तूने मेरे क्या किया, तूने वॉच पार्टी में भी बात नहीं की, ठीक है, यहाँ पे आके मॉडिंग भी ऐसी नहीं की, तूने किया क्या है। मतलब अगर कभी किसी ने मेरा फैन पेज बनाया भी होता और वो हर दिन कुछ पोस्ट कर रहा होता, तो मैं उस एक तरफा उसके लिए सोच लेता कि भाई उसको हर महीने बैटल पास आ जाना चाहिए, एक बंडल आ जाना चाहिए, सोच भी लेता मैं, नहीं तो फिर उसको पैसा देता। तूने किया नहीं, कॉल कर दे भाई, ये ले रहा हूँ मैं भाई, ये ले रहा हूँ, ये है भी नहीं मेरे पास, कुछ ऐसा है भी नहीं, मैंने इस बचाया इसके लिए था, यही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी पता चले यूपीआई चल ही नहीं रहा। चैंपियन वैंडल और आरजीएक्स, चैंपियन वैंडल नहीं ले रहा यार, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, मेरे को चैंपियन वैंडल ही पसंद नहीं आ रहा। ये वाला ठीक लगा, दूसरा वाला इतना बढ़िया नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी वैंडल्स भी है, नाइफ तो भर के है, बट स्टिल। एक काम करें, कुछ लेते ही नहीं, क्या बोलते हो। ये स्क्रीन चेंज होगी मतलब ले रहे। अभी कितने का था, 4,000 वाला ले लो। अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ अभी।
कुछ हुआ ना? कैम ग्लिच, हाँ। I got scared. भाई जिम करो भाई, तू बन जा मेरा जिम ट्रेनर, मैं पक्का जिम करूंगा यहीं पे आके, करी हुए दिल्ली नहीं जाऊंगा भाई। मुझे एक जिम ट्रेनर मिली सही में। उसने मेरे को कहा सिर्फ एक कौन है, मैंने कहा ऐसा क्या कौन होगा, मैंने कहा जिम ट्रेनर तो आके करवाता है ना। तो कह रही तुझे उधर आना पड़ेगा, और सोचो कहाँ बुला रही है, दिल्ली। मैं कहा मैडम ऐसा है, मैं देसी, हम ना जाते ज़्यादा दूर, और वो भी सिर्फ जिम करने के लिए। मिलना हो तो बताओ वरना नहीं जा रहा। मैंने तो सीधा बोल दिया मैम माफ़ करो, मैं पतला ही सही हूँ, मैं लोगों के ताने सुन लूँगा, मैं ये नहीं कर रहा। भाई दिल्ली जिम जाने के लिए 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, बीच में 1 घंटा वहाँ पे जिम करने का, 5 घंटे 6 घंटे तो मेरे यहीं लग गए, क्योंकि बीच में मैं उतरूंगा कहीं ना कहीं। ये सोचते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अबे ये क्या है, यूपीआई किया तो ये क्या दिखा रहा है? अच्छा यूपीआई सिलेक्ट नहीं किया। Oh my god, you need every single thing from me now? Hello. भाई इसमें तो पर्सनल अकाउंट नंबर मांग रहा है, पैन। ओए ये यूपीआई है क्या है? हेलो, पर्सनल अकाउंट नंबर, पैन, अकाउंट नंबर कहां से दूं मैं? अब वो पूरा ढूंढना पड़ेगा भाई। सॉरी आई एम नॉट बाइंग, I'm not that stupid यार। UPI नहीं है। Okay, wait, let me show you, hold on। ये कैमरा को क्या हो गया? कैम ग्लिच कर रहा है, ये तो कभी नहीं हुआ कैमरा ग्लिच। But why it's happening? Wait, hold on, मैंने चेंज किया। Oh, maybe it's because of that। यूपी अनपिन से ले लिया भाई। अनपिन क्या होता है? 1 सेकेंड, ये देखो, ये देख भाई। दीदी लॉकर पे होगा ना पैन नंबर, इजी तो है। दीदी लॉकर पे होगा ना भाई। ये कैमरा ग्लिच क्यों कर रहा है मेरा? Are you kidding me? अब ये देख, यूपीआई किया, ये आ रहा है। ओए ये आ रहा है, ये क्या है भाई? ब्रो यूज वीपीएन। अब वो तो बात की बात है मेरे भाई, वो बाद में देखूंगा, ये पहले बता। कैमरे को रिकनेक्ट कर दे। ये तो नहीं हो रहा भाई, ये क्या मतलब है यार? कैमरे को रिकनेक्ट कर रहा हूं, रुको भाई। ग्लिच तो कभी नहीं करना चाहिए यार। ओ यार ये फिर गिरने लग जाए कुछ। ओह गॉड, अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? ओए ओए भाई हरकतें मत कर, सही है ना? ओके ऑल गुड भाई। मैंने आज पुशअप्स नहीं मारे, पुशअप्स मारने थे, भूल गया। यार अब बाई कैसे करूँगा? क्या क्या देखना पड़ रहा है ब्रो? भाई वीसीटी स्ट्रीम ग्रैंड फाइनल आज है अभी। हाँ मैं देखूँ एक बार स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ। अबे ये क्या हो गया भाई? मेरी पिट्टी हो रही है भाई।
वैसे स्टार्ट तो हो गया, मैं देख ले। Honestly, thank you to all ओह of them. कितनी क्यूट है। But honestly, really, just thank you to all of our players for showing up, for making this as special. Like, this could not be as special as it is today if it weren't for all of you. So thank you so much, everybody. Thank you. आना। We couldn't imagine the time, the effort, the heart, and the passion. भाई मेरा लैग हो गया you guys। guys have created. So thank you from the community, from everyone who's watching at home. Thank लैग you हो guys गया for what था। you've created. Without this, we wouldn't be here. So we're gonna throw it to a quick break. We'll see you guys on the other side. भाई 40 मिनट में है भाई। भाई 40 मिनट में कौन कहता बोला अभी है। हाय कोरा, हाउ आर यू। भाई भी तो बहुत टाइम है। आज बहुत भयंकर मैच है ईजी वर्सेस। दो मिनट नहीं भाई, सारे रुकियो। भाई यार मेरे को नाइफ खरीदने का मन तो है। भाई यहाँ पे बस इतना भयंकर करना है कि पूरा देश कहे कि इंडिया को हर होना चाहिए गेम ऐसा। कार्ड से कर ले भाई, कार्ड चले तब करूँ ना, देखूं क्या, ट्राई करूँ क्या सब कुछ। भाई यूनिपिन यूज नहीं कर, नहीं यार यूनिपिन नहीं करना। मेरे को थोड़ा ना डर लगता है यूनिपिन ये सब। एक बार फिर भी सर्च करता हूँ, मैंने देखा तो है। मैंने इससे ना वो सोच रहा था गिव अवे करने का, बैटल पास या वीपी गिव अवे करने का। अनपिन कहाँ से आ गया, यूनिपिन कहा था ना इसमें। हाँ ये मुझे याद है, मैं इससे बैटल पास सोच रहा था कि लोगों को गिफ्ट कर सकता हूँ इजीली। भाई सही में सही होता है क्या। भाई रॉसी रिप्लेस बाय जी, हाँ पता भाई। हाइडन ने भी लिया यूनिपिन से, हाइडन ने भी लिया यूनिपिन से। तो यार यूपीआई का क्या सिस्टम है ये मेरे को समझ नहीं आया। यूपी का ऐसा क्यों है कि तुम यू कैन नॉट बाय। भाई हाँ सही होता है, बस अक्ल होनी चाहिए। अक्ल होनी चाहिए मतलब यश भाई ये आप तौहीन कर रहे हो किसी चीज़ की, आप मेरे को समझाओगे क्या। ट्राई विद योर टू अकाउंट्स इफ इट वर्क्स देन ओके। भाई 2 अकाउंट्स आरजीएक्स लेने बस, बाकी नेक्स्ट बंडल देख लेंगे, बात मान ले। हाँ सिर्फ आरजीएक्स ले रहा हूँ, आरजीएक्स, क्योंकि वो 5 घंटे में हट जाएगा। कार्ड से करूँ पेमेंट, करूँ ट्राई एक बार, देखो होता है नहीं होता। भाई यूपीआई इजी है, पैन नंबर नेसेसरी है फॉर वैलिडिटी एंड ट्रांजेक्शन। डाल दे तेरा पैन, पक्का मैं पैन डाल दूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है भाई। पैन डालना और भी चीजें थी शायद, है ना। और वो सेव हो गया तो कल को तुम सबको पता चल जाएगा, फिर सब फिर वो करने लग जाएगी यार। भाई ईमेल कोड आ जाएगा, इजी रहेगा ये। यूपीआई डिटेल है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम करेगा तो डालना पड़ेगा, कर देते हैं। वॉच पार्टी है, हाँ भाई आरजीएक्स लेने की वॉच पार्टी। कार्ड नहीं है भाई, कार्ड पिछली बार चला नहीं था, मैं इस बार ट्राई नहीं करना चाहता कार्ड से। भाई यूपीआई में ट्राई कर ओनली, अरे नहीं ट्राई क्या करना है, फिर तो मैं सीधा 4000 वाला कर दूंगा। बट यूपीआई मेरे को ये वो सॉरी यूपीआई कह रहा हूँ, वो यूनिपिन। मैं यूपीआई मैं चाहता हूँ कि वैलोरेंट का जो है उसी से करें यार।
मतलब यूनिपिन से मेरे को आई थिंक 100 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, 150 या 100 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे, दैट्स फाइन, बट स्टिल आई वांट टू यूज वैलोरेंट। पैन निकाल दूँ। भाई मेरा पैन कार्ड कहाँ है? किसी ने मेरा पैन कार्ड मार लिया। हाँ जोक है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब पैन कार्ड ही चाहिए इसको। आंटी जी के पास, मम्मी के पास क्यों होगा भाई? कैमरा ग्लिच हो रहा है, फिर से ग्लिच हुआ भाई। ये मुझे कुछ और पंगा लग रहा है, ये मेरे को कुछ और पंगा लग रहा है गाइस, सच बताऊं तो कैमरा ग्लिच का कुछ और पंगा लग रहा है, आई डोंट नो क्या है। कैमरा ग्लिच किसी और रीजन से हो रहा है, मतलब जब मेरा वैलोरेंट ऑन है, देख अभी ग्लिच नहीं हो रहा, जब मैं वैलोरेंट खेलता हूँ ना या वैलोरेंट ऑन किया तब ग्लिच हो रहा है। हाँ अभी देख, अभी ग्लिच नहीं हो रहा ना क्योंकि मैंने मिनिमाइज किया। अब मैंने जैसे वैलोरेंट खोला ना एंड देन इट विल स्टार्ट ग्लिचिंग। इसका देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। देख हुआ ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो, रुको मैं तब तक ये डाल के खत्म कर दूंगा। भाई शहर भी बताना पड़ेगा, मैं क्या लिखूं? एनसीआर की फरीदाबाद? स्ट्रीट क्या लिखूंगा? क्या है ये? अरे बिलिंग एड्रेस, पैन में जो लिखा है हमें एड्रेस बता दे भाई। पैन में जो लिखा है वही लिखूंगा, मेरे को तो याद ही नहीं है। अच्छा इस पे कह रहे हो? कोई गांडू पैन पे तो होता ही नहीं है। Are you able to play copyrighted music solo? भाई सिंगर्स जानते हैं मुझे तो कॉपीराइट नहीं रखता। वो ये गाना भाई, एंटर बिलिंग एड्रेस क्या होगा? क्या गाड़ कर हाँ अबे ये तो सिंपल था भाई, यूपीआई जीपे पेमेंट सब आ गया भाई, गूगल पे। It's so bright man। अरे नहीं वो बिलिंग अलग है, वो बिलिंग सिस्टम अलग था गाइस। अरे भाई क्या है ये? भाई क्या आता है? दिप 500 ये क्या? कैम ठीक कर ले भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हो गया हो गया। अब मेरे को बस एक बार चेक करने दो कि ये पे कहना था, पेमेंट नहीं करना भैया, इधर पागल हो क्या? अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यूपीआई क्लिक करता हूँ और पेमेंट पे करता हूँ तो क्या दिखाता है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं दिखा। हो गया।
ये अभी भी ग्लिच कर रहा है क्या? दिस इज वियर्ड मैन. I seriously don't get it. कैमरा ग्लिच बड़ा अजीब नहीं है? Maybe I do have to update. Last time they were in a final. Okay, guys, we are buying it. Yeah, we are buying it. मेरे पास अभी 6000 हो गए. ठीक है, मैं चाहूँ तो ये ले सकता हूँ, नहीं तो चैंपियन पे जाके ये भी ले सकता हूँ. मैं पूरा बंडल ले सकता हूँ. बंडल तो नहीं लूंगा, माँ कसम भाई. ये नाइफ क्या है? एक बार भाई ये नाइफ देख के तो लग रहा है वैंडल भी नहीं लेना चाहिए. ये उठा रहा हूँ. मुझे वो याद आ गया गाइस, क्या कहते हैं इसका, क्या नाम है, एक्सक्यूसी का. Who the fuck buy this skin? Oh shit, I buy. Yay! Oh, finally, man. वैंडल वर्थ इट है भाई. ऐसे खेलो कि इतना बढ़िया खेलो कि तुम जो वैंडल खेलो सारे लोग वही वैंडल लेके खेले. समझ रहे हो? ये होता बढ़िया. वो बढ़िया नहीं होता. स्किन नहीं है इसलिए बढ़िया लग रहा है. प्राइम जब आया था सबने कहा ना भाई प्राइम बहुत बढ़िया स्किन है, बहुत है. फिर आई ना, चेंज हुई ना. अरे ये क्या स्कैम. अच्छा मैंने वो किया ही नहीं. अरे यार वो तो अपग्रेड तो किया ही नहीं मैं. भूल गया था यार, भूल गया था. बहुत पड़े मेरे पास. सीधा अपग्रेड करो ये. वैसे ग्रीन ही अच्छा लग रहा है ना? हाँ, या तो ग्रीन या ग्रीन. अपना पिन कोड बता दादा तारा. वो फ्लिकर तो नहीं हो रहा ना अब? You are so optimistic. I just love about you, man. Thank you, यार. Even girls say that too. So I feel like मैं जल्द अगर स्ट्रीमर से हट गया तो मैं बाबा बन जाऊंगा शायद. I'm not sure. लगता है बस. तो ये कौन है? यार ये स्ट्रीमिंग मोड ना सही में परेशान कर देता है. रुकियो, स्ट्रीमिंग मोड में आप मुझे पर्सनल हाय. यार स्ट्रीमिंग मोड में वो कैसे हटाऊं कि लोगों का जो वो दिख रहा है नाम. That's weird. ये देखियो, एक ही देखियो. ब्रो भाई अब रिग्रेट हो रहा है क्यों ले लिया ये. नहीं यार मजाक करो. भाई पूरा अपग्रेड कर लेना. पूरा ही तो किया अपग्रेड, और क्या रह जाएगा. भाई तू आरनेफ पूरा कौन सी स्ट्रीम देख रहा है? ये नहीं ले रहा मैं, रेड नहीं कर रहा ना ना ना. यार अब मन कर रहा और स्किन खरीदने का, इतना सारी स्किन्स खरीदने का मन कर रहा है. बट भाई नहीं नहीं नहीं
नहीं। हेलो वो ये AFK है शायद, मारता हूँ उसको। मैच स्टार्ट होने वाला है ब्रो। अच्छा वो तेरा CA आ गया था। हाँ ठीक है ले लिया। अब क्या करें? ये बाद में करूंगा यार। मेरे को पता है एक इश्यू लग रहा है गाइस, सच में एक इश्यू लग रहा है मेरे को ना। इस शायद से सेटअप चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। एक मेजर इश्यू लग रहा है। मतलब सेटअप सही है, मुझे या तो पीसी को नीचे रखना पड़ेगा या कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा कि मुझे उधर पीछे पीछे कहीं रखना पड़ेगा, या मैं खेलते खेलते आदत लग जाएगी। सेंस ही चेंज कर ले, सब सही हो जाएगा। That's really interesting. Most people have said it the other way around. Yeah. They're like, heart says PRX, heart says EG, but brain says PRX. So that's very interesting take. I mean, it's been torn for a lot of people we've talked to. Dude, thank you so much for joining us on the Go to Carpet. We're going to let you go in, enjoy the show. We're going to take a quick break. We'll see you guys on the other side. भाई आज तो मैं ऐसे देखूंगा। नहीं ऐसी सही है। उई क्वालिटी। Did you get the card drop? अरे हाँ इसमें कार्ड वार्ड भी तो मिलते हैं। मेरे को शायद मिला। कहाँ दिखता था, भूल गया मैं भाई। वो सब खोलना पड़ेगा। हाँ ये रहा भाई, मैंने तो ले लिया, ये रह गया बस। बाकी मैंने और भी चीज़ें ले रखी हैं देखो पहले से। मुझे तो पता नहीं था मेरे पास ये सब है। कॉपीराइट लग गया, क्या करें। गेम चेंजर मुझे यहाँ से मिला था। लोग कह रहे थे ना कहाँ से, मैं VCT के ये वो देख रहा था ना, क्या कहते हैं, लड़कियों का मैच है सारा। मुझे पता था ये मिलेगा इसलिए ले लिया। गेम चेंजर चाहिए था, VCT गेम चेंजर नहीं, गेम चेंजर। हाँ गेम क्यों छोड़ी? गेम क्यों छोड़ी? व्हाट डू यू मीन गेम क्यों छोड़ी? आज तेरे को पता है इतना इम्पोर्टेंट मैच है और वो भी ले लिया। हाँ फक, हो भी गए। हाँ EG दो हार रही है। हाँ लेट्स गो, पेपर एक्स का विन। बट उनमें चेंज हो गया अचानक से। क्या कहते हैं, वो जिंक के हाथ में कुछ हो गया तो वो चेंज हो रहा है। CGRS को ले रहे हैं। चलना चूती है, मेरे को मत बना। हंस रहा है मैं चोट बैकग्राउंड में। भाई मैंने सेटअप भी चेंज कर लिया, ठीक है। तेरा माउस पैड भी लगा दिया। लगा दिया कैसा? वो जो तूने मंगाया था ना। कैसा है माउस पैड? ठीक है, नॉर्मली लग रहा है। अभी देखते खेल के पता चलेगा। और मैंने RGX ब्लेड भी खरीद लिया। देख रहा था मैं सर। भाई अब आ गई, क्या करूं बता। यही होता है जब खर्चा पहले 2 महीने से कोई खर्चा नहीं हुआ,
ठीक है, अच्छा भला सेविंग सब हो रहा है, अचानक से साला ये हो गया। मैं तो 100 के लेके बचा रहा था कि वो करूंगा, क्या कहते हैं, टूर करूंगा इंडिया में, सब जगह जाऊंगा और सबसे मिलूंगा, फैंस जितने भी है सबसे, जो क्लोज फैंस है ना, वो जो रेगुलर देखते हैं, जिनके वॉचर्स आते हैं, वो सब उन सबसे एक सिटी में मिलेंगे, ये सोच रहा था। फिर सोचा कि अगर इतना ज़्यादा हुआ तो ये कर दूंगा कि 100K पे 100K वो कर दूं, 100 बैटल पास के हो गए। ओ भाई इतना सोच रहा था 100 तो नहीं भाई, हो जाएगा, 100 अकाउंट खाली हो जाएगा। अबे 100 मतलब 1 लाख हुआ ना, हो जाएगा। बट फिर वही हो गया कि क्या कहते हैं, अभी सोच रहा था क्या, क्योंकि 100K यार खुशी नहीं मिलेगी मेरे को वैसे, उससे ज्यादा 100K पे 10 कर दियो ना, 10 बैटल पास। 10 से क्या होता है भाई, 10 से भी काफी आते हैं, या तो 50 कर दियो भाई। देख प्रॉब्लम ये होता है कि बैटल एक बार तुम गिव अवे करो ना, तो पब्लिक मैं नहीं चाहता वैसे बने। अभी वैसी पब्लिक ज्यादा किस लिए बनती है कि तुम्हारा गेम देखना है, वॉच पार्टी भी मैच होता है, गेम देखना है, वैसा है। तो इसलिए उसके बेस पे अब मैंने गिव अवे अगर करने लग गया तो बार बार वो जुड़ेगी। और पता है गिव अवे की पब्लिक ना इतनी गंदी लगती है मेरे को, क्योंकि एक बार गिव अवे किया उसके 1 वीक 2 वीक जिगड़ के बैठते हैं, जैसे होता है ना कि एक मच्छर इधर अंदर तक बैठे रहते हैं, फिर हटते हैं, फिर उसके बाद एक और बार कर दो तो फिर झड़क लेते हैं, और अगर 2-3 बार कर दो तो बस, मतलब क्या बोलूं मैं, बोलना नहीं चाहता। एक सेकंड रुकना, मैं वो कर दूं वॉच पार्टी। Sean in those clutches, I've never seen him lose any. He's crazy. In the clutch, it feels like he's always behind his opponent, and his opponent has no idea. He's won 1v2s left and right throughout this playoff bracket. And it's not even the most impressive part of his game, if I'm being honest. His most impressive part is his actual utility. भाई 80,000 होगा आप गिव अवे, क्या 80,000? नहीं 800 का होता ना। हाँ भाई तेरा बहुत वेट कर रहा था, तू आया नहीं। अरे भाई मैं वहाँ था लैन शार्क पे, लैन थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना खेलना वापस, बट मैं शायद से अवॉइड करूँगा क्योंकि मेरा वही है, स्ट्रीम बहुत डिले हो जाता है, वो सब हो जाता है। बट फिर वही है कि लोगों से मिलना, बातें करना। आज मैं नेवी से फर्स्ट टाइम मिला, 2 क्रिएटर्स हैं, तनिषा और यार उसका नाम भूल गया, शैली का, जो उसका नाम है जेस्टी, या तुम में से अगर कोई उसको देखता हो, वो इरेगुलर है, बट उन 3 से नए मिला, बायला से मिल चुका था, कुणाल से भी मिल चुका था। तो नए क्रिएटर्स हैं, लोगों से मिल के भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कॉलेज ही है। क्रैक वेलकम बैक। क्या राइम स्कीम तूने बनाया भाई डिस्कॉर्ड लिंक दे दो, डिस्क्रिप्शन का वर्क नहीं कर रहा भाई, अगर डिस्क्रिप्शन का वर्क नहीं कर रहा मतलब तू बैन है डिस्कॉर्ड से। सिंपल फंडा है भाई, मैंने चेक करा, नहीं देख मैं चेक करूं, मैंने खुद चेक किया था, ये देख कि मेरा डिस्कॉर्ड चल रहा है नहीं चल रहा। जैसे घुसोगे हमारे सर्वर पे तो मांगेगा यू हैव टू फिल। मैंने यार हैबिचुअल किसी रीजन से, हाँ चल रहा है भाई, हैबिचुअल मैंने किसी रीजन से बनाया था कि क्या कहते हैं वहां पे लोग आए, अबे ये क्या खुद की स्ट्रीम खोल, किसी रीजन से क्या था कि वहां पे लोग आके बकवास करेंगे तो सीधा बैन है। हमें अच्छे लोग चाहिए बस, चाहे डजंट मैटर आप क्या हो, आप अच्छे इंसान हो बस। बी अ गुड ह्यूमन फॉर अ गुड गेमर। ओए वीटो हो रहा है यार। First of all, congratulations to you बाहर both. करना है। Seriously, biggest event of the year, and you both made it. So big Guys, congrats, give me and the we money to will touch some jump right grass. in. PRX, you came from upper bracket. You are higher भाई तेरी तो seed. बंदी है फिर भी Team टच A or ग्रास। Team A. Team A. So EG, you will be Team B. हाँ, तो? So we will start. PRX, you do get both bans as a result of coming from upper bracket. So what would your first ban be? We ban Haven and Fracture. Haven and Fracture. Okay. And then map number 1. कौन सा? Split. ये क्या हो रहा है? बेस्ट ऑफ 5 नहीं है? Like defense, please. Defense. बेस्ट ऑफ 5 है? ओह ओके। Ascent, PRX. बेस्ट ऑफ 5 है, बट वो दोनों map number बैन 3 है, from दोनों बैन PRX, PRX you के have पास। Bind, Lotus, and Pearl. क्यों? अच्छा वो अपर ब्रैकेट। And EG side on Bind. सही है।
स्प्लिट एस इन बाइंड भाई फ्रैक्चर तो गया भाई। फ्रैक्चर सबसे पहले निकाल दिया उन्होंने भाई। कह रहे अगर हम 2 जीत गए तो ये होगा वो होगा। पॉल पे लास्ट करो, पॉल लास्ट करो बेटा, तुम्हारी लगेगी। पॉल लास्ट रखो। Yes, I knew it. I fucking knew it. शुरू नहीं हुआ गेम। नहीं अभी वो हुआ है। Defense. All right, let's run back through this. Make sure we're all set for grand finals. PRX came in with both bands. It's Haven and Fracture. भाई मिस तो ना करना है। Thank you for 200 likes. Map number 2 is Ascent with PRX on attack. Map number 3 is Bind with EG on defense. Map number 4 is Lotus with PRX on attack. Map number 5, Decider, is Pearl with EG on defense. Good? All right. Good luck to you both. Thank you. Get it. Go. Oh, that is a juicy map pull, but also good to see CGRS as well. Yeah, good to see him in the mixer for a moment. I don't think this should be surprising. Potter was talking yesterday in the press conference about how she thought it was going to be those 2 maps, Haven and Fracture Band. It's the same exact pool that EG played in the lower finals against Loud, but I think that double band advantage could be huge. Fracture, the best map for EG, and Haven. मैं तो ये भी कर सकता हूँ ना। I love how PRX approached this veto. They went straight for the hurt knee, like a fighter almost, right? Going after split. That's where EG is 0-2. That's the weak point of their map pool. Map 3, we saw EG struggle a little bit on Bind, and they saved Pearl for last. That's a map PRX is 5-0 on in this tournament. You would say it's their best map, and they're saving it for last. 5-0 on it. EG let slip away from them. They were on the cusp of being able to close that one out. It was 11-6 the advantage they had, and then it went into overtime. So if it gets there, both of these teams are looking to improve on those weaknesses that we did see in that series. The Ascent that got away from PRX, the Pearl that ended up getting away from the side of EG. So I think that this is going to be a bloodbath. Like we were saying before, I think it's going to be a 5 map. Yeah, we've seen today's map, but it's time to get a glimpse of the future. Let's get our first look at Valorant's newest. अच्छा तेरा तो वायरलेस हेडसेट है ना? हाँ। बैठ जा, माइक लगा। walk in guys, walk in. भाई प्लीज एक करके साथ में मत आओ, प्लीज एक करके, प्लीज सिर्फ ये ग्रैंड फाइनल्स के लिए एक करके आओ प्लीज। ओए ये नया ट्रेलर। हाँ नया मैप। टेलीपोर्टर लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है इस बार टेलीपोर्ट वाला मैप है। अरे रुक जा, मैं कुछ बोल नहीं सकता, शांत हूँ। This is what they've been after. अल्ट मिस कर दी भाई। इसमें भी रोजा करते हैं, वाह। गेको क्या कर रहा है? Chamber? Yo, wait. Chamber, right? It kind of looks like you. It's encrypted. Identification needed. Wait. Can I, Oh no way! Bro. This cruel. Bro is cold-blooded, bro. It's just a thumb. भाई नया टेबल, न्यू चेयर, न्यू सेटअप कर दिया, बड़े अमीर हो रहे हो। नहीं भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। The cupboard look hostile, so does it stand. We have to shut it down now. Oh. Trash. No, sorry, wings. Wait. Net. ये क्या है? नेट उसका। नहीं। हाँ। विंगमैन क्या कर रहा है वो देख। विंगमैन को कुछ नहीं हुआ। भाई ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम मूवी देख रहे हैं एक्चुअली ड्यूड। सिनेमैटिक है ना। पता है इसकी 2025 में मूवी भी आ रही है वैलोरेंट की। हाँ चाइना में। This can't be the only way. Are you sure? वो चैम्बर है ना? You can't come back. नहीं। That's not that real.
वो उसका खून बनने जा रहा है। He's going in, bro. He's going in. Little bro's in. I love you, little man. पता है मुझे। ये मैं हूँ। Little bro is you. मैं जाके पढ़ता हूँ। ये क्या हुआ? टेलीपोर्टर बर्बाद करता है। नहीं। Yeah, map आ गया। Oh, yeah. Kingdom is a distraction, fumbling in the dark, grasping for something to stop the bleeding. The truth is, Oh, Wingman is back. Let's go. our world will never be safe until we deal with the real. भाई ऐसा लगता है जैसे ट्रांसफॉर्मर का वो हो। Them. ट्रांसफॉर्मर की वाइब आती है ब्रिमस्टोन के उससे। ट्रांसफॉर्मर वो ऑप्टिमस प्राइम। मैं ऑप्टिमस प्राइम ये ऐलान करता हूँ इस धरती पे कोई ना आए। Bro, something different, something really different. Like you know, Ascent type. से थोड़ा वैसा। Oh, Shutters wave. there's a door too. Lot of angle. Become a local The legend. wrong day to mess with our world. Eagerness will undo them. Wait, is it 3 side? No, 2 sides. Yeah. Whoa. Oh भाई। Sunset. कैलिफोर्निया में ही है। अरे 27 है। That is right. Everybody's so set. It's going to be coming. I think next update में आएगा ना? The latest map of the game. What did you make of that? नहीं ये अपडेट में आएगा। You know, we have to see a little bit more. I can't wait to get my hands on it, dive into this one, and see how everything's going to be playing out. What kind of angles you got to play around. But I mean, we just continue to do excellent jobs when it comes down to these trailers. You hear the crowd going absolutely wild when they thought Wingman was going to sack himself, but of course they're not going to kill him off. No, and yeah, the map is just absolutely gorgeous. It's literally like a work of art. You look around the map, it feels and looks exactly like Los Angeles. And the way the map is designed, I think this is going to be one of the best maps in the pool. I'm going to be quite real with you, Yancy. I played it on like Wednesday, and it's insane. It's a gorgeous map, and it plays really well. It's a map that. What's the meta? What's the meta, Sean? 27 August. I mean, it's a map where 12:35. there's no gimmicks involved, and there's a heavy mid. There's 2 sites, and the sites are perfectly designed. It's a great map. Yeah, the vibe from seeing it almost feels like it's like another Ascent, like another just like good, honest map that is going to be super consistent. I'm just always excited to see what the teams, what the players can cook up with to try and figure out this new map once it's released. It's going to be a Yoru map. I think you should eat onions and tomato with the. I need you to give me the leaks here. Like, what agents should people be playing on here? What would you suggest? I think you can get away with a lot. I think double controller will be pretty strong. गरम पानी गरम वो कर एक काम कर गरम पानी को फ्रिज में रख उसकी बर्फ बन जाएगी वो you could do a lot of cool stuff on this map. We're going to see a lot of agent diversity. Well, I can't wait to see new that. Chair, We new are taking angle. a quick Yeah, break new here, chair, but after we will talk to Riot Games' co-founders Manan and Brandon Beck. So do not miss it. More champions Los Angeles will be back right after this. क्या रुक I forgot how we एक सेकंड रुकियो एब्लियन एजेंसी जो है उन्होंने ये गिफ्ट किया भाई दास भाई आज आप फाइनल्स हो गए इसके बाद खत्म भी हो जाएगा आज थोड़े आपके वो मिलेंगे हमें क्या जैसे ओह शॉट नाइस ऐसे कुछ बोलोगे आप या चुप ही रहोगे मैं ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा मेरी बंदी सो रही है पीछे वो
ये कब हुआ? मम्मी बंदी यार वो गाना याद आ गया क्रैक। बंदी दे हर बंदी के हैं बंदे। और यार सही है यार क्रैक। मैं जोर से नहीं बोल रहा, ये बोल रहा पहले। हमें भी वीसी बुलाओ। टेक्टोनिक क्यों भाई? एक रीजन बताओ यार। ये नहीं कर सकते हम कि ऐसे सबको नहीं बुला सकते। तो कल क्यों नहीं आया बे? कल? हाँ? कल कहाँ था मैं? कल स्ट्रीम की थी मैंने। मैं वेट कर रहा था तेरा। कल क्या था? मैं कहीं गया था क्या? कल कुछ हुआ था ना यार? What the fuck? How can I forget, dude? कल मैंने लाउड हार्ड मैंने स्ट्रीम बंद की थी जल्दी। हाँ मेरे को गनशॉट से कुछ बात करनी थी तो वहाँ पे गया था और फिर उसके बाद मैं वापस आया था और सो गया था क्योंकि मेरे को पता था टेबल आ रही सुबह, तो इसके लिए मैं रेडी था। नहीं क्लब नहीं गए हम लोग, कैंसिल हो गया था, क्लब नहीं गए। बट ये हो रहा है प्लान कि कल लैंड शार्क अगर हम जीतते हैं, वैसे सेमीफाइनल में है, शायद ही जीते या जीते पता नहीं, फाइनल्स में अगर खेल के जीत रहे we will maybe go club or I don't know, or maybe we will not do anything. भाई जब 12:35 हो जाए तो प्लीज मुझे एक बार रिमाइंडर देना, कोई भी अगर हो सके। कल अनबॉक्सिंग, हाँ हाँ इसलिए याद आ गया, कल अनबॉक्सिंग की थी इसलिए थक भी गया था। You never know, right? It's always great to see, you know, players attached to something that you pour so much heart and soul into, and but the community is amazing. I mean, we just look around, walk around, you know, in all over the world, and players are just having a tremendous response to Valorant, and we couldn't be more proud. मैं सोच रहा हूँ एक प्रो 2024 की प्रीमियम टीम्स को भी गेम चाहिए। हाँ मैंने तो डाला था। ता तरो ता ता तको ताना बना 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 को तना। गेम चेंजर्स इज डिफरेंट ब्रो। असेंशन में हाँ wanted to, you know, take a crack at building something in the space that we love so much, and so you got a bunch of हाँ गेम चेंजर अलग है, वो अलग है। 2024 में तू भी खेल, पता नहीं भाई मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। हाँ ये जरूर है ग्राइंड तो ऑन रहेगा, मेरे को और बढ़िया करना है तो इसलिए वर्क कर रहा हूँ उसी के लिए। आई वांट टू बिकम अ एमर नाउ, लाइक एमर इन द सेंस कि पीपल आर लाइक कि एक अचीवमेंट तो मैंने वो किया कहते 5 रेडियन वाला, अब कुछ और ऐसा अचीवमेंट करना है कि जो किसी के उसमें हो कि भाई यार ये कुछ अलग है, लोग डरने लग जाए ना वैसा। खौफ होना चाहिए नाम का। खौफ नहीं जैसे आते ही कि भाई यार या तो कैरी होगा, टफ है मतलब नो डाउट, 4 बंदे भी टीम में चाहे बेकार हो टफ कर देता हूँ ऐसा। नो आई एम नॉट जॉइनिंग एनी टीम राइट नाउ, नीदर आई एम मेकिंग वन। भाई टेंस की स्ट्रीम देख, वो भी कर रहा है। क्या टेंस क्या कर रहा है? अरे भाई ज्यादा लगे आप बच्चे हो। काकुरा के साथ कर रहा है। Something that millions of people around the world are loving, and there's awesome events that are coming up to sort of keep growing the you know the TFT scene. Oh boy, Derek की viewership 100K आ रही है। And really excited about that. So, and there's a ton of stuff in the pipe we can't talk about here, but there's just always cool things that are cooking at Riot. So, always just trying to figure out ways to add value to players out there, and hope that we can do justice to their incredibly high expectations. I think I can speak for everyone who's listening and everyone who's watching who's a fan of Riot Games when I say I'm very excited for the future of Riot, very excited for the future of Valorant. Gentlemen, thank you so much for the time. We're going to let you guys go. Enjoy the show. Enjoy the opening ceremony. It's been a blast, and that's actually going to do it for us here at the Golden Carpet. It's been so much fun. Thank you all for joining us. We're going to throw it to the desk one last time for closing thoughts before the grand finals begin. Thank you very much, Hey Adarsh, बता देगा जब शुरू होता है मैच। Yeah, sure.
Nice. Finals of Champions, Sean, we are going to have a win to ascend before a win to loud. Who's going to take it today? I've been telling people all day PRX is going to win this series, but I'm flipping the script actually. After seeing the veto, thinking how this is going to go, I think we're going to go to the 5th map. I think it's going to go Pearl, and I think EG is going to play double initiator and win this series. Oh! Okay. डिलीट निकाला हुआ है किया ही नहीं डिलीट डाला ही नहीं I think that there's not going to be much surprise as far as my opinions on this matchup. Bustio said that China would be better than North America, but he didn't mention anything about Indonesia, about Singapore, about Malaysia, about Russia. PRX are going to come out here. They're going to W key gaming all over this. Imagine PRX bring something different. They're going to be lifting that trophy as the first Pacific champion. I don't know if you can go home if you're already in front of a home crowd here, guys. No, I don't think so. You know, that's the thing. When you are around the crowd, big one, like look at the crowd behind. I feel like अब वहाँ पे होना चाहे अकेले हो, you won't get go. EG is ready. I believe that EG is going to take this one home. Okay, I'm going to balance this out. You both went for EG. I'm with you here, Seth. I'm with you. I think Jing's last tournament, they've never lifted a trophy before. They came close at Copenhagen with something in the squad right now. It just feels like they're tied. They came to the upper bracket. They got the fan advantage. I'm with you, Seth. I believe in them. And it's time to get this started. It is PRX versus Evil Geniuses in a best of 5 series for the crown. One last series to I think this is best way. Watch party के time पे जो देखता है ना और chat करता है उनको motivate. क्योंकि फिर जब गेम चालू होता है ना तब बहुत लोग देखते हैं और वही समझ रहे there is it's a fucking show even when whole stadium start blinking. Yeah, opening ceremony song आएगा टिकिंग अभी कहाँ दिखा था टिकिंग में बजाएंगे क्या Yep. King of it. Oh. Let's go. Bro, I want that jacket. Wait, I think Riot should what's giving it this hoodie or something. कौन जाएगा? Oh, backstage. Ooh, loud. Wait, wait, hey! This is cool. That is cool. Wow, that's insane, dude! I'm getting a little bit fan of Valorant stuff, like the way they are doing it, yeah, seriously. It's like just seeing an episode. This whole championship feels like an episode. You know, showing the backstage, showing every single things like this. It's insane. Oh, but the bands. Ooh, bands. Dude, insane. Ooh. Oh, we have a new song. Let's go. A new song. Yeah, I love that Entertain Me wala song too. I love Raja. Yeah, Raja is always gonna legendary. Got an agent on the gotta look back. Shall we send my arm down with the 5-star? What we been, I don't know, going downtown. Got the city lights here like a ghost town. Like a butterflies, having no spooked out. Cause we got radio. I thought it was legendary. This is also nice.
Just that we got sheriff's but sorry I boy cause the venom had gone to the venom world. Who's there know this? Backs against the wall. All the mirrors will dissolve. Dude, what the fuck I'm watching, man? Yes, sleeper part is shield. भाई मेरा भी सिंगिंग का मन कर रहा है। They don't. तुंग तुरक तो तारारा तुंग तुरक तो तारारा। Yeah, nice. This is Down like dominoes. I'ma take you out with another spike drop. Ooh. Over here to What? to lock and load. I hear the echo. I hear the echo. Bang bang, run it back. Team with the rush attack. Ra-ta-ta-ta-ta all day. Enough with the chit chat. Steady with the one tap. I'ma set it up. Just wait. Did a Kamehameha. This song celebrates the entire game. That's so fucking sick. भाई प्रोडक्शन तो है बहुत भयंकर भाई। बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। ओ भाई। भाई the full यार। Dude, that's right. You know, I want to be there, man. Shit, y'all. Like the in-person experience. पासपोर्ट तो बनवा ले। Oh भाई। वाइपर देख कहाँ पे कर रहे हैं लोग। यहाँ पे मैच होगा वहीं पे। ओ भाई डेस्क बजा के रखे हुए हैं। डेस्क के ऊपर वो डाल के लाइट पास। ओ भाई चलो बहुत इंसेन है ये तो। वही ना। Guys, NL production, guys, NL production. What the hell? अभी और है? हाँ? अभी और है? Obvio? Just walkouts. This will be such a sick walkout. नहीं और है? Die for you! Die for you, let's go! Bro, best song था यार Valorant का। Wait, don't tell me everyone will be here. Raja, everyone. मजा आ जाएगा उधर। भाई I am the Raja में मजा आएगा भाई। Die for you, बहुत बम आ रहे हैं भाई। Day I die for you. This is the day I die for you. दोनों एक पैक्ट बनाते हैं। अगले चैंपियंस चलते हैं भाई देखने। बिल्कुल भाई, तब तक पासपोर्ट भी हो जाएगा मेरा। डन भाई, सही में चलते हैं भाई अगले चैंपियंस तक। ओ मैं भी सेविंग्स करता हूँ भाई। बट आप क्या कैसे जाओगे? मतलब देखने जा रहे हो? मैं तो खेलने की बात कर रहा हूँ। मैं कोच करूंगा ना वहाँ पे चैंपियंस की टीम को। भाई क्या है भाई? कोई बंदा नशे में देख रहा हो ये तो। सोलो मेरे को एक इनवाइट बना के दोगे? किसको? सर्वर का। बट किसको देना है? तनिषा को दे दूंगा और हाँ तनिषा को। मैं आपको व्हाट्सएप पे रुको, मैं एक काम करता हूँ, उसके पास है, दे देता हूँ। रुको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। रुको हमें से मैं तुम chicken away. Second to way. Let's get it. Win it. Lose it.
Dude! Please Raja, I swear man, I just want to see Raja man. भेज दिया मैंने WhatsApp पे. यार इसका तो बनता है. Guys, last day. If you are free, you are doing or watching it, just come here, man. Now, Julie. Last day of what? LA, make some noise! भाई यार पूरी वाइब बना दी बहन से, पूरी वाइब बन गई यार. I swear man. यार और मैं सोच रहा था कि एक रैंक खेलूंगा गेम स्टार्ट होने से पहले. भाई अच्छा हुआ. Dude, I'm telling you, Valorant चैंपियन का पिछली बार भी यही था, हर बार होता है. इस बार बहुत भयंकर बनाया. और पता है League of Legends का, if you guys remember Legends Never Die वाला, if you've seen it, that was so fucking insane bro. और पता है मैं I'm telling you, कभी मिस नहीं करता मैं. मेरे को ये लास्ट वाला कभी मिस नहीं करता. ये इसकी हाइप ऐसे बनाते हैं भाई. क्या क्लिप्स दिखाई है, कॉन्कंग उठ रहा है भाई ऊपर से. वाइब बना दे भाई. जिसको वैलोरेंट के इतने शौक भी ना हो, वो भी देखेगा भाई. हाँ भाई वो कॉन्कंग उठता होता से वो लग रहा था वो ब्रॉक लेसनर. कल सुबह उठ के देखना ये आएगा. मतलब Valorant know how the like they don't care about the quantity but they care about the quality. कि उनके पास जो है they have to work for that. ये देख Valorant के पता है League of Legends में ड्रैगन दिखाया था ऐसी, यही सब सेम सीन हुआ था. ऐसा इतना भयंकर लगता है भाई. और ये सबसे बेस्ट चीज है वहाँ पर बैठ के जो देख रहे हैं भाई. नहीं उनको इतना हाँ मतलब ऑल्दो वहाँ की अलग वाइब है. सच बताऊँ तो वहाँ की अलग वाइब है और यहाँ की अलग वाइब होगी. लेकिन वहाँ की इंसेन वाइब है भाई. हाँ वो लोगों ऑडियंस के साथ यार. कोई भाई देखिए ट्रॉफी कैसे दिखाई है. आप लेट हो गए मैम. ये देखो जो आ रहे हैं. आपने मिस कर दिया. सही है. I don't play Valo, but bro, there's something don't have words. Trunks, then what do you do? Ladies and gentlemen, it's time for the Valorant Championship. You are here obviously for the Valorant, right? Otherwise, how many people are here for not Valorant? Then how? Why? Why is here? No, I mean I'm surprised. I'm gonna hear you loud and proud. अरे मेरी तो आवाज ही नहीं जाएगी. Let's welcome your two finalists, Evil Geniuses and PRX. Yes, एक एक करके आ रहे हैं. Love you man. That's what I want to fucking see man. एक एक करके आओ. Insane bro. That's what I wanted to see. एक साथ मत आओ. एक एक करके. Experience. भाई कैसे दिखा रहे हैं भाई, जैसे कुछ वो हो रहा है WWE का हो रहा है भाई. Something. सोलो कैसे आएगा? भाई इसको तो हमेशा याद रहेंगे. सोवा का एसिन का सिग्नेचर बना दिया सारे ने. प्ले समटाइम्स पर अब तो प्यार अटैचमेंट हो गया है. या ट्रू. थोड़ा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम. भाई ये तो पूरा एक्टर, ऐसा लगता है एक्टर का बेटा है भाई. PRX वाले तो बिल्कुल चुपचाप तरह सीधा चल के आ रहे हैं भाई. फॉर्सिकन को एंड में भेजेंगे क्या? लोग कच्चा चबाने आ रहे हैं इनको. नाम चिल्लाना चाहिए भाई. फॉर्सिकन. पता है इस बार दोनों टीम के लिए क्राउड है. दोनों टीम के लिए. बट ईजी के लिए ज्यादा होगा डेफिनेटली. ओ भाई कोच के लिए भी है वैसे तो. कोच पॉटर्स. बस भाई नेक्स्ट चैंपियंस में मैं जा रहा हूँ बेंच. भाई कर्मचारी एक ऐसा जाएगा क्या?
भाई ऐसा हो पता चले नेक्स्ट में मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोच बना दिया और मैं वहाँ पे कोचिंग कर रहा हूँ। भाई कोच तो भाई एक ही चीज मैंने इतना तो देख लिया आज तुम लोगों का मैच देख के, बहुत गलतियाँ की। अरे तो खेल कर रहा था मैं खुद ब्रेन डेड जैसा खेल रहा भाई कितना सही दिखा है यार। ये हटाऊं ऊपर से। अब बैठेंगे, अब वेट करेंगे ना। वैलोरेंट के यार में तो ये अच्छा लग रहा है, अब ये कोचेस को भी ना काफी हाइप देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, दिखाते हैं मतलब पूरा प्रॉपर उनको। तो everyone in Singapore has to go to the army and I'm of that age right now. ये सुनो, Of course I'm scared and like anxious. I don't know what's like waiting in front of my life, but I just wanted to give it my all, like really all, so I wouldn't have any regrets. Cheng holds the line. Cheng, and the transfer comes in. The fuse is there, and we are not done yet. Everything was like surreal. I would have never expected to be in the grand finals of a champions. मजा आ रहा है। सोच के देखो ना इतना भयंकर हुआ है। You have performances like that. What does that do to the spirit of the team from having, you know, lost such a close game? But it's just a movie. I'm telling you, it's totally an episode, like series, you know. It's always like a humbling experience. But this year has been about second chances. No one expected us देखो to be दोनों here. ही टीम्स अपना फाइनल्स खेल रही है, पता है, दूसरा फाइनल। हाँ, और वो भी पता है पूरे उसमें ना ईजी जो पहले वाला बेस्ट ऑफ 3 हुआ था, सब हैरान थे, सब बहुत भयंकर हुआ था। और ये वाले में अब, और पता है इस बार दोनों को पता है, सिर्फ पेपर एक्स को नहीं, ईजी को भी वार्निंग मिली है फॉर टी बैगिंग। आप शूट कर सकते हो बट आप टी बैगिंग नहीं कर सकते शायद। As long as you do that, you can have no regrets. ईजी को हमेशा मिलता है। भाई देख के इतना मजा आ रहा है कि भाई प्लेइंग देयर विल बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ, या ऑनेस्टली आई मीन तुम खुद एक बार लैन खेलो, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई लैन टूर्नामेंट ऐसी खेलो, चाहे तुम कोई भी रैंक हो, खेल के देखो। आई एम टेलिंग यू, जो वहाँ पे फील आती है ना, वहाँ से 10 गुना यहाँ पे फील उनको जो अभी हो रही है, 10 गुना। Seriously, we actually won the grand finals. Champions, we bombed out. We didn't even get into playoffs. Lock in, we lost first round. It was like rock bottom. It was like a really big moment for all of us. So I think all of us really woke up. We went from a team, everyone counted us down and out, and we became one of the best teams in the world. But there's always something to be better at. और आई थिंक अगर पेपर एक्स जीतती है वो पहली सी टीम बनेगी, पहली पैसिफिक टीम बनेगी जो वैलोरेंट चैंपियनशिप जीतेगी। Quiet and I was always like just doing my own thing. But Because now, we have PRX forever number. I've grown a lot to become like a better person. क्या बोलूं यार, हमेशा नंबर 5 पे ही है। I want Paper X to win so bad. Last time वो BO5 में XPX के सामने। This is that chance. It's more than just तो trophies. सुगेत्सु ने मार डाला था भाई। बट समथिंग का मेरे को डर है यार, क्योंकि ईजी में वो चल नहीं पाया था, बट अगेन But be free and have fun. हाँ ब्रीज पे यार 1v3 पिक करके तीनों को मार दिया था। मारा ना टीममेट से। दिल में दर्द तकलीफ हुई थी देख के मुझे, इतना भयंकर। My heart and soul, I wear my heart on my sleeve no matter what, and I'm gonna give it my everything to beat Paper X. If this is my real last tournament and I never come back, I'm just proud of everyone in my team for going through this journey with me. I hope the fans just remember like this era of Paper X. But if I win, I think it will be a really great ending for me. The rest is history. The level they have set. Yeah. Just one more series to close out the year. History is going to be made no matter what happens. EG or
PRX will lift their first ever global trophy right here in the Kia Forum. And Mimi, you saw it in the trailer. You see what it means to the both of them. It is going to be a crazy and emotional series. Both these teams have had a core that have been together for years, that have been grinding it out regionally, waiting for an opportunity. They've both been in a final before, had an opportunity to win a global trophy. But it eluded both these teams. And it's one more chance this year. It's the last team forging with this iteration of PRX. And it's EG's last chance to complete their Cinderella run, to go from that team that no one expected to do anything to a team who could be the world champions. That's the thing, it's the largest stage to try to that much more pressure, that much larger of an audience, that much more pomp and circumstance to get themselves out here onto this stage, into this moment. I can't imagine the pressure that these players have to be feeling coming into this one right now. We know that these are both teams that love to say it's all about having fun. We want to go there, we want to have those good vibes. We want to just have fun and not let the pressure seep in. But you all people know, Sean, that is not impossible to lock out. You can't block everything. No, and that's why they took that team huddle. Both of these teams so much display ads हैंगी बस और कोई ads so नहीं much हैंगी control over the team, the innovation we're seeing out of both of them. They both brought in star duelists in the middle of their display ads side वाली ads हैंगी वो वाली ads हैंगी non skippable और skippable ads नहीं हैंगी ठीक है These teams are so alike. Yeah, let's talk about those two coaches, because you guys heard that when Alex and Potter walked out to this crowd, the cheers, the love that they received. I mean, for Potter especially, both of them used to play on the teams they currently coach, but a lot of people doubted her, Mimi. A lot of people criticized her, but she's also back and she's proved why she's one of the best. EG is now the team leading the meta in a lot of ways in this game. They are one of the best in the world. And Potter has been there since the beginning. She was playing on this team, like you mentioned, when EG was first signed. Ad से अच्छा मिल रहा है, but वो ये कि बार-बार ad आ जाते हैं, वो game के time चलता है. Picking up Demon 1, to taking all these risks to get this team to the position they're in now. But भाई it's the same सारे लोग case अगर जो लोग देख भी रहे Alex has had to बहस क्या क्या रिलोड करवा रहा है ट्विच That's the in-game leader of your team. अब जो लोग देख भी रहे अच्छा है ना कि भाई कब तक ये यहाँ देख रहे तो कुछ तो करना चाहिए. Take a duelist role over someone like Forsaken. I mean, that is a crazy decision that he made at that time. But look where he is now. हाँ, Split, Ascent, Bind, Lotus, they bring a stand-in Gecko in Tokyo and then still place third. I can't praise these two coaches enough. आज पूरा रात स्ट्रीम करना है तुझे भाई हाँ पूरा ग्रैंड फाइनल्स देख ले कल लैंड छोड़ देंगे कोई बात नहीं. अभी क्या हो रहा है देखिए जी मैं क्या कह रहा हूँ लैंड छोड़ देंगे बट ये देख के रहेंगे सारे मैचेस. ओ हेलो सोलो अच्छा मैंने आपको जो लिंक दिया ना उसमें 5 जन ही आ सकते हैं टोटल. वैसे भी नहीं आ रही वो That is that connection you have as a coach to your players that every 300,000 team would लोग love to have. Yes, and that's a strategic coach telling his player to go out there swinging, right? I want you to play a grindy style that the other team is not ready for. You have to skill. And I see that same stuff when I watch Potter. That's what makes these teams so amazing. Is that like 1 million I guess. वो पता है उसी के लिए आए हैं वो जो देखा था ना क्या सीन हो रहा है. Push all that control and give it back to the players. players. Yeah, and I think for both these teams, it's that recovery aspect. It's coming back from such bad starts to the year to now making it here. Boosted on the press conference the other day said that people might think that they're the villains, but that they've lost a lot. They got used to it. 2021, 2022, they did nothing but losing. ना मेरे तब होगा जब इंडिया में मैं वो टाइटल ले लूंगा कि वन ओनली द बेस्ट वैलोरेंट प्लेयर वाला. अभी तो वन ऑफ द बेस्ट है ना. वो करना ही मुश्किल है. वन ऑफ ओनली बेस्ट हो ही नहीं पाता. Yes, he missed out at Tokyo, but he could potentially lift a trophy in his first ever global event without losing a single series set. I mean, it would be nuts to just become a Royal Road right off the rip, come into this thing as somebody who's playing around Japan, dominating, and then make the run. Demon का headshot percentage बहुत ज़्यादा है ना लोग कहते हैं. Similar story, obviously, on the opposite side. Both of these guys have had such explosive impact from the moment that they joined into their rosters. It's unprecedented. अभी तो मैच भी स्टार्ट नहीं हुआ पता नहीं बाद में हाँ ये भी हो सकता है. But I think वो लोग उसके लिए रुके हुए थे. अभी कम हो जाएगा फिर वापस बढ़ेगा.
मेरे हिसाब से तो फाइनल्स में अगर फाइनल काफी अच्छा हुआ जो हम सोच रहे कि अगर वन साइड हुआ तो इश्यू हो जाएगा, बट अगर वैसा हुआ तो फिर तो पोल डाल दे। पोल क्या डालना मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ सारे पेपर एक्स के लिए हैं, तुम में से जितने लोग हैं, मैं खुद हूँ पेपर एक्स के लिए यार, क्योंकि एक ही रीजन है। नो डाउट ईजी में D11 ये सब ईजी में सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, बट पेपर एक्स सी का है और हम सी सर्वर पे खेलते हैं और पैसिफिक एक तरह से। पेपर एक्स का गेम पे देखने में मजा बहुत आता है। Thank you. Right now, he is a very special player that Potter just somehow knew to bring into this team. And what's insane is भाई मैं रैंक पे ये लोग खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। You talk about going back for those first two champions, every Masters tournament ठीक है। before this, they were always just sitting at home watching. साहिल भी आ गया। साहिल तूने मिस किया? I don't think either of them could have imagined. अबे तेरी आवाज इतनी स्लो है, लो है। तेज और तेज और तेज। And both of them go on this incredible run to make it here क्या? to the grand final for both of them in their rookie माइक की अपने गले में डाल देगा। अरे मैं ये कह रहा था, कहते हैं वो देखा था कि कॉन्सर्ट हो गया पूरा एक। देखा था मैंने आपका। तो मैं देखा था आपका ट्रेलर भाई, बढ़िया था भाई। हाँ। अरे हो गया 12:35। हाँ गाइस मैं कल अर्ली एक्सेस है 8:30 बजे। कल मेरे को स्ट्रीम पे कोई आके कहता अर्ली एक्सेस मिला, मैंने कहा वो क्या होता है? एक सेकंड मैं भी हाँ देखो वो ना मैं आपका जो बता थोड़ा सा जो मैं आपको बोले है, जब मैं आपको डिजाइन है अभी तो नहीं ओवर पास जैसा अभी, हाँ मतलब अभी तक डिजाइन नहीं देखा, मैप नहीं देखा। अबे मेरे को वो लगा ऐसे जब वो था पे अटैक करते ना ओवर पास पे जो अंदर घुसते से वैसे आके बी साइड पे वो मॉन्स्टर से थोड़ा उस टाइप लगा मेरे को। Very atypical in the pro scene. And most people aren't trying to reinvent the wheel. They just kind of copy it and move things around. That's what EG does. Yeah, PRX is not the team at all. Last game I was supporting EG, but today I think PRX will crazy comps come out. यार EG next भाई, EG भाई अगर आप सुन रहे हैं तो please wait English में। EG if you are listening, then you can take other championship next year like 2024. This year just let PRX take. They are the squad that it's not always the same thing. It's not always a meta comp. It's built on their flexibility, their ability to come up with incredible plays on the fly. Why are you watching on YouTube not Twitch? यार Twitch पे मेरे को पता नहीं क्यों मैं like YouTube से पहले Twitch पे हूँ, तो मैं Twitch पे से YouTube पे मैं नहीं देखता। बाद में ऑर्डर आ रहे हैं। Yeah, Booster himself, he spoke about this as well. He was not super happy about facing off against PRX again. Here's what he had to say after that last match. It feels impossible sometimes just to play around against them. And honestly, it's not fun to play against them. But the thing is, if there was any team that could maybe take them down, any team with a prep, any team with a mental resilience, right now, Sean, in this moment, it's probably Boostio and EG. Yeah, it's Boostio and Potter. That tandem right there has put together some incredible anti-strat gameplays over the course of this year. Not even looking at this tournament, the whole year. That's just how they operate. And he says it there, it's a different beast. You can have all you want. I know EG भाई जुकाम है मेरे को भाई, गोल्ड है अरे yeah YouTube is also धीरे-धीरे but thank you for 255 likes. But that's not playing against Jing for एजेंट पिक्स मस्त होने वाले, वही तो वेट हो रहा है। किसी ने जोमेटो ऑर्डर। एक सेकंड, ये जॉर्जो में कहाँ है? सर एक और भाई की ट्रॉफी बढ़िया होती है बताए। अरे भाई ना ट्रॉफी इतनी बढ़िया होती है कि भाई just being able to just lurk into those back lines. They have to keep it ingrained in their brains. If you have not seen Comp, he's behind you. If they can memorize that, then they have a good shot. PRX जीते यार। He's so good at slipping the net. भाई गुड पार्ट स्प्लिट मैप, पर्ल मैप, ये दोनों इनके वो हैं, मेन मैप है। ठीक है, बाइंड पे मेरे को थोड़ा EG का लग रहा है, but let's see. अगर EG ना अच्छा, EG अच्छा खेले भाई। EG लोटस पे जरूर जीतेगी मेरे को लगता है। EG अच्छा खेले भाई बहुत। उनका EG भी अच्छा खेल रही है और PRX भी भाई। PRX भी अच्छा खेले। PRX तो खेली अच्छा भाई। अरे मेरे हिसाब से पता है समथिंग नहीं कर पाया था। Maybe now he will go Jet instead of Reyna.
तुमने देखा तुमने जेट नर्फ हो ऐसा नर्फ हुआ भाई लॉल कॉस्ट हां भाई जेट पे वो क्या अभी फेक हो गया है तो ओके हां अभी जेट का जेट तेरे को नहीं पता इजाजल जेट पूरा नर्फ हो गया 8.8 पे हो गया ठीक है 8.8 पे हो गया भाई रो तो ऐसे है जैसे ये जेट मेन था सोवा का व्हील जो है अब सिर्फ 2 बार होगा ये रो तो ऐसे तो जेट अच्छा खेलता और पता है चैट पे एक बंदा कह रहा है भाई जेट तो नर्फ हो रहा है अब एस्ट्रा मेन करोगे मतलब कोई कनेक्शन बना है इसका भाई कौन था वो उसका नाम नहीं देखा मैंने टैग भाई ओए ओए एसएमआर हीरो वो देख हिला रहा है ये कौन है ये मैं खाना आया है इसका लिख भाई देखिए आयुष लिख रहा है बाय एसके रोज नॉट प्लेइंग भाई जब वीसीटी स्टार्ट हो रहा था ना जब मैं वॉच पार्टी में जी को ढूंढ रहा था फिर ध्यान में आया कोई बात नहीं आई कैन से मैंने कहा ही था वो रेना आई थिंक नहीं खेलने वाला अगर वो जेट से खेल गया तभी रेना लेगा वो बट आई थिंक ईजी के सामने रेना नहीं चल पाएगा जेट फिर भी चल जाए ये देख डीमन वन नर्वस है नाखून काट रहा है देख दिखता है भाई अच्छा अच्छा बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है नहीं वेल्टिन इज किया थैंक यू फॉर 257 कम ऑन गाइस लाइक्स भाई काश ऐसा भाई ए भगवान काश ऐसा मैच देख लूं ऐसा कुछ हो जाए कि भाई अगले कल से खेलूंगा तो ऐसा लगेगा कि भाई रेडियन टॉप 50 फिर टॉप 10 मैं कर लूंगा टॉप 50 करूंगा अच्छा ठीक है भाई जितने सारे ऐसे सोचते हैं ना कि भाई आओ टॉप 50 हाँ जरूर तू कर दूंगा लेट्स गो फैंसी एंड हाइपॉक बस एक बार दिल टूट जाए कितने में तो लगा था भाई याद है साहिल लॉकडाउन में जब क्या कहते हैं लॉकडाउन में हुआ था जब दिल टूटा था ना तब हुआ था 5 रेडियन फैंस पूरा टाइम वैलोरेंट में घुसा पड़ा रहता था लड़की इसका दिल तोड़ क्या है एक लड़की भाई मुश्किल है भाई ऐसे दिल नहीं टूटता लड़की लेके आता पहले दिल जुड़वाता हूं भाई अभी भी याद है स्टाइल से starting guys starting focus come on They've adjusted, they've come in with a different comp, and we are right into things. No messing around, it'll be PRX on the attack. EG instant rush होगा and this is going to be a marathon of a game. देख पुल भी कर दिया इतनी जल्दी ओए अरे नाइस ओ लो कर दिया नेडो कौन सारे लो है Device still standing, still controlling space. The rest of EG need to temper themselves a little bit here. आवाज बढ़ा दो आज बड़ा डिसीजन है अगर PRX हारी तो वैलोरेंट कभी भी नहीं खेलूंगा ये क्या मतलब हुआ हाँ ये क्या बात उल्टा पॉजिटिव थिंकिंग करना PRX हारी तो इतना अच्छा खेलूंगा कि PRX में आके जिताऊंगा कोई नहीं जो टीम 2 राउंड शुरू के जीतती है वही हारती भी है डीमन वन आज नहीं कर रहा टीम बहुत वार्निंग मिला है ना हाँ टीबैग नहीं कर सकता ना भाई वो तो नहीं वो इतनी बात हो चुका है अब वो ये जरूर कर सकते हैं स्प्रे करके नहीं मेरी बंदी नहीं दी वन साइड कितने बच चुका है इसको तो क्या हो गया भाई बट हुआ है बट डीप जो होता ना कि किसी का ज्यादा ही तभी तो हुआ था एक बार हो गया ना दोबारा घर पे पड़ा रहूंगा पूरा दिन नहाऊंगा कुछ नहीं सुबह उठाऊं वैलोरेंट बंद उठूं वैलोरेंट बस जज लेके बैठे हैं PRX we're looking at damage here sheriffs in hand yes a little bit of a test and of course they're going to be walking into मार दिया उसको मार दवाई उसको दवाई दे previously throughout this event maybe had a chance of kicking off this best of 5 ooh got the info big info found अबे यार ये आ रहा है आगे बस टीबैगिंग मतलब कि आप एक तरह से प्ले के उस पे बैठ जहाँ वो मरा
kind of a disrespecting people say, but it's fun. Finds one ahead of the Viper wall. This guy with the Guardian is something else still, or that's dangerous. Nice. Oh, something के हाथ में गन है बढ़िया. Warming himself up into this matchup. Oh, baby. Deny any comfort towards ramp, and that's the spike dropped. Nice, भाई अब जैसे साहिल ज़ैज़ल कर रहे थे ना, ऐसे मैं कह रहा था कि ये डिस्कॉर्ड पे ऐसे लोग चाहिए जैसे दास देख बैठा हुआ है बस सुन रहा है. नाइस भाई. अबे मैच देख ले. कितने मैच भाई नहीं मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा. और तू भाई सुन ज़ैज़ल, याद रखियो पिछली बार क्या होता है, मत करियो वो चीज. तेरा ये नहीं आना चाहिए नाइस नाइस ये सब, कुछ और बोल बट ये मत बोलियो प्लीज. अरे भाई पिछली बार हरवा दिया था ऑलमोस्ट इसने. क्या हरवा दिया तुमने भाई? पता क्या हुआ, इसने 4 सेकंड ने मारा 2, ठीक है, तीसरा मारा, फिर नाइस नाइस बोल रहा, चौथे में मर गया, फिर वापस सेम हुआ, कह रहा नाइस नाइस 4 सेकंड और मर गया. बोल मत तू ईजी को बोल, हम पेपर एक्स को कर लेंगे. तो क्या मिलता है क्या इधर ड्रॉप? फिर सोलो ने एक डायलॉग मारा था. फिर सोलो ने बोला कि अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में चूक जाती है. जी भाई ये देखो भाई ऐसा कुछ नहीं बोला. साजिश में लग जाती ये बोला था. भाई मैं एक्टर हूँ, एक्टर कभी भी गलत नहीं बोला. साइड पे एक बैठ भाई, पूरा आप कर ले, बताए पूरा आप कहेंगे देखियो अभी लोग. देख एक साइड क्लियर कर दिया, वो रेड फ्लाई और अल्ट करके कोना का क्लियर किया, बट उसका आई थिंक लाइनअप हो सकता है, एक पुल है और एक लाइनअप नहीं. नो मॉलीज, कुछ नहीं है, मॉलीज भी नहीं है. नाइस जिंग जिंग, नाइस 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 जिंग. ओह नाइस नेड यार, नाइस नेड. जिंग्स इनटू रन एंड इज डेड, बट ही कैन डू इट. भाई वो नेड अच्छा था दोनों से. हाँ 3 जो मारे हैं. वो नेड बढ़िया था भाई उसका, बहुत बढ़िया नेड था वो. They bring it down to just one rifle taken away in the hands of PRX. Even here, desperate to try and retake the space. I think EG have the perfect read of exactly what's going on here. As soon as they've noted that it's only one member in the form of Forsaken down on site. Something भाई बहुत वो खेलता होता है बिना फेस एक्सप्रेशन के, कुछ नहीं होता उसके एक्सप्रेशन वगैरह. भाई क्या मतलब तेरा, तू चाहता है कि क्या वो जीप निकाल के बाहर रहेगा जैसे ही आएगा कोई मारेगा? मैं थोड़ी है वो, मैं कहाँ जीप निकाल दूं भाई, तू जीप सब कुछ निकाल देता तू भाई, कुछ भी भाई. ऑनस्क्रीन में कहता हूं, ऑफस्क्रीन तो क्या क्या करता है वो तो सब ठीक है. हां लैन पे चाट रहा हूं. अच्छा गाइस कोई फैमिली फ्रेंडली हां फैमिली फ्रेंडली है भाई. ओ देख लिया. ओह यार लो है ना ये स्काई. हां स्काई हाफ एचपी हो गया था. दोनों को निकाला था. कम ऑन बेबी, जस्ट इमेजिन वो लगता कॉन्फिडेंट. टाइमिंग. He takes something's life. The site now difficult to take with even one. उसने डैश अभी तक ऑन नहीं किया. The flash follow up. Oh, nice. Forsaken's found him. That's perfect. They're allowed a little bit of room now to get that plant down. They can at least have time on their side. Oh भाई, mind free किते एक पोजी. मरा. Played in here potentially. Oh, what? What the hell? Why is she tagging? I both have P5 में. Nice by 4 seconds doing it. भाई तू चुप हो जा. Oh, he's eating that flash. He's so Oh, you got it. Knife him. Not going to be entertained. Beautiful control from Pay. क्या राउंड निकाला इन्होंने. वो माइंड फ्लिक की पोजीशन बहुत अच्छी थी, बट वो दिख गया उसको. अरे उसने वो बेफालतू में किया. टॉम ने जो स्प्रे डाउन किया वो करने की जरूरत नहीं था. शुड हैव किल्ड हिम. राइट स्विंग देता गया. It could be something that Busio was saying how difficult it is to play against them. You give them time and space to set up some of the games they like to incorporate into their game plan. Looking at the stack, this time it is on the correct side of the map for EG. Oh भाई, 4 लोग भी. This could be
pretty violent here. Something going to get ahead of this, but could be now a little vulnerable. अबे लो ही हो गया ये. Oh, nice. Nice. Well controlled by Jing. Now looking to try and. ओए शॉटगन जैसे उसे स्मोक देखा ना तभी उधर किया. ओह साइड पे दो. ओए ओए शॉटगन यार. Nice. आ गया राउंड आ गया. हाँ बोल ले अब बोल ले. I have no idea what this is. Can you explain me why everyone is supporting PRX? Because PRX is top 5 team which never wins in championship. So this is first time they are playing in championship, and people having like 50-50 chances of winning, and Jing having last tournament. That's why everybody is kind of emotional that they should win. And both EG and PRX are playing first time grand finals. No. I think PRX एक बार खेल चुके हैं ना? Second time. दोनों का second time. दोनों का. हाँ अजल जिनका लास्ट है या मनन का पहला नहीं हुआ. मतलब तू ये मानता है कि मेरे को होना ठीक है. थैंक यू साहिल, ये तारीफ ही है एक तरह से. हाँ तो तारीफ ही है बट भाई देख सिंपल सी ओ उसको मरवा दिया. कोई दिक्कत नहीं. दो बहुत पैसा है. अच्छा शायद से एंटरटेन कर रहा था. अल्ट भी मिलेगा ना. जिंग पहले वैल्यू में ये बना दिया अब वायरल में. The second of the Jing was pretty wild. Yes. I mean, you're looking at the ult zone, Mike. EG having 3 just ult है, mind pick ult है, something ult है. सारे मार रहे have theirs ready. डिवाइस की बेल्ट On आने the other वाली है. side, some very impactful ults as well. So this could be a high value round, and Jing is making no subtleties of the site that he wants. Leading the way towards B, showstoppers popped, and they're going to have to respect this. They have to sit deep. No posting it as well. पूरा ले लिया कंट्रोल. Very early exploration. वो दवाई कहाँ है? Look how late Divine is planning to play on this. But they got very good control ना, तो वो आराम से पैसे भी खेलने वाले हैं. ओ भाई जज let's go. 𝙤𝙤𝙤𝙤's got his work cut out here. You can see it. Judge round the corner. अरे यार. 𝙤𝙤𝙤 denies something and does the dance. Back and forth. अरे नहीं यार. And now 𝙤𝙤𝙤 pop with the ult wants to clear out by Pillar. That's his. EG. Hard to run. It's Forsaken and Divine left standing in a 2v4. Divine still in play. मैं ये बफर क्यों हो गया? What the fuck? टाइम पे क्यों है? अबे To play in Divine, to force EG deeper into spawn. I think ये जानबूझ के हुआ है. Maybe they doesn't want us to see what happening. It's another round there for बफर वाला भी होता है. हाँ सबका हुआ. On the back of the things that 𝙤𝙤𝙤's alluding to. Don't want to give सोच कोई ऑडियंस से बैठ के ट्विच देख रहा हूँ. उसको बोलो लोड हो रहा है भाई ज्यादा, थोड़ा कम दे. वो तो फोन पे एक भाई Valorant नेक्स्ट लेवल जा रहा है भाई. 300 needed. टोटल 1 मिलियन तो होगा सारे प्लेटफॉर्म पे. Plays this one out. Again, Ethan receiving most of the contact to this, but there is presence in middle. PRX want to take space here. This will be the round win that actually gets the operator in hand for 𝙤𝙤𝙤 as well. You see he's saving through with the Blade Storm. Oh, nice. Kind of loosened this hold on A site. Split as in buying Lotus. तो something वो खेलता है भाई पूरी ब्लैक वैंडल. भाई कोना एंगल यार. Pain Shell denies any space coming directly towards the site, but it kind of plays in 𝙤𝙤𝙤 a little, but Heaven is the next target of focus for PRX. Seekers go through. चाकू बड़ी तेज है. It's not very deep here. 𝙤𝙤𝙤 just chomping at the bit. He wants in. To get involved in it. Knife का पता नहीं. Oh, trying to go for the follow up, but PRX, as said, will always be ready. 𝙤𝙤𝙤 का knife पे तो aim अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा यार. Goes back in again. 3v3. These rehits. लो है वो. मैं बहुत सकता हूँ. हेवन क्लियर हो जाएगा. जब हेवन क्लियर है. गाइस एक टिप दूंगा, रेस जो हैं याद रखना, जब भी तुम रेस की अल्ट कर रहे हो डबल सैचल करके, तो फर्स्ट सैचल के बाद अल्ट खोलना, फिर सेकंड सैचल करना. फर्स्ट सैचल के बाद अल्ट, क्योंकि अगर आप 2 सैचल करके अल्ट करोगे तो लेट खुलती है, बट अगर आप पहली
फर्स्ट एचएल के बात करोगे तो जल्दी हो नाइस 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 यार ये बड़ा सेक्सी है पता है क्या पेपर में सब मारे भाई सब 2K 3K सब मारे भाई वो कल देखा था माइंड फ्रीक का हाँ पोल पे भाई और पता है दोनों टीम एक तरह से रैंक गेम्स खेल रही है ऐसा लग रहा है सच बताओ तो अबे पेपर से खेलती है डब्ल्यू गेमिंग करती है वो तो मोस्टली डब्ल्यू साहब भाई सही है यार डॉट डाल के बता रहे हो आप देख रहे हो सही है यार ये अच्छा है सबको करना चाहिए जो साइलेंट व्यूअर बन रहे हैं ना भाई तुम्हें एक डॉट डॉट डाल देना चाहिए पता चलता है कि भाई तुम देख रहे हो नाम याद रहेगा पहला ईजी का टाइम ये क्या हो रहा है he said we were going to Disneyland just married Zach said thank you for the follow समर भी देख रहा था भाई नहीं इससे मेरे को ये याद रहता है ये कुछ नाम याद रहते हैं हाइपर भी नहीं We have seen the peak. Thank you, Jin. ये पिज्जा लेके आया Are you able to achieve that versus something versus PRX as a whole? To be honest, outside of the head-to-head. मैच देखने आया था जो स्टार्ट शो करने लगे just the masters of mayhem. All five doing maths lol. are just lunatics. नहीं, I think मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी यही चीज डाल रखी है हाँ मैंने डिस्क्रिप्शन पे क्लियरली डाला हुआ है कि it would be appreciated and motivating for me if you not be a silent viewer but if you don't know what to chat then just put a dot it's fine मैंने डाल रखा है किसी भी अबे तुम क्यों डाल रहे हो एक ही जी भाई देखा नहीं मैंने यार वापस दिखाओ अच्छा कुछ ओए डॉग करके मार देगा उसको ओए नहीं भाई ये है ना ज़ैज़ल ने अप्रिशिएट किया था ना नहीं करता तो मार देता तू भाई जब राउंड खत्म हो जाए तब अप्रिशिएट कर यार ट्राई करके देख अब जैसे कौन जिंदा है डीमन 1 की तारीफ कर एक बार करियो भाई दिल से करियो लेकिन भाई ये चाहता है ये इजी जीते तभी पेपर ऐसे इंडोनेशिया गए ना ओके बस तुम लाइव और मैं कैसे आने वाला है वीर थैंक यू करेगा ओह yeah उसके पास डॉग भी कुछ भी नहीं है ना नहीं nope this is a really difficult pit to overcome. Mindfreak actually playing a little bit disconnected outside here on rafters. But can they isolate him cleanly, or does he decide to? I think they save करेंगे या फिर हाँ save करेंगे. Dude, no way they were gonna go for it. Horrifically hard to I think break. Limited vision. What पैसा can नहीं he उनके do with पास this? but they can try He's got a flash. With the spread here, it's a real question. Actually, that's going to found one. Okay, oh still no. one in the pit. He's diving in into this. He's just got him. Wait, did he see him or उसे ऐसी spray किया? ऐसे मारा The most random time here. स्पॉट नहीं हुआ था Like I said, there's a big question mark with this spreading as deep as it लॉल does for CT. कॉस्तब कह रहा है भाई ये ज़ैज़ल और कायरा दोनों सेम है Especially after Mindfreak gets a kill in heaven. पनौती you mean हो पनौती क्यों बोल रहा भाई मैं बोल सकता हूँ क्यों Okay, that's the start. क्या बताऊँ अभी कायरा को बोलते हैं भाई कायरा ने मेरे को नहीं पता कायरा ने क्या किया ज़ैज़ल ने क्या किया उसने बेट किया था हाँ पूरा अरे Valorant not able to handle so much viewership or what man सही में भाई हो सका On deck, something bringing out the big green. Looking to find YouTube पे भी हो रहा है क्या कुछ ऐसा बहुत कम हो गई ट्विच पे हो रहा है ये ट्विच जानबूझ के कर रहा है शायद Not necessarily expecting an operator, so. but they don't know we are Valorantians दोबारा मत बोलना Valoranters बड़ा अजीब लग रहा था इसलिए Valorantians बोला हाइसेंस ये देख चल बे हाइसेंस पास में से था इसलिए लगा है वो अबे हाइसेंस है ये ले ये भी हाइसेंस बोल अब बोल
ये Oh, confirmation there now. Something है भाई. Something अच्छा. भाई something don't नहीं यार बोलना नहीं अच्छा नहीं. Information. But look how little of the site EG have to play with. PRX do have, you know, the green light to go. The flash, Nice, fantastic, something. put into motion as Big something's high going to sense, claim that. Demon 1 now. Big high sense, big high sense, big high sense. Big high sense. अबे सालो. Does wonders once he got to the site, and the other two मैं तेरे साथ हूँ. just want High sense these player. weapons. तुम दोनों हाई सेंस प्लेयर हो, दोनों ही इमॉर्टल भाई रे डिस्नी हो रहा तुम लोग का. This round चलना opened छोटू. up. तेरा रेडिएंट इसलिए होता है कि तू टीम में से चलते हैं. Oh, so you want to say I am some भाई AFK हो गया कॉम. अच्छा नहीं. Somehow only leaving Forsaken at 14 HP. बोल चैट में लिख रहा हूँ AFK लास्ट. PRX taking the lead here. मुझे मैसेज आओ जीजी AFK. But, like I said, it's crucial here that allowed है क्या something's messages operated. It's भेजना? kind of नहीं. figured out at the right time. नहीं ना? Like I said, with PRX desperately trying to create a little bit of pressure towards 8. I mean, you see what टी बैगिंग भी क्यों नहीं करते क्योंकि टी बैगिंग से वही है डिसरिस्पेक्टिंग होता है और डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है. Create an opportunity elsewhere on the map just by showing a little bit of presence. मतलब मान ले तू 110 चल रहा हो तेरे को टी बैग कर रहे हैं और लोग तो कितना वो लगेगा. Any utility to garner some information or even set something in motion with a flash. Something नहीं निकाल दिया round. It's like sledging in cricket. On that ult here. Let's keep that in the back of your Yeah. mind. But again, they did get that operator back. You're starting to see the money not fully stabilized, but in a far better spot for PRX than it is EG. So they should. अभी imagine कर अभी इतने सारे अभी वो लोग आए क्यों नहीं. Waiting this out, not falling foul to any of it. ये क्या कहते हैं नेवी ये सब नेवी तरीशा ये सारे. नाइफ तो हो गया. बेला के घर में कोई हुआ कि तनीशा यार के डिस्कॉर्ड पे कर रही है वॉच पार्टी. ओ उनको मिली हुई है परमिशन. नहीं आपस में देख रहे हो. चलो निकल गया भाई. यार में कौन देख रहा है. लीजन और लीजन यार अच्छा हाँ लीजन तो पता है. How did 𝙬𝙤𝙡 get to? 𝙬𝙤𝙡 2 with a classic. तो वैसे सही है वो फिर बहुत पैसे करेगा ना. Backside apparently to catch something in midair. क्योंकि स्ट्रीम पे वो सब बातें नहीं हो पाती ना वैसे तो इसलिए सही है. चलो What is this though? भाई अच्छा शॉट मारा यार उसने. भाई इतनी लो सेंस पे. अबे लो सेंस कहाँ है भाई डीमन की. एक ही चीज लो है भाई वो. बताइए क्या सेंस है वहाँ पे आपको क्या हुआ उसका LAN का. डीमन 1 की इतनी लो हम जीत गए. नहीं है. अबे ओ क्या जीत गए. मैं वहाँ भाई मैच बाय मिला है हमें वहाँ पहुँच के बाय मिल गया. बता खेला भी नहीं. तो तेरे पास में ही है. पास में भाई लैंड छाक गए थे साहिल. लक्ष्मी जगह ना. हाँ 2 घंटे लगे मेरे को. हाँ 2 घंटे. बट यहाँ से वापस आने में 1 घंटा लगा. जाने में 2 घंटे लगे भाई. पता नहीं क्या इतना ट्रैफिक. बाय मिल गया. अब कल है. हाँ सेमीफाइनल आज ही. ओ भाई सही हिट कर रहे हैं. मैं नहीं आया मैं कहीं पे भाई. शायद मैं अगर जीत गया तो अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं शायद द्वारका. मेरे को 1-2 दिन मिलता है छुट्टी का ऑफिस से. मैं घर पे काम करता हूँ. द्वारका शायद आऊंगा. भाई बता दियो. देर से नहीं मिलूंगा वो समझ. तुझसे मिलना किसको है सभी. अरे क्या बता दियो आएगा तो. जीवन की 160 डी पे आया. आर यू किडिंग मी. Oh nice. Let's go. Creating all of this room and they are running 30 seconds. मैं भी 160 EDPI कर लूँ डीमन ही बन जाऊंगा शायद. नहीं यार फिर मैं पीछे वालों को नहीं मार पाऊंगा. मैं आपके साथ होगा जोगमो. ओए भाई. It's all about timing. Busio is taking away some of the ओ भाई. doesn't get it. Dude गेम सेंस तो था यार वो रेस का. This has been once again a mental. वो दिन कहाँ से कहाँ भागा. 2v3 ना कर लेंगे. PRX कर लेंगे. ओ टाइमिंग देखा मैं बोलता तो हो जाता. अब देख अब मैं बोलूं देखे ट्राई करे ये वाला राउंड EG जीतेगी. वैसे नहीं जीतेगी. उनका ढंग का बाय भी नहीं. बैन कर देंगे सर्वर से. अबे बाय. Perfect example. 𝙬𝙤𝙡 there with a showstopper. Again, what do you choose?
there is no clear choice. A bit of a Sophie's choice, if anything. But now Thank you we're for looking at 278 being there for likes. Forsaken. That could be right off the rip. But it looks Let's like take we're us gonna one head tap. first into Oh, this dude, EG. show me one tap, please. Gonna be forced off. Trying to spam away those Nade. seekers, but do they springboard quickly? Spam Oh भाई लो कर दिया, और जिंग को भी लो कर दिया. Something I mean. Something on the other side. And that paint shell could become pivotal. Oh. Nearly catching with the spam as well. No harm, no foul just yet. Ooh. PRX getting themselves ramp control. EG still in control of the site itself. Again, device set up to try and catch an overpeak elsewhere. Something alongside him in mid. ओए क्रैक Access to vents क्या actually. So ASMR ले ले ASMR ले ले, आवाज आ रही है. here to regroup. क्या क्या कहते हैं, इतना अच्छी बात दुकान है, अच्छा माइक ले ले भाई माइक कर हाँ भाई यार मुझे अपना स्टारलाइट ठीक करवाना है यार. It's going to connect with the ball. सीधे Tries to उसके slow it down मुंह पे himself. Falls away towards the site, allows Bushi to get the play in, but Ooh. it's also Nice. breaks in like a thief in the Nice. night. हो गया 8-4. Clean on these site takes. Bond's going to come through in EG. The last three were a mile away. Yes, 𝙬𝙤𝙤 got there, but he's Heal got his लेगा work भी cut for out. second. जिंग मार लेगा. To slow things down here, Jing still looking to get aggressive. 1 kill away from the showstopper here, but the flash is perfect. 𝙬𝙤𝙤 finds it. Ooh. Shut down by Nice Forsaken. Mind pick. Bye bye. Mind pick God भाई. भाई अभी बट रुक जाओ. स्प्लिट थोड़ा सा अटैक साइड मैप है, बट डीमन वन नहीं चल रहा. जीत गए भाई, PRX जीत गई भाई यार ये कीजिए, अगर हारी ना तो कल का लैन कुछ भी करना, जीतने नहीं दूंगा तुम लोगों को. अगर PRX हारी AKG हम लोग पहुंच के मुझे पीटेंगे लाइन पे. कौन बोले, नाम बताना मेरे को. क्रैक. अरे ये फिर आ गई. आपसे मिलूंगा मैं. In this sort of place, अच्छी बात करो, मैं आ जाऊं. AKG भाई यार कुछ खाने के लिए लेके आए. आप भी दिल्ली में आते हैं. आगे आपने बोला सच हो गया. तो देख लो फिर दिल्ली में कुछ होता है. But let's take a Tayo look just at the maybe. Verizon high-speed mode. Demon Demon 1. Mimi, we knew this matchup is going to be high speed, and we got a treat to kick us off. Yeah, we did. I think that EG switching over to the double duelist comp was a good idea. It's a lot more comfortable for them, and they showed this early on with some of these flood retakes. This round was entirely 𝙬𝙤𝙤 and Demon 1 working together to win things out on the retake. We saw throughout the और अगर जीत गई PRX तो strong these two players. हाँ PRX जीत गई तो क्या नहीं, मैं आपको नंबर 1 समझा खिलाऊंगा तो मैं अगर जीत गई तो मैं आपको समोसा और थम्स अप दूंगा. पता पेट खराब हो जाएगा. बट अगर हम सेमी जीत गए, फाइनल जीतेंगे. बट मेरे को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हमारी टीम में 2 लड़कियां हैं और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ सही में. मुझे लगा अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा. भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैंने ये सोच के कि लड़कियां तो हार जाएंगी, तो भाई मैं तुम्हें पहले बता दूं कि हमने GGG में खेला था, सामने भी लड़की रोज थी और अपनी टीम में बाया थी और दोनों ही टॉप ट्राई करते, अपने सारे लड़के डाउन पे थे. और वो क्लच निकाले थे रोज ने भी भाई. हाँ नहीं मेरी कमजोरी है भाई. पता क्या है अभी देख क्या हुआ है. मेरा ना दिल नहीं टूटा, मतलब वैसे है. तो अब पता क्या होता है, सिंपल सा चीज है, जब सामने लड़की है तो मैं मारना ही नहीं चाहता, और जब मेरी टीम में तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. तो ये तभी मुझे VCT रोक रहा है. अब तुम ये कहोगे VCT में लड़के हैं, बट तुम मेरी आंखें ऑडियंस पे जाती है ना. किसी लड़की को बोल के उसका दिल करवा दे. तो बोल के क्या होता है बे? ऐसी बात करेंगे भाई. दिल तुड़ाना ही क्यों है, सीधा अरेंज मैरिज. एक चीज बोलनी थी, ऑलरेडी करने में आया था बट हमने बोल दिया. अरे सीधा अरेंज मैरिज, दिल टूटेगा ही नहीं, खत्म बात. उसके नाम ढूंढना पड़ेगा. ऐसी बातें करोगे तो दिल लगेगा. ये उसके में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अबे गाना नहीं सुना, दिल लगे ना दिल जले से दिल जल जा. अबे नहीं यार, ते शादी करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत. भाई अभी मेहनत मेरी 2 जगह लगाओ. एक तो जिम ट्रेनर बनो मेरे, नहीं तो गेम इनवाइट मिलेगा मॉड्स को. किसको? हां सबको, मॉड्स को शादी में. भाई क्या वहाँ गेम खेलने जा रहा हूँ मैं, इनवाइट मिलेगा?
बाद में खेलना बाद में होगा। डिपेंड करता है, अगर कोलकाता की तो भाई सक्सेस तो मैं हूँ भाई। अभी सोलोमनन ने बोला ना कि दोनों लड़कियां टॉप फ्रैगर थी, मैं लिटरली गेम के अंदर चेक करने गया हूँ भाई। शर्म आ रही है? कोच हो तुम? कोच हो? कम ऑन नाइस यार, मुझे लगा फॉर सेकंड ने मोड़ दिया। फोकस नहीं आपका। शादी की बात हो रही है, फोकस रहेगा किसी का तो भी और फोकस रहेगा। ये दोगलापन है, क्या दोगलापन है भाई? तो आज हम रैंक खेल रहे थे, मेरे आसपास लड़कियां बैठी थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हाँ स्प्रिंट पे खेल रहा था भाई। क्या बोलूं मैं? अरे मैं ब्रेन डेड की तरह खेल रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था मैं। The worst possible time. ये वो चक्कर गया था भाई। Pistol round on the board here. वही खुद सोचो साहिल भाई, लेफ्ट में लड़की, राइट में लड़की, फिर एकदम कोने में और लड़की, तो भाई गेम पे ध्यान दे दो, गेम पे ध्यान दे दो। लड़की लड़की जब देखो लड़की लड़की। डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। हम पे तो है ही ना, मेरे गोल्स बहुत क्लियर हैं भाई। दाल पे ये तुम बोल रहे हो ओके? भाई तुम लोग चुप हो जाओ। लड़की लड़की भाई गेम पे ध्यान दे लो। हो गया भाई आज का। भाई यार मैं नहीं आ रहा कल लैन पे। सोलो भाई हार जाएंगे। नहीं हारेंगे भाई, अभी पिस्टल दो राउंड ही है यार। चल मारो भाई, बट जो मारा इसने अटैकिंग साइड मैप है ये। ऐसे में डिथ मैच में मारता हूं। Can potentially get the plant. Yeah. Oh, build up the showstopper again with the plant coming through here. Just still being careful in case there was someone waiting behind those screens. Oh, bye, Too aware. You don't get to flank the flanker. Tom's going to find him. Prime Gaming flawless. Moving forward and Demon1 warming up. Lol, Veer. But यार लो सेंस में लिजिडी 160 DPI में खेलता है। It's a real talent. Oh, that reaction, bro! That was good reaction, man. Keep it. Make it a meme, man. Make it a meme. Low sense का फायदा, true, man. But बता अगर high sense में यही चीज कर लो ना, बहुत strong हो जाता। विनायक वेट कर, थोड़ा टाइम आउट करने का। Up towards round, he does have Ethan not too far away. But look at the spike and look at the player on the other side. It's going to be टाइम आउट जब होगा इनका तब मैं बताऊंगा। they aren't actually playing towards fence. It's on something shoulder. No way! Nice, nice. What the? Oh fuck, man! No! Mind freak. There's the control. Yo, bro, he's cooking. I'm telling you, he's cooking. He's gonna go for the ace. This is not easy. इसको ऐसे अगर ऐसे करते रहोगे ना उसका बूस्ट हो जाएगा भाई सही में। साला 14-10 हो गया यार। One has to come across this way for the heal regardless. वही जब heal लेगा make something work. एक से मारेगा भाई। अगर इसने एक मार दिया ना ये इसके लिए निकलेगा, देख लियो। इसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो चुप बैठना, नहीं मारेगा। बी कॉन्फिडेंस। ये 4 सेकंड, कम ऑन, नाइस। ओ नाइस यार मैं चुप हो जाओ, मैं तेरी मार दूंगा। अबे भाई मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए। भाई बताओ रेडिन को चुप करवा रहे हो? हाँ भाई रेडिन को चुप करवाने के लिए रेडिन पे आना पड़ेगा। भाई मैं समझ रहा हूँ ये रेडिन गेम्स ही है ना। देख आगे मैं तो पीछे तोड़ दूंगा, तारो चुप हो जा। भाई फिर स्ट्रीम कैसे करूंगा तू सोचे देख। भाई फिर लोग बार से हर जगह से आएंगे तुझे मारने। नाइस। उसका कॉन्फिडेंस लो था मैच के स्टार्ट में और अब बढ़, हाँ वही ना बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो नहीं भाई कुक मत करने दो। हाई वॉच आवर्स को भाई मैं सोच रहा हूँ हाई वॉच आवर्स को या तो प्राइवेट डिस्कॉर्ड पे इनविटेशन या वी कैन लाइक गिव मोर थिंग, ऐसे कुछ सोचा है। और ऑनेस्टली पता क्या अभी We noted it. Demon1 up to 15 kills. I don't know. I just feel like कुछ करना चाहिए। Will you do Q to Radiant with your girl? डिपेंड करता है वो भाई उसको गेमिंग पसंद है नहीं है, गेमरी है क्या है। भाई फिर हम लड़कियों की बातें कर रहे हैं भाई तुम। भाई और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि हमारी देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी,
ये टॉपिक्स हैं बहुत सारे देश में, बहुत टॉपिक्स हैं। के बढ़ेगी। नहीं भाई देखियो इकोनॉमी में मजा नहीं आता ना लोगों को। भाई भाई Gets him up to 8 with 2 in this round. And now 3, something divine, Mind Freak, where are they? भाई यार बहुत One towards CT and a messy engagement. Gives Boostio the third. मैं ये बोलने वाला था इकोनॉमी से इनका भाई यार ओ यार दे आर कुकिंग ब्रो, आई एम टेलिंग यू। भाई मेरे को यहाँ से ना थोड़ा डायरेक्शन दिख रहा है ये क्लोज मैप जाने का। कल मैं तो आने यार मेरे तरफ से थप्पड़ मारो खींच के, ठीक है प्लीज। मैं आता हूँ भाई एक तो मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, रक्षाबंधन है कल थोड़ा ना। अरे तो भाई ये हो जाता है लोगों को ऐसा भाई चाहिए किसको I'm a little bit nervous to say it, but I'll start nonetheless. I'm a little worried at how many of these rounds. मैं तो बकवास मत करेगा, मैं तो बैठे बैठे। तेरे जैसे भाई जैसे कि तू तो लड़की है ना साले। भाई तो मैं लड़के भाई भाई होते हैं क्या? भाई लड़कों के भी होते हैं। छोड़ो। भाई तू ज्यादा बोल रहे तब से भूल मत, रीडिंग जाने के लिए ना मेरी हेल्प लगेगी तेरे को। मतलब जॉब आ गई तो छोड़ दो। मैं खेली का आजकल भाई, फोकस से काम कर रही हूं। भाई जीतेंगे जीतेंगे भाई। पैकेज भाई PRX जीतेगी बस। PRX शादी में माउस पैड और मैच अभी क्या Might even catch her, and yes, he does. 𝙬𝙤𝙤𝙤 gets off a little bit of damage. Massive. And they're going to read into this. Yeah. This seems very indicative of that A hit coming through. भाई पता है EG अगर ये मैप हारती है ना, एसेंट मैप है नेक्स्ट, और देखा था पिछली बार क्या हुआ था। हमें पता है कि जिंग एक HP, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से इंट्यूशंस आ रही हैं कि तो EG 2 मैप जीतेगी शुरू के, बाकी तीनों के तीनों पेपर एक्स जीतेगी। नहीं तो बैट पर्ल पे मुझे पूरा भरोसा है पेपर एक्स। भाई स्प्लिट भाई पेपर एक्स को स्प्लिट पे जीतना बहुत जरूरी है। ये देख ये देख ये देख देखा यू भाई कुक कर लिया ना उसने, यही होता है यार भाई। जस्ट लाइक मी, मैं भी जानता हूँ भाई, हम 4 या 3 किल मारते हैं अटैक में, फिर ओ सॉरी डिफेंड में या अटैक में, फिर हम उल्टा जब करने लगते हैं ना पूरा ऊपर हो जाता है। तभी तो बहुत लोग कहते नहीं भाई तुम तो बॉटम फ्रैग कर रहे थे, अचानक से टॉप फ्रैग पे आ गए। यही होता है भाई। सब गलती मैंने किया भाई, अगर PRX हारी ना गलती मैंने की होगी। हाँ भाई बिना e-sports में आए लोग मेरे को प्रो समझते हैं। जस्ट इमेजिन कौन समझता है? कौन समझता है? The clock's running this low. He dips into this cloudburst to find the first. Something falls. Let's go! Hits the updraft to avoid the showstopper from Jing. I mean, these rounds are just ridiculous. I have to imagine Potter is absolutely tearing her hair out right now. Because all the structure, all the discipline that you brought to this team now, you have to throw the rulebook out the window. I feel like they almost started on that though. This map may not be a gimme, but it's going to be one of those where you've got to know this was going to come out, right? You knew the Vita was going to look like this. That last composition, the chamber wasn't looking good, it wasn't working. The Astro with Demon 1 didn't look as comfortable. कहाँ गया? हाँ विनायक भाई ऐसी बात है कि there's no one stopping from women joining male rosters. Okay. कोई भी महिला अगर चाहे तो नॉर्मल रोस्टर ज्वाइन कर सकती है, but Riot has an entire scheme of empowering feminized genders. If you identify as women or feminine gender, they will support you in a separate league. That's the point, and it is much better than having male co-workers. One off the divide, they're very close here to a, well, it could be a very deadly round. Basically, just imagine
लाइक फीमेल्स खेल सकती हैं मेल वैलोरेंट भी. इट्स जस्ट मान लो कि फीमेल फुटबॉल और मेल फुटबॉल, फीमेल फुटबॉल को अलग से इसलिए बनाया गया क्योंकि ताकि लड़कियां compete कर पाएं और वो फिजिकल डिसएडवांटेज जो है वो ना उनको फेस करना पड़े. I mean, Valorant में we have people like Fluorescent who are cracked even against men. Yeah, Potter also used to play. Potter जो कोच है ये भी मेल वर्सेस में खेलते थे. Yeah, there are exceptions. इसकी माँ की चूत भाई ओए गाली मत दो यार. मेरे को आप ईमेल करना डीमन को सॉरी बोलते हो. उसे गोली कैसे मारी भाई? Real, I don't look. नहीं बट ये अलाउड है, गोली मारना अलाउड है. भाई डीमन सेम दे रहा है भाई. भाई मैं भी करूंगा ये चीज. मैं तो फिर मैं अपने डिफेंस में ये बोलूंगा मेरा माउस फ्लैग हो गया वायरलेस. फिर मैं सोलो को गाली दूंगा. फिर मैं सोलो को भी ऐसे ही गाली दूंगा. ओह थैंक गॉड. एक एचपी पे चल रहा है. Everything. Denied the initial plant, can they find any more ways to cause problems? Something wants to. The spray, the shot in the dark, but it's Boostio to find Jing. Oh no, and it's all something. In a 1 versus 4. This is brutal. Ethan to the left, 3 to the right. He's got the first. Looks towards heaven. Tries to snap back around. 7 HP ain't enough. EG tying this up at 9 apiece. Shit, yaar. होएगा. Just wild. Some of these rounds to watch back. Something should play breach and for him should play Jack. नहीं I think देखो उन्होंने try नहीं किया but try. Desk late टूटा. I think the desk is going to be it's totally overtime today. It's totally depend होता है कि some of them are they're very grand finals में कभी भी experiment नहीं कर सकता वैसे until हमने scrims में कर रखा. Intention I guess that both teams have in certain situations, and then the outcome. I mean, even there, like Com's killing Forsaken behind him. और honestly speaking ना, आप कितनी भी जेट्स देखो, ऐसा issue हो जाता है. The difference maker to this. Yeah, it's not always you can go. Nice. He's gaining. He's also cooking. Come on. Off the maps. No, why? Insane. Why is it dog तोड़ के उसको मार दिया? Fantastic work considering what they brought into this round. Oh, divine reset. Oh, भाई, something एक और के लिए. मार. Into the blade storm. Oh, यार, wall bang. Thank you. भाई, fuck. आप कितना भी कर लो ट्विच ऐसे, हम फिर भी देखेंगे. देख लेना. Yes, they can leave one. I think that's just Mind Freak on towards B, but again, look at the weaponry. It's Forsaken who's the big player in this. Yes, the Pain Shell could be pivotal. Yes, all of the blast packs could do well, and they have. Forsaken makes the most of it. Boostio on the trade, but still. It's a 2v2, and Jing's got himself on the site. And caution being shown by EG, they're aware. They're so and he's down on 4. Hemorrhaging blood. He's been deleted by Demon 1. And now Mind Freak. कर लेगा. Possibility, yes, in the HP. The timing's everything. अबे है ना शेरिफ दोनों लो हैं. On a platter. Come on! No! Yes! No! 10 HP. 28 total for EG. This is doable. Come on. Couldn't quite connect on either of that. यार क्रॉसफायर बना दिया यार उन्होंने. Yes! Yeah! The temptation. 5 HP on one side, 18 on the other. Come on, Deagle. भाई अब इस टाइम पे मत बोलो यार प्लीज. कम ऑन. किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है. क्या गंदी बातें करते हो तुम लोग. वही ना भाई. देखो मारते हैं भाई. तुम्हें वही देगा भाई. 22 बाया भाई. 22 बाया. And I'll change up a little bit. I was talking about it being concerning in वो terms of 14-10 पे था. 14-10. EG are going to be brimming with confidence at winning some of these rounds. No, I still believe they will clutch it. Meant to be the map they started out. Oh, Christ! Demon 1! Absolutely devastating impact off the rip. That takes away Forsaken. It opens up all those possibilities on the side here.
just going to put the showstopper in towards heaven, secure a second for the plant, and it's on the floor from PRX to try and bring this in. That operator not having a chance to pull off even a shot. PRX have to get a move Come on. Come on. Time already passing by. Look how disconnected Busio is here as well. Plenty of utility. Oh my god. I was expecting it to be calm. Yeah. It is Boosty. वो इजी बोल रहे, but मुझे जी सुनाई दे रहा है. Get a move on here. Try and face their demons. Taking away 𝙤𝙤𝙤𝙤. That's fantastic. Quick flash can't follow up, and now there's a chance, an opportunity. Oh yes! Guys, I like a knife. Maybe this is the time they can break through. Maybe not. Maybe he does not need knife. As Divide, the time is gone. He knows it. He can't change the outcome anymore. EG. मोमेंटम गया भाई, टाइम आउट आएगा. डीमन 1 मेरे को गुस्सा दिला रहा है भाई. टाइम आउट आएगा भाई. ये क्या होता है? अच्छा खेल रहा है वो, नो डाउट. 𝙤𝙤𝙤𝙤, we talked about him being on the भाई शॉट 20 अच्छा kills. मार I think दिया at that time Demon 1 was on 6. Something like that. He's on 25 now. I mean, he just doesn't. एक सेकंड, डीमन 1 जेट पे कैसे आ गया भाई? जेट पे तो था. एस्ट्रा में खेलता था ये. वो ऐसा भी जेट पे खेलता है. पर लास्ट के मैचेस में एस्ट्रा खेलता था ना ये. हाँ तो छोटे में ये क्लोज भाई देखो आप कोच हो, बट बता मैं रहा हूँ फिर भी. देखो सिंपल सी बात है. हर टीम के साथ ना आपने मैचेस किए हैं तो पता होता है कि इन टीम के साथ अब आपको ये खेलना है, ये नहीं होगा. अब जैसे फॉर सेकंड जेड भी खेलता है, रीना भी खेलता है. रीना उसने देखा पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार वो ट्राई करना नहीं चाहता. वो जेड से कॉन्फिडेंट लेके रीना ले सकता है. मुझे पता है, मैं बस ये सोच रहा हूँ एकदम से एक दिन के अंदर अपने वो चेंज करें भाई. कल ही तो स्प्लिट खेला था डीमन 1 और एस्ट्रा. तो इस पे वो तो उनके साथ खेला था, इस पे थोड़ा ना खेला था. A little front loaded for EG. The win conditions for me lie with PRX. भाई हाँ, PRX ने पिछली बार भी कमबैक किया था, ये भी कर सकते हैं. जाएगा ओटी आ गया. तीन राउंड पक्का ओटी. क्या बात है ओटी ना जाए, 13-11 हो जाए. ओटी होगा देखियो. For this to, I guess, ओटी में PRX जीत जाएगी. This starts with a PRX. 13-11 किसके फेवर में सोलो? हाँ? 13-11 किसके फेवर में? भाई हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? 11. Yeah, he does better. Are you sure you are like a coach? I mean, just asking you in a very gentle manner. I mean, show me tomorrow. Show me your place. Oh yeah. Nice, PRX. मार दिया बस, Demon 1 को मार दिया. अब please वैसे. अरे यार. That was so bad. Shot on the fade away. दोनों मेन को मार दिया. 𝙤𝙤𝙤𝙤 मेन है ना आज तो 𝙤𝙤𝙤𝙤 चल रहा है. हाँ बट नहीं यार, Demon 1 जो कर रहा है ना वो चीज थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है. उसने डिफेंड में कर दिया, इसने अटैक में कर रहा है. ये देखो गाली दे रहा है भाई ये साहिल. माफी लेटर आ जाना चाहिए आपका वीडियो. वो इमोशन है भाई, वो इमोशन है. अरे क्या हो गया? फिर से ट्विच यार. प्रोडक्शन है. No, this Amazon है. Amazon का सर्वर. I mean this just AWS भाई. मैं कंप्लेन करता हूँ. Sorry, going to other stream, you all hating Demon 1 in EG for better gameplay. No. I think ये लोग hate कर रहे हैं. Even that I know. I'm not hating. I'm seriously not hating. EG is really good, but I am supporting PRX. That's why I have little EG love it. मेरे पास 2 अकाउंट. But no doubt, both teams are perfectly doing good. AWS is my company's line. So. Demon 1 and 𝙤𝙤𝙤𝙤 meeting up. हेट नहीं कर रहे भाई बस. मैंने 6 ना आप लोग हेट कर रहे हैं, आप लोग गाली दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. आप हेट कर रहे हैं. नहीं गाली नहीं होती, गाली इमोशन होता है. तभी मैंने इनको बोला ये ईमेल लेके उनको करेंगे जैसे CSO में क्या था एक उससे कि कहते हैं आई विल नॉट हैक, ये सब बोला था ना, वही सेम. देखो नो डाउट Demon 1 बहुत इंसेंट खेल रहा है. भाई आपको पूरा हक तभी है जब आप या तो रेडियन है या आप ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हो. तो कुछ भी नहीं है. मैं हूँ, किसने कहा तेरे को? मैं रेडियन भी हूँ और मैं ई-स्पोर्ट्स टियर 2 मैं टियर 2 वालों को ई-स्पोर्ट्स मानता ही नहीं भाई.
सॉरी मैं नहीं मानता। Tier 2 में तो मैंने कर रखा है बहुत। ओए देखा ये क्या हुआ अभी? Exactly, yeah, because something's in such a deep position now. PC check करो please. Very early information. Mind freak. Back of the side. Divide. They're going to try and get ahead of They can do it. They can do it. Look at the pressure coming his way. Come on, come on. This is the round. This is the round. And now the chaos begins. No. Divide's fallen. Yes, 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 yes. आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया. प्यारे कॉम यार. Spike is not in कॉम hand. भाई 1v2 देखता नहीं है. हाँ हाँ वही वही. I don't know if he has time for this. Oh, he gave sound. नहीं है, आ गया, आ गया, आ गया. Nice work. Finally one round. Second round I mean. Double digits. Come on, come on, come on, come on. Slightest of opportunities. Chance here, but it definitely doesn't Doctor help the give on. finances. अरे ये सब बातें अभी मेरी हाथ नहीं करो. As it was, comes down to just one. For not for this stream. भाई ये बहुत पता है उसको दूसरा मिला है वैसे and वही change हो गया. Beautiful stuff. EG. Slight pump of the brakes for Potter. Yeah, all players are amazing. Bias थोड़ा बहुत चलता है. फिर fun कैसे आएगा यार? It has looked nothing short of phenomenal here from Evil Geniuses. Time to check in. EG का time out. That was a 6-round streak from EG. मैंने flow break करने का. Why not? Yeah. Tune up, get him in. At worst, you go OT. Now that could change things. PRX when they needed a miracle. I mean, Jing was right there. Shorties. Any shorties in? Got the divide. Got Seekers. Oh. But no other ults to depend on. भाई perfect क्यों? Firmly in control here. It's कितने PRX लोग EG को कर रहे हैं? 22 in terms of making some sort of adjustment. Going to be tough New here. York कब आएगा? अबे तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तेरे को रीडिंग जाना है. Two away from the blade storm. पूजिस भाई? क्या बस जाना होगा भाई उसको? क्या तो पहुंचना होगा रेडिएंट. मैं न्यूयॉर्क गोना प्ले. मैं तो रेडी हूँ. ये तो तुम्हें इंडियन टीम्स के दिमाग में डालना पड़ेगा कि सोलो बचा सोलो ट्राई नहीं किया. मैं ग्राइंड करने के लिए रेडी हूँ. मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं वीसीटी में कैसा रहूँगा क्या होगा. बट ग्राइंड लर्न वो उसके लिए रेडी हूँ. पहले मैं रेडी नहीं था. अब मैंने खुद को रेडी इतना कर दिया. मेंटली रेडी नहीं था. मेंटली कर दिया. Something's on lurk. All I need to do grind every single day and I can do that. I know. Not only for like 6 hours or 7 hours, I can do it daily. 12 hours. And if I'm getting a direction with the, you know, with team and coaches, then I can do it. I know. 5v3 हो गया यार. हो जाएगा. रुक जा. और सेकंड है. भाई 2 men up to the good. The 3 standing, a bulldog for one, भाई the वो judge for the बहुत other, and yes, पेशेंटली खेलने वाले 30 सेकंड वाला. it looks like EG are congregating. Oh, देखोगे. Plays in Forsaken and hopefully Divide. साउंड आ गया उसको. It doesn't really tell them anything. पता क्या होगा They're running low on time though. भाई उसने वहाँ पे स्मोक दिया उस साइड पे. टाइम नहीं है बस. You got to be calling for Mind Freak to hit that rotation, hit the panic. Come on, Mind Freak को यहाँ चाहिए बस. नहीं यार. That's fallen. Oh Forsaken fuck. now. It's all on him to try and stop the rot, stop EG. He's desperately trying, but it may not be enough. As Mind Freak now in a 1v4. GG guys. कोई बात. Map 1 on the line. Next map कौन सा है? And EG turning up on the Are you going to play map. for Expected to see global? this level. No, क्या पता ग्लोबल की जगह कोई और टीम आ जाए. Mind Freak क्या has पता a ग्लोबल ही हो. minefield to walk through. You got the pit, and you got 4 players. मैं तुझे पता चला VLT के बारे में. Fight or not, he's Wait. He takes Let's go. Oh, nice try यार. भाई इधर मत करो. हाँ वो सब बातें करनी नहीं चाहिए. Although रोस्टर डिसबैन कर दिया सीजन का. हाँ कर दिया. बस खत्म बात. कुछ बात मत करो. Confident opener to this series. यार भाई ये पेपर एक्स का मैप था. भाई प्लीज काश ऐसा हो जाए. एसएन पे EG जीती थी पिछली बार, बट पेपर एक्स इस बार ऐसा कमबैक देगी पता चल जाएगा.
जी जी नाइस प्लेड भाई। हाँ D11 लिजिट बहुत सही खेला अटैक में, मतलब जो चाहिए था वही किया उसने एग्जैक्टली। अब बात है हाँ पेपर ऐसा। अब इविल भाई जो आप ये कर रहे हो इतने इमोजी डाल के, वो भी तो गलत है ना, बट ठीक है भाई, आपकी कोई डीपी नहीं तो मैं तो आपको एआई समझ रहा हूँ। मेरे को एसेंट में ईजी का हाँ वही बस। यू कैन टॉक अबाउट, नहीं वी आर डूइंग वॉच पार्टी ना वैलोरेंट की, तो फोकस ऑन दैट ओनली। आई थिंक वी शुडंट गो ऑफ टॉपिक दैट मच फॉर एनी अदर गेम, दैट्स व्हाट आई थिंक। यार बस थोड़ा ओवर पुश करके ओवर पिक्स दे दे, कोई नहीं। न्यू मैप रिवील कर दिया ऑलरेडी सनसेट, और इसकी आई थिंक कहते हैं अर्ली एसेस करूँगा मैं आज मतलब कि कल रात 8:30। अगर हम जल्दी लैन मैं सोच रहा हूँ कल का लैन जल्दी हार जाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। बहुत हिट दूंगा सोलो को हाँ मैं भी। नहीं डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट यार। ये कुछ चैनल पॉइंट्स होते हैं ना, ये क्या सीन है? चैनल पॉइंट्स कहाँ के? ट्विच के या फिर वैसे में ये जो ये चैंपियंस आप बेट कर सकते हो, जैसे आप किसी स्ट्रीमर, हर स्ट्रीमर के अलग अलग उससे सेट करे होते हैं। तो बेट करके मतलब क्या मिलेगा इसमें, मतलब इस इन चैनल पॉइंट से क्या मिलेगा? चैनल पॉइंट से ज्यादा मिल जाता है आगे फ्यूचर में, कुछ वैसा नहीं है, ये चैनल पॉइंट सिर्फ इधर ही रहते हैं। तो इनसे मिलेगा क्या मुझे, मतलब मेंबरशिप मिल सकती है इनकी? नहीं नोप। तो फिर किस लिए, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी है अब मोस्टली स्ट्रीमर्स के लिए, जैसे स्ट्रीमर्स जैसे मेरे उसमें अगर आप कर रहे हो तो मैंने साउंड डाले हुए हैं, तो मान लो कल को साउंड्स अजीब साउंड्स आप कर सकते हो, स्ट्रीम पे आएगी। या मान लो आप कोई इमोट अनलॉक कर सकते हो, या सब इमोट अनलॉक कर सकते हो, या कोई हाईलाइट मैसेज सेंड कर सकते हो, जितने चैनल पॉइंट्स पे होता है, डिपेंड करता है। अब वैलोरेंट वालों ने नहीं किया होगा, समझो। जैसे मेरे पास हैं तो नहीं किया हुआ, वैलोरेंट वालों ने किया नहीं। मैंने सारे अपने 15,000 पॉइंट्स पेपर एक्स पे लगा दिए मैप 2 के। अच्छा, और इससे क्या होगा पता नहीं। You can redeem for challenges and something No, which if he wins, he gets the extra point and 50. That's what she said. I think Geo Gaming पे होगा, but बाकी मुझे भी आइडिया नहीं है। मतलब सीरियस नोट जी देख सकते हो। एक मैप हुआ बेस्ट ऑफ 5 है। एक हुआ है। Can I get a hoya? क्रैक की बंदी उड़ गई। म्यूट कर लो। Crack 1,000 if you 1,000 crack 1,000 if you shout very high. कितना जोर से? जितना जोर से हो सके। नहीं भाई, नॉइस कंप्लेंट नहीं चाहिए। आने दे, बोल दियो 1,000 रुपए के लिए था भाई। 1,000 रुपए कम बोला मैंने, यही तो भाई, यही तो वर्डिंग देखो, यही तो मार्केटिंग की प्ले है। मैंने कहा 1,000, ये नहीं बोला 1,000 रुपए, मैंने 1,000 बोला। अब 1,000 कुछ भी हो सकता है। वो 1,000 डोंग भेजता है मुझे। 1,000 पैसे, so that's like $100 ना, वो उतना भी नहीं दोगे। मैं 1,000 क्या है? 1,000 क्या है? 1,000 रुपए से 10 रुपया होता है। पैसा उसको 1,000 वो दे दूंगा, मुझे बोलेगा क्या कहते हैं, शाउट आउट, ऐसे ये क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता था। उससे बेटर 100 रुपए दे दो भाई। 1,000 पैसा 1,000 पैसा वो 10,000 पैसा है। खुद का गला सुखाएगा क्या शाउट आउट दे के? इतने कंजूस है सोलो, मतलब 100 रुपए भी नहीं देने। भाई बहुत छोटा था जब समझ गया था ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है, तो कंजूस नहीं होगे तो मर जाओ। तभी मैं बाहर नहीं जाता। कितना छोटा था? 5 फुट 9? नहीं अबे यार, पता है मैं वन ऑफ द मेन रीजन मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता, पापा भी कहते हैं वो, मैं बाहर जाता हूँ, मैं सोशल वर्क ज्यादा करने लग जाता हूँ, दूसरों को हेल्प करने लग जाता हूँ, उसमें मेरे लग जाते हैं। हाँ भाई, होता है भाई, होता है भाई। मैं भैया बाकी लोग देखे, मैं वो नहीं कर सकता, लाइक नजरें नहीं फिरा सकता कि भाई कुछ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो तुम चलाओ, वहाँ पे आके हेल्प कर दो, सपोर्ट दो।
ऐसे जो तू बात कर रहा है ना ओवर वॉच आवर्स वाले से सिटी में जाके मिलेगा, क्या वो सच है भाई? वो बात कर रहा था ऐसे, वो सोच रहे थे 100K वाले उस पे सिनेरियो, बट मेरे को ऐसा लगता है 100K इज लाइक यार उससे बहुत ज्यादा मेहनत है यार। Sometimes I deserve 1 million, sometimes I deserve 1K. It's like total that. बहुत नींद आ रही है सोलो मेरे को। सो जाओ। नहीं भाई, मैं सो जाऊंगा तो पेपर एक्स हार जाएगी ना। वो तो अभी भी हार रही है। ये देख लो गाइस, ये सोलो के जैसे होगा भाई जो भी होगा। भाई क्या पता आप सो जाओ और जीत जाए। What's your next step in gaming? To be a coach of Game Changers roster. Back to you guys. What a fantastic That's what she said. ये देख ट्विच वाला यूज कर रहे हैं भाई ये लोग मेरा। ट्विच वाला कौन है ये जो यूज कर रहा है भाई? ट्विच पे वो मेरे वो यूज कर रहे हैं पॉइंट्स, किसी के पास होंगे कर सकते जिनके पास चैनल पॉइंट्स है। ट्विच पे भी स्ट्रीम कर रहे हो? नहीं दिखाओ ये देख, जैसे ट्विच पे ये है ना, कहाँ गया मैं तो भूल भी गया, ये रहा। That's what she said. Look, his damage run was like over 280. He was insane. Plus 13 on the attack half. This guy was on. ये क्या था? मैंने ये कब He's a डाला? rookie this year. That was the opening map of the grand finals. Look at this. I mean, it's just from he and 𝙬𝙤𝙤, because 𝙬𝙤𝙤 was kind of the one who got that ball rolling initially in those first couple rounds, and then 𝙬𝙤𝙤 just came in and just took the spotlight. 𝙬𝙤𝙤 right there behind him steadily the entire way through. That was basically how I looked watching the games. Just look at disgust with the things that they were able to do in this one. And I mean, I really do like this pivot for the side of EG. Clearly, they want more firepower on this map, and the chamber is बहुत इंसेन मारे भाई टीम वन ने। having that jet raise as a 1-2 punch here on split, that gets it done. In the upper final, I came into it with the mentality that, like, okay, EG needs to outgame PRX. They need to come up with some crazy idea how to counter them. They're not going to be able to win in the department of firepower. But in this matchup, they really proved me wrong. These guys have such तभी तो लोग कहते हैं स्ट्रीम करो। abilities. They're out there and they're dipping. Thank you for 311 likes. Gosh, man. With the highest concentration of just. Dude, I'm just waiting. So, do you think you are the best in India? One of the best, I would say. Not best. Best के लिए तो कर रहा हूँ। तभी तो सेंस ही चेंज करता हूँ, नहीं तो मैं हाई सेंस में खेलता रहूँगा चुपचाप। मैंने टाइटल रेडियन 5 रेडियन वाला तो कर दिया, मुझे बस ये करना है। एक बार बेस्ट मिल जाएगा तो देन होगा। How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Carry me. पॉइंट्स इंक्रीज कर दो, स्पैम नहीं होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा लोग करते नहीं। पहले तो 1-1 करा हुआ था, अब तो फिर भी बढ़ा दिया। भाई ये क्या क्रॉस हेयर है? Can I get a 𝙤𝙤𝙤𝙤? At this point, he doesn't need to warm up. He just needs to vibe on the stage. So he doesn't even care about the warm up. Just picking the silliest crosshair he can. But like you were saying, Sean, this guy, rookie year, he's out there putting up numbers. I don't feel like ever since he came into Champions here, I've seen a game where it looked like the pressure was getting to him. He's just so comfortable. He said the other night that while he was grinding out in tier 2, tier 3, सबसे सस्ता I think गन he had the mechanics good enough to make it to this point. He just needed an opportunity. I'm more impressed beyond the नई स्किन खरीदने से बेटर बैटल पास खरीद लो भाई। बैटल पास इज लाइक सारे बैटल पास अच्छे नहीं होते, मतलब जो अच्छा लगे जिसका नहीं वो वाला। जैसे वो कराम्बेट आया था बीच में, वो अच्छा था। रुइंडा अगर अच्छा था, एक्स अच्छा था, वॉर्ड वाला जो आया था वो सॉन्ग स्टील वो अच्छा था। बीच में एक्स वाला एक और अलग आया था वो भी अच्छा था। तो वैसे बैटल पासेस ले सकते हो भाई। मैंने कहा था ना कि EG 2 जीतेगी और फिर PRX सारा कमबैक करेगी। सोलो भाई मैं चाहता हूँ PRX जल्द से जल्द जीत जाए।
फिर प्रेशर नहीं रहेगा हमारे ऊपर। हमें सबसे हार्ड वाली स्टार है 0 एक दिन मुझे You guys ready? Are you guys ready for the match? For the second map, which is happening in Essen, and we have seen before also what EG did. आपके लैंड में खेलोगे कोच? भाई कोच किसने कहा? मैं तो कोच नहीं करता भाई, मैं खेलूंगा। I feel like I can be a aim coach, but not that one. Increase volume. Match start तो होने दे। Is this going to be bad news for PRX? I do think she's kind of underestimating PRX a little bit on Ascent. भाई I know EG वाले कह रहे हैं कि Demon 1 डिलीट मारेगा और PRX वाले कह रहे हैं डिलीट मार। भाई तुम सपोर्ट तो दोनों एक जैसी हो। By the A side, by the B side, they do such a creative take on both of those areas of the map. Now I'm sure Potter has cooked up some good. Ui, something जा रहा है रेना के लिए। PRX changing the comp device on By the way, now. Ui, Suvani? वो तो पहले भी नहीं खेल रहे थे, स्काई खेल Just a रहे थे। little bit less info coming the way of Solo, PRX, but वो याद है मैंने तुम्हें लीक किया था वो प्रूव हो गया भाई। रॉसी का? You're not going to be getting those refreshable flashes हाँ, coming पर through. जगह आ It गया still वो। can work in the same way that they have been piloting it. It's just a little bit different, a little bit more delayed. You can't really, obviously fly those guiding lights through and get them exactly where you want to. But Divide can still G में फिर lightning fast रहेगा। off the back of the Lear, get that double flash out and then go for the side एक और extend. ढूंढ रहे I think the मेरे को एक और camera is लीक really मिला useful for cross-map info तो on Ascent. इधर वो ट्राई आउट करेंगे। Versus the Sky as well. You can still get those Reyna Lear flash G combos try out out of the code करेंगे। you're talking about, but it might be a little bit franchise team के harder. लिए try We'll out have to see if यार PRX's छोड़ यार, new मेरे को comp ट्राई आउट is में तो what अपने it zero takes chance to be the first team this tournament to beat Open Evil tryouts Geniuses से on चलो Ascent. why you did you not attend not भाई ये मैंने स्ट्रीम के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि स्काई स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्लीज मत बात करो। Take us into game. Over to you, Pansy and Hypok. This is third time I'm not getting invited and people are asking and I'm really sorry, but I don't want to talk about it. A little bit of a different look as well from what we maybe expected. Absolutely, a slight adjustment. Obviously every creator loves to be around जहाँ पे और creators हैं और जहाँ पे तुम्हारा level उनका level भी same है थोड़ा बहुत One of the इस things that तरह। worked best was the Trailblazer. To set नहीं। something in motion, again, the layering of the flashes, sure, but the one thing that really put something in a position to excel on the Reyna was the Trailblazer from Device. Next video चीज़ है भाई वो Instagram follow कर लो। Whenever I go I let तब बता देता Something in Jing are just going to try and go ham together, I guess, is the next Then step you're gonna on play with that Rayford. checklist. We'll have to wait and see. No idea about that. Wow. It starts with this pistol round. Demon 1, he's stuck around. He's got back in. Oh, nice. A little too far. As Forsaken's going to punish and put him back to the next round. 4v4, but look at the rest of the map. Boostio's taken space away. PRX actually might Please check the right. Boostio's got a fantastic position again, Forsaken. Perfect trade though. Dart will go out. Actually, we'll catch him. Yeah, King as well. Oh, nice movement. Nice movement. This has been god tier work from Forsaken. I have to be crystal clear about that. Those trades he got kept them in this. And hold on. Yeah, a little bit of vengeance. Served. Double check on the Why मुझे feel आ रही है? All on 𝙤𝙤𝙤 in a 1v3. Knife's gonna note him. See something waiting. Oh, the crop. Oh, dude, जो अभी मार देता ना। It was okay in the end. Something taking the reins of the round, but credit in my mind goes to Forsaken there. Absolutely, something. With the cleanup, I mean, there's a chance here for Common Boostio to make a real good go of holding things down in tiles. But नहीं, Demon ने भी अच्छा मारा भाई। वो पहला shot मार के मैं डर गया भाई। मैं पहले डर गया। मैंने कहा ये ले भाई ये तो गए भाई। Forced into a very, very tricky spot where he could invest the recon bolt. That's the Reyna for my ranked games right there. Lurking in tiles, planting on A, shooting bodies in mid.
डिले नहीं 8 सेकंड है। Huge confidence round for him. भाई उनको पता है वो ये करने वाले, देख कैसे खड़े हैं। उनकी स्टैट अभी ये बहुत ये मोस्ट यूज्ड स्टैट है की वाली। But look at the stack. There's 5 bodies here. Everyone from EG is present on this site. Don't work Stack towards the back of Bow House. PRX trying to fly on in. Oh, nice. Dealt with, but Jinx want to do. Oh! This is lovely work here. 𝙬𝙤𝙤𝙤. Oh my God, he's still trying to fire off. Oh भाई भाई ये 𝙬𝙤𝙤 बहुत डरा रहा है भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है यार। थैंक यू। क्या थैंक यू। मतलब मैं भी ऐसे ही खेलूंगा। कब? कभी ना कभी। कब का मतलब हमने पूछा कब? भाई एक बात बताओ, लोगों को मेरे से उम्मीद, तुम लोगों को भी मेरे को पता है, तुम लोगों की उम्मीद तो है। तुम चाहे ऐसे कुछ भी कर लो, उम्मीद होना अलग बात है और पूछना बिना पूछे बताए बात अलग बात है। मैंने पूछा कब? भाई मैं तो बस तुम्हारा जो दिल मेरे से बात कर रहा था वो ही बोल। तुम्हें नहीं पता ना तुम्हारा दिल क्या चाहता है, सारे ठरकी हो तुम लोग। अबे लड़के की बात तो कहता है क्या भाई? मैंने लड़के से बात ही नहीं की, मैं तो दिल की बात। गेम ठरकी भी होता है। देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ाएं, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा नहीं होगा उसमें, लेकिन भाई तुम पता है तुम ऑफ टॉपिक बात करते हो, PRX हार जाती है। देख लो भाई सोलोमनन भाई ये देख पूरा ले गया पीछे से। भाई देख लो भाई कितना यूटिल यूज हो रहा है साइड पे जाने के लिए, अमेजिंग है। और देखना साउंड नहीं आया, आ गया। नाइस, अरे हो गया राउंड आ गया भाई। बट जिंग लो है और उसे ओडिन से स्पैम करने का। नो नॉट एवरी सिंगल टाइम यार, वो बस एक बार हो गया है। नहीं यार नहीं, ये नहीं। पता है इतना बोलो शुरू हो जाता है। हाँ इतना बोलो जिंग से रहता है कि हाँ अब तो होने ही है। Jing down to 5 HP, Divine on 39, could find something with a shock dart potentially. How to fight, not taking it in there. Jing, lovely. Nice. From PRX. Again, it's one thing to know where PRX are, it's another to handle them all together. So what's bizarre though is 𝙬𝙤𝙤 sends the paranoia from tiles into B main. अरे मैं भी तो लगाऊं चैनल को quickly enough, but nobody reacted to the flank. अब लगा सकता हूं मैं? Until 𝙬𝙤𝙤 comes through and finds two. Just so happens PRX won everything they needed to towards the site. Sorry. EG के ज्यादा चांसेस है, पर यार दोनों 50-50 चल रहा है। Making up the wrongs, right? Watching कम हो गई की है। Forsaken one away from the reckoning. Jing one off the showstopper. Already have in hand. There we go. Jing. Nice. आ गया वापस वही प्लेस। And look, it's down to the sheriffs. This round was never meant to be too deadly. ये तो पूरा घुस गया। Jing willing to be aggressive. वो भी अकेला। हाँ। Noting boost here on the back. वो देख के पीछे उसको पता था। ओ भाई यार ये फिर मार रहा है। यार ये 𝙬𝙤𝙤 यार क्या मारता है भाई ये। एम तो क्या है भाई इसका, एम मतलब पता नहीं मैं क्यों, मेरे को आदत हो गई जब भी कोई बोलता है ना क्या एम है, ये सब तुम बातें करते हो प्लेयर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर यू नो लाइक समवेयर इट्स मी टू। ओ भाई तू बॉडी शॉट मशीन है, कान पे लगाऊंगा तेरे। ओ भाई एक मारता है हेडशॉट, एक मारता बॉडी शॉट। No, I mean if you are feeling that way ना, that means you are very good confident player. ओ भाई ओए ये तो RNG कर रहा है भाई, बस का RNG में भी हेडशॉट लग रहा है भाई। वो समथिंग है भाई, बस तो बात है उसमें। थैंक यू भाई। तो मैं इसको ना मैं कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, सॉरी ये गलती है। पहला बात है प्लीज, मेरा वो प्लान क्या कल आ जाओ प्लान पे। क्या मैं आऊंगा ना तो मैंने खेल नहीं पाएगा। सोलो से पर्सनली मीट एंड ग्रीट करो, पहले लगाओ। भाई एक ही जी मैं अभी बता रहा हूँ, हम पूरा लैंड जीत जाएंगे, मेरे पीछे 4 लड़के बिठा दो। क्या ले आऊं? लाता हूं मैं गेमर गर्ल्स। भेजू क्या यहां से? हां गेमर गर्ल्स। वो देख क्या बोल रहा है, इंडोनेशिया से बैठ के बोल रहा है कि वहां से। I was worried after map 1 they take that to heart, but these guys are warriors at this. They've come back with a Come on, blistering PRX. response. Let's do it.
कोई नहीं इविल अच्छा तो खेल रही है ईजी बस राउंड जी तो नहीं आ रहे नहीं अच्छी बात है भाई आ जाए बट भाई ईजी वाले जो सपोर्टर है उनके तुमने क्या मतलब डीपीवीपी लगाने का कुछ वो रखा है कि नहीं लगाना पेगासस एंड इविल सोलो तो ग्रेट है भाई थैंक यू नहीं आई हैव टू प्रूव नॉट फॉर द पीपल बट फॉर माय generally in terms of the read of what's going on. नहीं वो लाइन से थोड़ी देर में ऐसे एएफके हो जाओ ना प्लीज मेरे कान में चिल्ला देना तेरे कान में कैसे चलाएंगे हम लोग बस माइक पे चिल्ला देना मैं उठ जाऊंगा क्या बोलना क्या है कुछ भी बस चिल्ला देना ताकि मैं उठ जाऊं मतलब अलार्म की तरह बजे देखो अगर पेपर एक्स जीत रहे तो हम नहीं उठाएंगे भाई अगर पेपर एक्स जीत रही है तो हम नहीं उठाएंगे हम तुम्हें कान के अंदर जाके नहीं दास को देख इस बातों के लिए तो माइक खोल लेता है माइक ओपन नहीं है मेरा तेरा गेम को समझ भी आ रहा है तेरे को गेम का कह रहा है कहाँ पे रिएक्ट करूँ तो कहाँ रिएक्ट करूँ भाई फुल रोटेशन नहीं एक अफेक्ट किया ये होता है रीड fish out the turret try to at least on the first beat cleans it up on the second reckoning invested here covering the entire पेपर ये समथिंग कौन सा माउस यूज कर रहा है like I said perfect read they're actually playing towards a retake setup here भाई लड़कर मार दिया उसने वो गुस्सा है बेटी मैं पता नहीं क्यों Site now being contested. ऑब्वियस है भाई जो प्लेयर्स तुमसे अच्छा खेलते हैं तुम्हें गुस्सा आ जाता है कुछ भी नहीं आता मुझे मैं गुस्सा नहीं करता ठीक है भाई मैं तेरे लेवल से लेवल से ऊपर आ गया ये राउंड ओ नहीं ओ यार आई जस्ट थॉट जो भाई मार said the read was generally pretty good of how PRX were going to approach the site here. Reckoning invested almost no value outside of everybody from EG set up to retake very quickly and not giving shot at in map one, not giving PRX the time and space to get aggressive. Once PRX see a little bit of space to play into, if they've got 2 or 3 bodies, they're gonna do it. I wonder if the adjustment, if there is any adjustment from PRX yet. I don't think they have to. It was one round. 4-1. Still got way to go 4-1 to bring into this one. भाई मैच इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है. EG have 4 players here now, sitting a little bit deeper, maybe cognizant of Device ult, but Com clearing towards middle, noting nothing towards tiles. As we can see, the PRX, all 5 players here. Can they deal with the flood that's going to be coming their way? Knife goes in, clears out towards Dice. See the cove going up. Oh, nice nade. A little offset on the timing, but it's fine. No one's there to challenge this. भाई वो नीड से ना काफी हेल्प मिल जाता है अंदर साइड घुसने के लिए. Being done here. वो यार. Down the covering fire takes out Forsaken, and the lockdown is in effect. इनको पता है ग्लर कर रहा है. ये देख. And this is a good read from Com. Mindfreak can't really push much deeper than this, but can swing onto it now. Com posted up with the Odin. He's found him. Removed the lurk, removed any sort of safety net from PRX here. 20 HP, something spike in hand, but he's solo on catwalk. Something एक kill ले ले, heal ले ले, मार दे. ये लोग इतना खेलते हैं इनको सराइकल नहीं होता. नहीं भाई तुझे अबे भाई एक किल लेकर खोल ले. सराइकल ऐसा नहीं होता कि तू इस पे वैसा इशू है. मेरे को गेमिंग से सराइकल नहीं हुआ, मुझे उससे हुआ. ओह नाइस शॉट भाई. नाइस शूटिंग से हुआ. ओए ओए ओ भाई भाई इसको ना मैं बताओ मैं तू शांत हो जा भाई. साहिल तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? मतलब क्या मारा है भाई? भाई अच्छा मार रहा है यार भाई. तो क्या अच्छा बहुत अच्छा मार रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा. एक्सक्यूज पे तो सीख ले कुछ. ये अच्छा था भाई. क्या कह रहा है? सीख ले फिर इससे. I fear no man but men that men. साहिल का जेट सबसे हाँ मोस्टली बैड पोस्चर की वजह से आपको बैक इशू, अपर इशू या फिर सर्वाइकल इशू ये होता है.
बट अगेन डिपेंड करता है आप जैसे मैं लॉन्गर्स करता हूँ तो मैं अपना पोस्चर हमेशा रखता हूँ कि भाई हाँ ठीक है और एक गलती करता हूँ कि अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करता बट करनी चाहिए You've got Potter on one side, obviously, who has a ridiculous conversion rate when you look at timeouts and next round success, incredibly high. Now, I asked the same thing of Alex here. Does PRX have that ability now to shift gear that EG have found that step, right, as you were alluding to? I don't know what the adjustment will be for PRX going into it. Do they start toying with expectations? They have been deathballing. Do they start trying to punish rotations, catch one of these players off guard? You're going to need something. There's already the money starting to get worked down at here. They still have the ult from 𝙬𝙤𝙤𝙧. I think, 2 away from the Viper's Pit as well, but the others pretty far off. The concern being EG are in a position to almost get an operator in hand for the next round. Behind a purchase also. Hunter's Fury, we know Com's always good for one with the ultimate. And it looks like a similar look, right? They're trying to sell the same sort of picture, but the pace change is on short, and it's Jing to open up the account and pretty much take the entirety of the site. No one is on A. They've got complete free reign here to get that plant down and get the site on their side. I don't know if you've heard it, yeah. But whether or not Com got caught by the no command here, because he was backing up no towards time Mountain to try and use the Hunter's Fury. Jing 45 HP, 𝙬𝙤𝙤𝙤. पोस्ट प्लान तो अच्छा है इनका मैं म्यूट पे था हाँ लम्मा not enough for the first time. Oh dear, Com from across the map takes out Jing and unlocks the next. Oh, he got you, dude. He's doing it. Stops the rot, denies 𝙬𝙤𝙤𝙤. Nice आ गया and it's all on Com in a 1v3. भाई आ गया 4 सेकंड आ गया holding on to the A site. तुम मत बोल भाई तो बोलते ना लास्ट में नेक्स्ट राउंड हार जाते हैं मतलब नहीं हार रहे Hunter's Fury here from Com, just ridiculous how good he is on the Sova. वो ये कैसा था slow motion There's even a flash coming through. I didn't even note the flash from Ethan. That's the thing, you have to watch 3 or 4 different camera angles to really appreciate the little things that evil geniuses do. Regardless, PRX around on the board, beautiful cleanup from them. भाई कोचेस का काम खुद अच्छा नहीं खेलना होता दूसरों को अच्छा खिलाना होता है looking a little pissed off after map 1, coming back in fully ready to go and feeling very little intention behind that early utility. EG might adjust off the back of this. 2 players trying to hold goal. Oh my god, the grand reveal! Mind Freak has been removed and this has stalled out PRX. I mean, there's 5 people in B main here and nobody's actually holding for a dart. Com rewarded. Dude, he has shotgun, bro. In here with the judge as well, up close and personal. Be careful. Trying to play the line here. There is no back line to this. There's no exit plan. There's no great escape for PRX. उनको पता है हाँ उनको पता है B ही है. It's closing in. There's no way. बूस्टियो भाई 3 ले गया शॉटगन से has divided. Oh, blinded flash dead. EG starting to figure out that PRX pace. Beautifully done. Com just understands the timing so well on the Sova. The back of the turret, taking contact, being dealt with. Waits a second or 2. Valorant Championships. Like I said, able to react quick enough to the dart. Yeah. This is the thing. Versus EG, you have to expect Com to be in that position. Yeah. Time and time again. Wait, Ethan, has he been seen? Getting nervous here. I think PRX have found something. They heard me, because now Forsaken's trying to find Com. Have switched up though. It's on Boostio now, Odin and Judge, the dynamic duo elsewhere on the map. PRX looking to maybe set up towards a B split here though. I like that. Again, we knew that death ball would eventually hit a point it can't carry on at, but Ethan is still ahead of this. 𝙬𝙤𝙤𝙤 taking all the attention. Was enamoring PRX to focus towards him. Plays in Ethan. Do they still check as well? First fight, it's his. Boostio succeeds. On the double down. Takes away 𝙬𝙤𝙤𝙤, leaving something in Forsaken with a little bit of space and not a lot to do with it.
and already feels red. Look at the attention towards CT, the crossfire perfectly held. We need one important clutch. You know. It's paranoid, spinning back and forth, and 𝙬𝙤𝙣 will find the headshot, just leaving Forsaken as a headshot from 𝙬𝙤𝙤 to find the Prime Gaming flawless. And so well thought out. You never expect anyone to be ahead of 𝙬𝙤𝙤 when he's playing like this, when he's hyper aggressive, and Ethan, the one to tuck in close here. Got a little nervous on the first couple of shots. Yeah, a little bit. But this has broken the bar of PRX. And that was the first time I think we started to see them kind of explore that slightly less single-minded approach. EG अभी एक And मैच it's not a जीत bad चुके approach when स्प्लिट it पे is और PRX. दूसरा I भी can't ऐसे doubt पे that चल much, but look रहा at the string है around और us उसके now. बाद Nearly 5 in a row बाइंडर here after that फिर timeout लोटेड from फिर Potter. फॉल Whatever it was the cure. It's completely changed the mentality and the read into this game, and it puts the pressure back on PRX. 5 is respectable. But you want to be seeing a little bit more out of them here. See if they can post up a couple more rounds, give them some safety on that side switch. फाइन दे दी गई ये शॉट पर उनको पता है ये शॉट वाला सेटअप कर रखा है भाई उन्होंने ओए भाई उनको रीड थी How is Jing alive? How's he still standing? He's still fighting! Jing! Nice thing. I can't believe it! Walks across the map. How he got though? 𝙬𝙤𝙤 dives in head first. And 𝙬𝙤𝙤 in a similar Oh, he's spot. dead. This time he's going to be he was flashed. Nice. Battle Nice. waiting on. The Nice. PRX has finally landed true. Gone now in a 1v3. Jesus, that's too close. I mean, 𝙬𝙤𝙤 tagged up down to 48. Gonna get an opportunity here to play a rifle out. हाँ पीछे जा बेटे सेव कर. The safety net. सेव नहीं कर रहा वो. आ रहा है. अरे अब भागना एमिन तक भागना. इधर क्यों आ रहा है? 70 HP. अबे साले. प्लेयर्स होते अपने अपने. Oh. I think he knows he's really running low on chances here. Let's wait for an exit maybe. Yeah. Hello and goodbye. Gonna take away Mind Freak. Spots out one on the site, but again time. Oh, 𝙬𝙤𝙤 having none of it. None of that here today, and Mike. अबे ये जज के साथ भी होती है बॉल में. Wherewithal of this team. हाँ but ज़्यादा नहीं वो लो था ना. I mean, it takes him a couple of seconds to actually pop the second nano swarm in tree here. I think that's the issue. Jing has a little bit of room to work with, and he's able to get. I mean, that is just filthy. Yeah, I was going to say a disgusting spray with the stinger, but अरे 𝙬𝙤𝙤 को मैंने चाह दिया भाई. In one of the most PRX rounds I think we've seen so far today. They could have done with one. It was starting to get a little nervy, right, when you looked at the run-arounds coming in, but back in we go. Even one played in a little off the spam of comp, and wait, 𝙬𝙤𝙤 just got the first? Ooh. Taking away Jing almost instantaneously is a problem. Clean from 𝙬𝙤𝙤. भाई वैंडल भी गार्डियन की तरह चलाता है. Tap. Something versus 𝙬𝙤𝙤 देखना यार. A second shot here. Some time and space in middle. Spike not committed just yet. Something's been noted as well. Yeah, he has. Now PRX looking to regroup. Well, something actually started. Still curious towards B main. You just keep in mind how deep EG is sitting on all of this map as well. They're entertaining no early frags here. No one's playing up by tree. No one's playing close towards the B side. No one's even on the A side. They're sitting CT. They're sitting super deep here. Going to make PRX work for their dinner. They've got plenty of ults though. Ethan spotted. Lord. Closing in a little. They're looking for chances here, PRX. And there's just being nothing offered. 30 seconds left. Divide the jumping point now. Utility still there. That's not ideal. Actually, a bit of an issue. Neron catching up to him, but just like we go again. पीछे पड़ गया. Showing discipline. Well, until then, the flash. Oh, that movement saved him. But not every time. And EG play a patient round. कोई नहीं अटैक में उनको भी दिक्कत होगी. डिफेंड में अभी आएंगे ना. Ethan jump spotting here. The alarm bot takes contact. They set up for this flash over from spawn to put 𝙬𝙤𝙤 in a position to punish 𝙬𝙤𝙤. Beautiful opener. Fantastic stuff. Unfortunately,
Mid-round not really suited PRX there, conceding 2 kills, don't really get an opportunity to pin down any sort of engagement across the map. 𝙬𝙤 mitigating risk really effectively there. And look at the pressure. Knife catching Lucio, going to make this very difficult to hold. They have to respect what's coming their way. And Jing disrespecting all the utility, all the presence. Something on the follow-up and the site may be theirs. One stands in their way. Oh That's short. अबे why ऐसा लगा जैसे legit hack होता ना कि उससे एकदम maybe he got the sound, maybe he got the fucking sound, dude. उसको sound आई होगी. Facing down near on an army. A toy with them, see if they can spot them. I want to see what people are saying, dude. He's a bit forced away. 𝙬𝙤𝙧𝙚 dives in. Oh my god, the trade. Look at the HP. Mindfreak is on 29. This is scary. Yeah, that flick, dude. is not being given many more chances. He's got the slip. And no shot. He's got the swap out. The pin's gonna drop. Oh, Defy. Gorgeous timing from him. That got down to I just want to know how. Like, I want to know how that shot happened. Ridiculous exchange. 7-5 on the half though, Lauren. This is a great game. Okay, he got that. Doing everything they need, just about securing the last couple of rounds, digging so deep. भाई उसको मौका भी नहीं मिला भाई. PRX in recovery after they अबे भाई ये तो खुशी नहीं होता मैं तो जीतने पे भी कुछ नहीं हो रहा. But to hear from someone who knows what it's like on a major stage, let's hand it down to Tarek and Doug. Yeah, thank you so much for hanging out in the co-streamer area right now. And of course, we've got a fan favorite in Tarek. Tarek, talk to me about the vibes in the arena right now. This place is packed. Yeah, oh man, it is electric in here. Can I hear you guys one time? Just make some noise. Mission accomplished. Yeah, I think they got it. Let's talk about the series a little bit. 𝙬𝙤, PRX, who you got? You know, it's a tricky question. I think there's really no right answer here. I'm happy for either team that wins, but... Bro. Go 𝙬𝙤. Fuck it, go 𝙬𝙤. We can edit that out, right? We can get that in post-prod. Do you have any predictions on how far the series is going to go? Is it going the distance or what? Oh, we want map 5. We pray for map 5, definitely. All right, last couple of thoughts I'd love to get from you. Talk to me about the new map, in particular, Sunset. What do you think? I'm excited. When do I get to play? Right after this, actually. I got you. Let's get it. And then the cinematic. I know there were people who had really strong feelings. What was happening to Lil Bro? What was happening to Wingman? Was he going to make it on the other side? Tell me, you cried. You cried. I know you cried. You can admit it. Boaster cried for me, so shout out Boaster. That's my GOAT. All right, any final things you want to say to the crowd, to the venue before I let you go? Go Valorant. He nailed it. Go Valorant. Thank you so much. Tarek, back to you guys. Wow, they are dude, his fans' favorite, man. I mean, you know, yeah, absolutely. Nobody hates this guy. It's just like that. Homie type fight. Nobody fucking hates. I feel like the bulk of rounds in this. भाई ऐसा तो मैं भी हूँ. Right, gave themselves a nice buffer. There was that turn. There was that time out of the game. Still hold the lead here. They do. Things still looking very scrappy. 𝙬𝙤 showing that they're happy to go toe-to-toe once again. Continuing that trend. Very early exploration here. Really caught on the counter swing here. That'd be very nice. Decent damage. Com and boost you down to 45. भाई सबसे बड़ा hater 𝙤𝙤𝙧𝙚 है ना? Will be happy with that, but I mean, damage back on the other side too. Almost walking away in very similar spots, but a totally different change of pace here for 𝙬𝙤. Much slower, a little bit more meticulous, a bit more careful. You know what you're facing here, one of the most explosive teams in the world, even on the defending side. Mindfreak shouldering this. It will be Demon one to spot. And utility instantly coming through. Now note the spike. This is not their end goal. They're drawing eyes over. Mindfreak ने अपनी गलती से सीख लिया. Jump pick नहीं करना उसको. I was shot यार. Shot भाई. वो feel आई है अंदर से जैसे वो shot मारा. Yeah, no over rotation, is there?
They're thinking about it, but again, with this timing, this pacing, 30 seconds is going to be down to the wire. This is going to be a very close call on things here, and there's still 2 players to clear out. Jing something. Yes, lower HP, but still with the boombot. And it's about timing on this. When does he invest? Does he invest? He could do now. Oh, it's stunning from Jing. Nice. Denies the first man in. That's Busio. 10 seconds now. They got 2 targets to find. This is so much to do for him. Come again, creating all the space. Flash, already Mindfreak slipping forward. Wait, was it a team flash? Closer by. Divide by CT, but a 2v4 is so tricky. Mindfreak there draws the attention. Divide on the swing and denied by Ethan. As EG pick up the pistol in the second half. 5v4 on the board. 1 away from catching PRX here. Start of the second half. Beautiful opener from Busio. Yeah, they did. Terrified. Again, the plan is executed perfectly though. The flash over the top to set Com in motion. Really well done by EG. It makes you wonder, if something a bit more HP, if Jing was sitting a little bit prettier on the HP, maybe they could have held off a little longer, but that's neither here nor there as we go forward at 6-7. EG closing the scoreline just a little bit now. Sheriff coming out from Divide. Beyond that, it's classics. Well, we saw what 𝙬𝙤𝙧𝙚 was able to do on map 1, so maybe don't write it off just yet, but still. Stack for PRX's. Well, they're coming up as the antidote to this round, but it's not going to be easy to make count. EG have been quite careful on their approach, trying to find that information first, but then see if they can navigate away from this cluster of mayhem on this site. EG expecting aggression, maybe not expecting a 4-man stack in A main. They're going to flash out here with Divide. He doesn't actually have a flash. They're trying to scramble, and there's no one Nice. around. Tries to backpedal. Sensational from PRX. Let's go. And now Busio and Ethan are reeling off the back of it. Yeah, they get the rest of what they get. A reward for all of that work. But a plant will be had. Now they got 3 guns in their hands. Or Guardian bhi hai. 4 second was Guardian hai. Oh my god. Oh no way. Oh dude. Ethan knows what's coming his way. 3 on the other side. First found. Second follow up. Ethan holding them back. Oh, bhai kya hai ye? What looked like a lost round. What? That's an arte round right there. This is sensational 4K. To bail out EG. Economy damage अच्छा किया. That looked like PRX's mic all day long. Hello, that hello. Start was out of this world. I mean, this third kill is beautiful. Then the bait with the flash here. Bounces deep. Forsaken has to commit to turning it. Yeah, take a bow. PRX need to stabilize here now. Rifles coming up. No flash or no control. Keep their heads held high in this one. EG willing to get down and dirty, scrappy into this. A little bit more of a pace change here, getting a little bit more progress done early on. Looking like Ethan wants to work towards that ult, and well, with the round that he just had, why not? He's very close by. Team 1's got some space to work with here. Look at the respect. पानी गर्म कर रहा हूँ guys. पानी गर्म करने का. Door is closed. There's no real. यार वो क्या था यार ईथन में भाई सारे कभी साला कॉम कर जाता है कभी डीमन कभी ईथन. बोस्टो ने स्प्लिट पे किया. जॉग ने भी स्प्लिट पे किया. Talking about TP'd in. He's in. And Demon once caught someone in. What? Oh ये देख भाई हो गया कौन? How's he doing this much damage? Jing and something trying to hold the line. They're doing so well. Something is serious about this one. Trying to dig his heels in here, but Demon One's still standing and still breathing. There are problems. Divide by something side. 𝙬𝙤𝙧𝙚 on the other. They're getting aggressive. They're going fast. मारेगा. Nice. Away from them. EG left in tatters as PRX. Looking odd. Your new camera, yeah, but you will get used to it. Like whoever getting, like you are already used to my other cam angles. That's why kind of like I said, given some space, something respecting. You guys like model?
the setup here initially. By the if you guys think this is odd, then tell me this. Wait. Something. Only OGs knows what I'm gonna do. Maybe stressed. We come away with that though. 2 bulldogs, so that was just. How about this, man? EG's bonus. Inka buy round. Jing's getting a little interested. He's got something walking middle as well. I think this is more better. Really taking that Let's walk. go. Slowly but surely. Wait, एक बार stream देखिए जैसे या साइड अगर है हाँ देख लिया ना तो zoom in का इतना और वैसे पता है handsome तो लगता हूँ मैं beard के साथ बिना beard के अच्छा लगता है नहीं यार body बना ली तो बढ़िया लगी oh yeah lovely bro this is gonna be win game मैं यूसी चाहता हूँ Indian esports मतलब कि मैं Indian esports में कुछ करके दिखाऊँ Jing's not relenting. He's not falling back, and maybe he should. Ethan's got an opportunity to even the scoreboard. भाई जब मैं esports में आऊँगा ना तो यही नारे बजेंगे रे सोलो करते चटाई या ऐसे रे सुल्तान करते चटाई But this map is not looking comfy. 30 seconds, they have no. कोई अगर मैं अपना नाम सुल्तान रख लूँ तो? Going for the ult. They pushed forward. Game के अंदर. Aggression from. He just spotted him. What? Oh my good god, he's right ahead of it, and Ethan's still doing damage. Spike is running towards him. 15 seconds. When do they realize? When do they turn already? You can see one of them on the case. Mind Freak trying to come on over with 12 seconds. Oh, this plant could be in. This can be Let's see if that cross is made. 𝙬𝙤𝙤𝙧𝙚's made it over. That should be a plant. But up towards heaven. There's 2 coming on forward. Not denied on the plant, but the follow-up's everything. Something now starting to get closer. Comms found something. Mind Freak couldn't quite भाई उसकी भी पूंजी देख दो भाई वो smoke काफी अच्छा है gets a bit closer. 𝙬𝙤𝙤𝙧 got him, and now it's 𝙬𝙤 in a 1v3. 2 alone, and it's very possible for this man. But look at these angles, brutal to clear. 2 flashes to भाई उस साइड flash करके मार दे इसको what can he do in this? इसी को मारना है उसको Another step, looks for the fight. He's got timing it, and now the 1v1, but time is against him, and there's a demon on the other side. नहीं यार ये demon मीमन भाई ये demon बहुत अच्छा खेल रहा है यार 𝙬𝙤 catching a crucial kill. I think for the watch party this is knocking very him better in the null command here. And that's the time, but it comes so late that, I mean, you even noted it. When was somebody going to start rotating? But PRX something is showing people that skin not necessarily for OG game. The entire time they still don't beat EG to A site. That's true. Beautiful all around Ethan as well. यार I don't remember who it was actually caught in B main. मैं देख के आता हूँ पानी मेरे आगे वो गर्म हो गया. The flash goes through. Null command is popped, and again with all PRX's utility up, there's kind of I mean it's their own demise in that regard. The null command goes up. There's no open sight lines towards main, which is why they try and get aggressive. As soon as they concede that kill on Forsaken, 𝙬𝙤's hand is forced. He has to commit to the flank, and it's already too late at that point. 8 apiece here. Wow. I knew this was going to be a good best of 5, Mike, but we're seeing this really kept close. I'm a bit worried about this half, though. I think seeing the kind of start we're seeing here from EG looking quite well prepared, the money scenario for PRX, what do they do with this? And the timeout hitting as it is, it's quite indicative they're trying to find adjustments, right? They're trying to find a way forward that's going to work for them here. This composition should be hard to make work, but they're aggressive. They know how this plays out, right? It's not the first time we're seeing it, but I'm a little worried. I'm seeing a hero rifle on 𝙬𝙤. That's about it. You have the showstopper to play with, but Jing not throwing a shield in the mix here. I don't know if that maybe he's going to try and use that reactor, but he's got to get out of this corner. Spammed up at 51 HP. Escapes death. पता है ये I think EG versus PRX पहला ऐसा गेम है जिसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन टॉप फ्रैग है कौन बॉटम पे क्या you know क्योंकि all 10 players are playing dude every game is going close भाई कभी कोई क्लैश कभी किसी का एम चलता है aggressive plays the flashes off the back and speaking of aggressive plays there's the flash he knows he's drawn attention इधर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है what do EG do now with the information they've received? Very cautious approach here. Saw an earlier example of anticipating aggression.
PaperX already looking like they're going to lean towards a stack on A. इसकी जैसे डिसीजन मेकिंग से भाई वो या तो टीम के साथ खेलते खेलते आता है या कोई अकेला कॉम्प खेलते खेलते ऑब्जर्व कर वही तो ए स्टैक का वो भी जाए Forcing their hand at PaperX in that regard. Absolutely. So this should be the green light. Shouldn't be any resistance towards B site here, so it's all on how much can they achieve on the way out. And I really like the readjustment from Com. I love seeing this. I think we just saw a teaser for a future execution there with the cloud burst up onto the top, the flash out from Ethan. Com भाई Com पकड़ेगा. Employed once again, Com. The timing. Get out of here. अबे यार ये audience यार. That's a rifle, but they don't have audience to maybe run and grab that. Maybe Forsaken can try and give it a go, but they can get a bit dangerous. Hold on, that flash is a bit of an issue, but it plays in 𝙬𝙤𝙤𝙤, but still very diligent on the clear. 𝙬𝙤𝙤𝙤. By lineup. Cleaning him up here. Forsaken, the last one alive. You can hear the timer ticking away. Demon 1 willing, ready and able to remove the final threat. This round is a gamble stack. It didn't work out. Good camp for camera. Really? G will take the lead. PaperX now in a position that feels a little uncomfortable. मुझे लगता है ऐसी गेमिंग में बढ़िया लगेगा अगर मैं गेमिंग में Look at what's coming out in this purchase, to be honest with you. One enemy remains. Divide down on a Bulldog. We will see the operator coming out for something. भाई क्या ये? A chance for him to maybe get something done here. Become a little more aggressive. Well, just saw him. Yeah, he's behind Pizza actually. Wow. So hold a very, very passive angle here. This More zoom, isn't please? typical, Nah, really, I don't of think that PaperX's would be good. approach here. Well, not typical of EG's approach either, but. Oh, भाई फिर चालू है. Normally good for it. He's cleared out common angles. He's basically facilitated this whole site hit. So something has to try and hold. And the first shot not landing opens up so many opportunities for EG. Not feeling secure on the site just yet. PaperX looking maybe to pounce on this. Waterfall in, and they do. Jing takes away Ethan. This is looking much better here. Holding with 5 alive. Can they make it more? Yes! Oh, nice. Line freak. Damage done. Good Shotgun trade. player. 𝙬𝙤𝙤 still bounding away. But the plant's not in. It's held in the hands. 𝙬𝙤𝙤 not quite there just yet. 24 HP that all the 𝙬𝙤𝙤 has to boast. And now looking for the plant. 𝙬𝙤𝙤's got Jing. A late lockdown as well. This causes real issues for PaperX. They've got to run. They've got to get out of this. This is the plant that they wanted. हाँ क्योंकि टाइम है ना उनके पास उनको करना ही नहीं. Oh, something. Maybe. Oh my, wait. Okay, they got it. They got it. No, they got it. Try and reflank through mid. It looked like it, but Forsaken was so ready. And now the counter roll. They're going on this one. 𝙬𝙤𝙤's in danger. He's screwed. Trying to stick around on the site. He's been noted. He's been seen. How long can he survive? Oh भाई क्या कर रहा है भाई ये? क्या भाई क्या था ये? It's all on Com in a 1v3. Tap on the spike. First challenge found. Seconds there. Nice, 9 on. Perfect. To tie it back up to 9 apiece. I love the idea here from EG. Depend करता है वो तो लोगों को. Can the कुछ लोगों execution को and maybe साइड it's की जो relying on a kill or two एनिमे towards है वो short. सब भी देखना. PaperX in that regard, I guess, doing the right thing and not giving anything away. भाई क्या बहुत बरसी भाई इसके ऊपर. Well, they barrel down catwalk, find themselves in tree very, very quickly. They're keeping up, Mike. They are clawing onto this game. They do not want this one to go like Split did, that 13-10. PaperX showing real resilience here. As said, last dance for Jing. Get out of my way. And it looks like an aggressive start for him as well. Up and over, not quite. Pain Shell going to be left, and Forsaken couldn't quite get around the corner. 𝙬𝙤𝙤 tries to capitalize on the aggression, TPing elsewhere on the map, but PaperX disengage very quickly. Something will find 𝙬𝙤𝙤 as well. Now I feel like they are getting it. Come on. With that operator यार इसके knives डर लगते हैं बस. बड़ी low HP भी है. Where does EG look? Looking at 𝙬𝙤𝙤 already clear through wine. There's 3 players here. Again with PaperX keeping the numbers up. सुबह तक चलेगा? You get the beauty of just having that additional body they can post towards the site. Drift around towards top middle, noting maybe the vulnerability there, but it looks like maybe 𝙬𝙤𝙤's the one who could receive the attention if they furthered the pathing up towards tree. As it stands, it's only Demon 1. Yes, 𝙬𝙤𝙤 A main, but indecision. It feels like for EG waiting to see if there is a re-aggress here.
I think PRX को ये तो idea है guys. उनको ये idea लग गया स्प्लिट पे ओवर एग्रेस करना ही नहीं के सामने. Oh, wait. No. They have no idea. There's no idea. There's no way. 𝙤𝙤 even not his call on the way up regardless. Beautiful from 𝙤𝙤. Yes, Mindfreak's position would have been the back line if required. But 𝙤𝙤 doesn't even let it get that far. Finds all three to clean things up, finding PRX double digits here. Huge for them. And a big bailout in terms of the finances. They've been struggling for the last few rounds to find a response. Like I said, the operator finally finding some value here. 𝙬𝙤𝙤𝙧𝙚 भाई दोनों टीम के लिए प्रेशराइज हो रहा है. PRX one away from the pit. EG, I think really on the brink here for them. Demon shots coming in this trying to round. get something done here. An early paranoia though. टीम के अंदर ना बट यार लोग फिर भी यूज करेंगे उसका डैश के लिए यूज करेंगे. EG don't want to give up the space though. But there's a trade. Forsaken's got to be careful. He's the last standing bastion of this site. Support's on the way, and 𝙤𝙤 gets there. Oh! Hands out a haircut to Forsaken. It rolls on the floor. भाई दवाई ने वो कर दिया ना KO से नाइफ तो उनको रुकना ही पड़ा. But यार ये पीक्स ना निकल जाए बस. Pause for a little bit. They're still above a minute. This is early fights, and the temptation for that rifle, I'm sure, is just as well. 𝙬𝙤𝙤𝙧𝙚 knows better. Note Mindfreak here. How far does he go? No, I think he felt the timing out a little bit. For sure, EG though. Cut noise behind this. PRX with the correct read though. Oh, यार क्या read है? Got him out of the sky! Oh भाई! Something is activating here. This guy's coming online. The last couple of rounds have been essential to this player. And a fantastic catch on the adjustment. Oh नहीं अब वापस आएंगे There's B no पे. escaping your fate. You got to stand and fight. Nice आ गया. बहुत बढ़िया play यार. बहुत अच्छी read, बहुत कुछ बढ़िया, बहुत perfect. Wow. Nice. अब देख खुश हो गया. हाँ अभी वो शॉट देखना उसको वो शॉट दिखा दो एक बार. वो रीड पे था या फिर ऐसी था? No way, dude! Oh my god. Oh, something is like simple, bro. Bro, this is not rank. This is championship. This is finals. You can do that. Timeout for EG now. 3 consecutive rounds for PRX at such a pivotal time. मारा था ना पहले. हाँ वही और वापस अभी. No key ults to depend upon for EG. This has to be just in the server traditional approach. On the other side, you've got the Viper's pit there, one away from 𝙤𝙤. Operators in play. I mean, I was talking about PRX having real concerns in terms of the inventory the last few rounds. Now they've strung 3 together. It gives access to some real game changers. In terms of opportunities, I mean, another round potentially for Jing will have him a little closer to the showstopper as well. The pit notoriously difficult to overcome. Ascent as well, because it's just it's not really in the wheelhouse just yet. Few teams obviously playing around with it, but plenty of options here. I think if you look at the other side of things, EG with what's left in the bank, not many. 2 off the null command of their own, 3 away from the lockdown. It's just not feasible. So what's the answer? I've loved what Something's been able to do. Yes, obviously a very flashy shot in the one just gone, but even bigger picture, he has been finding such impact since getting that operator in. But I'm looking like a change-up might be in place here. Forsaken taking over the role. Don't do that to me. I mean, he's just hit that shot. And then you take the operator off him. What is he up to? What is the game plan here? It looks like he's getting into it. They're getting aggressive again. Look at the crunch towards tiles. This puts them on the chopping block. Forsaken not going to land the shot he wanted. EG running away. They don't want any of what's being sold. They've already lost Team of 1. Yes, Jing fell as well. Does the pick come out from वही ना, but अभी भी है भाई. Mindfreak Everyone is playing good ना. Get out of there. पता है ये Valorant का 3 साल में से बेस्ट पता है क्यों है? EG और PRX पांचों के पांचों प्लेयर 10 के 10 प्लेयर खेल रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर.
कोई भी क्लच कर Still has the सकता है operator. Something on the Vandal. ये भी This तो seems है एक just प्लेयर bizarre. मिल गई ओह And with the chance, something slipped ओए forward. वो नीचे कूद गया Oh! ओह 𝙬𝙤𝙤𝙧𝙚 gets denied. A 2v2 now on the side. Right Lucio click, and Kong right try click. and keep control. Swing, a miss. Nice. Calm on the trade, but he finds Forsaken. That's a shot done. It's huge. Something is playing. You are gone! Wait, defuse can defuse! Ice cold from something. छोड़ दियो He stared him भाई गेम down. खेलता उसने बाइट ट्रिक नहीं खड़े हो गए इधर ही Oh my god, crazy. दिमाग भाई बंदा दिमाग था भाई A little something for ya. ओए पानी गरम Look at this man. ये भी मारता ना भाई इतना सेक्सी वो देखने वाले भाई क्यों अबे पकड़े जाएंगे मत कर Beautiful stuff as 2 rounds now. भाई खड़ा हो गया खड़ा हो गया वो क्या है यार पानी गरम हो रहा है वहां पे साइड में It's given PRX मिस नहीं करना that point here. EG trailing by पानी गरम हो रहा है पानी गरम Spam already. Not great for Demon 1. He's gone. He's Oh! Jing getting the balance too. They're scrambling. They can't go along this route any further. Oh my god, Jing. It's PRX. यार ये थोड़ा यार ये नहीं यार नहीं भाई मैं उठ के जा रहा हूँ पता चले क्लच something अभी निकालेगा ऑफ है Device walking into it. Device walked into it. This is just unbridled aggression. Again and again they keep retaking the fights. Who's next? भाई माइंड फ्रीक है Down to 70 HP. अल्ट गया ना लॉकडाउन गया मैक्स से Position towards mid as an operator. No chance to actually swap this weapon out. Ahead of the retake. He's actually popped his Empress as well. Okay. बहुत स्लो खेल रहे भाई जी Okay, so finally मुझे पता है यार इसका गेम थोड़ा फास्ट है तो उसे आप लोग कैसे काउंटर करने के लिए स्लो खेले हैं ये पता कि पेस बैलेंस है But something is here. एक दो ना यार अगर सबको एक पिक मिल गई ना तो कम निकल जाएगा एक दो भाई The flash is good, sticks around for the shot, plays in mind freak, he waits on the first, he pounds it, no, he doesn't! Ethan! थक दिया माइंड फ्रीक ने Bailed him out until then! Kong stays alive, माइंड फ्रीक EG ने with होता a है lifeline! ऑप उठा ली क्या हुआ from EG is so माइंड good. फ्रीक ने हक Cut दिया sound here. दिया मतलब रिवील भी तो हो गया था हाँ आया उसको एक बंदा आया अंदर उसको टिकट स्कैन किया उसने उसको माइंड फ्रीक को ये पता मुझे लग रहा है ये करना नहीं चाहिए था एग्रेशन Stop it! थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट वाला हो गया ये That's how you get to 10? It feels unfair. हंस रहे हैं देख अभी भी हंस रहे हैं कोई दिक्कत नहीं क्या है कोई नहीं तो मौका दिया हमने भाई एलेक्स तो भाई But it ain't over yet, Mike. 10 to 12. PRX still on the verge. One more round. They tie up this series. And something interested in middle here. Mid is not locked. It will lock down A main. Something not noted just भाई yet. बस ओटी नहीं ये खत्म करो यार Invested in utility towards mid. ऑप है इसके पास आईडी बना के पास नहीं इनके क्या इसके बाहर पूरा पैसिव खेलेगी हाँ क्या इसमें थोड़ा सा भाई बाहर किसी में है सोने दे भाई कल फिर Does have the TP and LIAN भी obviously to regroup later on, but find themselves a fairly favourable engagement here. Lockdown will clear sight as well. No worry. ओए नाइस टूट गया नहीं पड़ेगा Yeah, it does deal with it. Lovely. वाओ That's fantastic. तभी तो रेस खेल रहा था उसको पता है I ना don't know if they felt as if they knew where Jing was earlier on. They're at 38 seconds. And they ये ain't को बचा है चैट में हंस रहे हैं ये को बचा है with a huge opportunity. A step is heard. कोफ किया It's था more than फॉर enough सेकंड ने And now more Let's go. information aplenty. Com in trouble. ओए यार A great bailout from him. Divide looking to get involved though. A pixel out of place and he spotted him. But 20 seconds. EG needs to keep going. Divide's got down. Brought down on his hands and knees. There's Jing trying to fill the void. Catches off the cross. Going to deny Com. Getting towards the ओए बहुत बढ़िया यार 10 seconds. ओए यार हक दिया भाई ये हक रहा है To यार get into a 1v2. Demon 1 out of this कर one. लेगा, Now कर लेगा। Forsaken to try and take वाला बहुत down risky। Remainders. This is the wall. Sitting pretty. Perfect HP. But can he find the double stack towards hell? No, he दोनों को लो can't. कर दिया EG
माइंड फ्रीक ना गया यार। कोई नहीं बट भाई माइंड फ्रीक हगा बट फिर भी ठीक है। जिंग ने वो जो दो वो मारा वो बहुत अच्छा मारा। अभी देख एलेक्स चला रहा होगा यार। That PRX had established here in the second half on Ascent. ये देख जो इसने मारा ना। I mean, the second shot to Jorgmo is outrageous. यार But there was so little time to recover. इमेजिन ये फाइनल लास्ट मैच तक जाता है और लास्ट मैच का उल्टी वाली उसकी तरह हुआ। पता नहीं। I think be it just a stinger. 14 नहीं है अभी 14 नहीं। I saw three of them stacked up and again a little worried. It doesn't matter the scoreline. PRX will still do something absolutely demented. They just got the reckoning off that. That early aggression has rewarded them the reckoning. Now they have the showstopper. माउस पैड नया है उस पे गंदा नहीं होना चाहिए। कौन सा माउस पैड है? ज़ावी। Divide, Mind Freak getting a little closer makes me nervous. He tried to pop flash off this last time. I'm so aware of a nicer angle. मतलब यही कह रहा था ज़ाज़ली बढ़िया है हर कोई। Bait things out. भाई तू आराम से पहुंच जाएगा अभी। जी माउस पैड से बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। Where Forsaken is now, you know where Divide is. तेरे पास भी तो बहुत कुछ है। हैं? तेरे पास भी तो बहुत कुछ है तू तो नहीं पहुंचा। मतलब तू जानता है कि मैं कर सकता। भाई मेरे पास टाइम नहीं मिलता। भाई प्यार भाई प्यार भाई। मिलेगी भाई समथिंग मिलेगी तुझे। Let's go. The series get us back to a 1. Let's go sexy. Something about the script getting flipped. Ascent goes the way. They're going insane. They're showing Ascent पे जीत के. They felt themselves as if they were poised for a 2-8 lead here. Ridiculous performance. Jing had 10 first bloods. Huge. Okay, but do Bye, Alex. Are you happy? Are you smiling? Please tell. Magnificent performance from them. Something also. भाई प्लेयर्स बात नहीं कर सकते एक दूसरे से यहाँ पे मतलब अगर अपोनेंट से तुझे देख लूँगा नेक्स्ट मैप पे ऐसे कुछ बोलते नहीं। मैं तो बोलता भाई तूने वो शॉट बहुत बढ़िया मारा था बट तू चूतिया है। वो लोग तो वो बोलते भाई ठीक है। बहुत बढ़िया। ईवेल भाई लगी ना जलन हो रही है। चक दे इंडिया। कौन सा माउस पैड है? ज़ावी का है भाई। अब आगे मेरे को भी नहीं पता। Come on guys, come on, hype up. I guess सुबह 5 बजे तक चलेगा भाई। I think अब खत्म है। नेक्स्ट मैच बाइंड पे PRX जीतेगी और फिर लोटस पे PRX जीतेगी और लोटस पे हार गई तो पर्ल पे PRX पक्का जीतती है। तो मतलब अगर डिसाइडर मैप हुआ तो फिर वही। बट हाँ कुछ भी हो सकता है भाई। ईजी भी जीत सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं भाई। दोनों टीम बहुत बढ़िया खेल रही है भाई। मजा आ रहा है देख के कसम से भाई। मतलब दोनों टीम ऐसा दिखा रही है जैसे एक्शन हो कुछ। और ये भी नहीं कि एक सिंगल प्लेयर दिखा रहा हो, सारे प्लेयर्स दिखा रहे गाइस। घर वालों ने देख लिया तो बहुत मारेंगे कि जल्दी खत्म करो। मोहित भाई आप सो भी सकते हो अगर चाहो तो। नहीं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बेड पे लेटो, ईयरफोन से तो एक कान में लगाना, दूसरे कान में अगर लगा दोगे तो कोई आएगा पता भी नहीं चलेगा। एक कान में लगाओ चुपचाप से देखो। बच्चे बिगाड़ है भाई ये। नींद आ गई। अबे बच्चे का बिगाड़ो भाई। ये तो वर्थ इट है ये मैप भाई। बट समथिंग ने ये दिखा दिया रेना तो खेल सकते। बस मेरे को स्क्रीम का चाहिए था कि स्क्रीम भी ऐसा हो ना मस्त होगा। बड़ा इंटेंस मैच, दोनों मैप इंटेंस गए हैं।
फाइनली लौंडे जग जाएंगे अपने अच्छे, दोनों ही डिजर्विंग है. यस ट्रू. मजा आ रहा है देख के. I'm really happy that people are enjoying the high level phase game and all, and hopefully people enjoy a lot, so that, you know, instead of watching entertainment, grinding makes them high level, makes them entertaining. That would be so insane, honestly. If people start believing in PC that yeah, this is so crazy high level entertainment and grinding, you know, and they will start doing it, maybe, or maybe who knows, that they start watching a lot, and which will get other creator streamers, or maybe new upcoming creator streamers will get it. Okay, I don't want to entertain people, I want to show the high level gaming, I want to grind, I want to show that people, you know, so that लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, व्यूअरशिप इंक्रीज होगा, तो लोग ये होगा. अब जैसे इंडिया में अगर हाई लेवल गेमिंग देखना एक बहुत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो फिर बहुत सारे लोग हाई लेवल ही करना चाहेंगे और वही करते रहेंगे, और उस वजह से लेवल और गेन होगा इंडिया का. दैट्स व्हाट आई थिंक. मेरे को सीरीज गेम देखने में मज़ा आता है. इधर ट्राई हार्ड हो तो थ्रो, नहीं पसंद कोई भी लॉबी, बस बेस्ट लेवल ट्राई हार्ड होना चाहिए. वही मतलब ट्राई हार्ड में अगर ट्रैश टॉक भी होता ना वो भी चलता है, बट ट्राई हाई लेवल पे, सॉरी हाई लेवल पे. ये क्या हो रहा है? क्या हो गया लोगों को? नाच रहे हैं. डांस कैम. अच्छा ग्रीन गेम. ला 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 ला. I mean obviously by now. इवल भाई ये नहीं बोलना था बस आपको. समथिंग का वो फ्लिक 60 HP में खेल गया या तो एक और ज्वाइन कर दे, कुछ हो भाई. मैं ज्वाइन किया, वो और खुद आएगी तब होगा ना, हो जाएगा. इंडियन में होता तो फ्री में डांस करते. फ्री में ही डांस कर रहे थे. डांस काम होता है. तू आया इसलिए गुस्सा हो. जैदल भाई आज आप गाना नहीं गा रहे. दिख रहा है. शैडो दिखता भी है. टीम लिक्विड कब जीतेगी पता नहीं. मैं तो इंडिया का लगाया हुआ है. GB here, and I have two special guests yet again on the broadcast. It's 𝙤𝙤𝙤𝙤 and 𝙤𝙤𝙤𝙤. Give it up for them. Because literally we're here because of them. Okay? All right, well, I'm glad I got you guys here for a brief minute. Obviously, an incredible game that we just watched. If you're just joining us, 1-1 tied in the series. PRX managed to take ascent. Let's talk, though, about that opening ceremony. Well, Holy moly. Let's talk about the dance cam. Like, I was just on the dance cam. Yeah, it's true. All right, okay. Yeah, no, I treated people OC. as a kid on the dance cam. OC was incredible. We have been planning that OC for a very long time. I think it was, how did you all feel about the OC? Everyone? Yeah. There you go. Pretty good. People like music and fun and joy. And dancing. And dancing. Who doesn't like dancing? It was amazing. Well, since I have you guys here for a moment, let's talk about, you know, the game that we're all here for, the sport that we all love, Valorant. Leo, what does the future of Valorant look like for us? Because I feel like we have so many cool things on the horizon, and the year's not even over yet. Very, very true. Yeah, so we're, of course, concluding the competitive season here with champions, but we still have so much coming. We have off-season starting. We have over 40 events happening all around the world. We have roster mania starting. And we, of course, have game changers later this year in Brazil, which we're incredibly excited about. Let's go. Yeah. So yeah, and then next year, of course, we're doing so much, bringing events to new locations, Madrid, Shanghai,
more teams playing in international leagues. We're very, very excited about the future. Yeah. Any hint on where we अरे might मैं be bet next जीत year गया for guys, मेरे को तो champions? points मिल Anna गए. and I are saving that, and we're going to announce it later. We'll keep that in our back I pocket. tried really hard. They keep trying. They keep trying. And what about for you, the Right, future, these are the points Valor, of for you from the game side? Yeah, I mean, I think it's easy to feel like the year's over because of champs right now, but it is definitely not over. We got a lot still going on. We've got Sunset coming out. We just showcased that today. Super excited about nice, that. that's nice. Premiere is finally launching for Oh, by the way, where's realsies. Sunset take place at? Oh, that one takes place in LA. Oh, in Los Angeles! In Los Angeles! Who doesn't like that? I know, we are very proud of that map, obviously. Premiere is launching officially, very excited about that. We have a Duelist coming out later this year. I think people keep forgetting that I announced that earlier this year. It's gonna really shake up the game. And then all the teams are already working on stuff for 2024. Like, we don't stop. So we are going to kick 2024 off with a bang. Best of 5 है. End तक stress की वजह से And then you did the thing too. Okay, well look, guys, I want you guys to leave these incredible people here at the Kia Forum with some love. So you have a message for the folks who came out today. I do, yeah. We are so appreciative of all of you coming. We put so much work into this, and it's all for you, fans. We appreciate you so very much. So much. I want to thank teams for playing an entire season. It's been an action-packed calendar. I know a lot of them are tired of playing. But yeah, it's been a great season, and we just are, full of love and appreciation at this moment. So thank you all very much. Yeah, and honestly, just a huge shout out to the teams all across Riot. Putting on something like this is no small feat, and I appreciate every single one of you. But more than anything, we appreciate all of our players. Without you, we're absolutely nothing. Thank you for coming today, everybody. Thank you. वो भाई Elon Musk आया है Valorant champion. हाँ. Thank you. यही तो खासियत है. ओ भाई. Thank you very much. सोच उससे कहा कि भाई इसको और बड़ा करो लो पैसे. Yeah, I mean, dude, तो भी दिए होंगे काफी आने के लिए. we're coming in cold. Thankfully, the 𝙤𝙤𝙤𝙧 guys have been. अरे पता है, you never know. क्यों फ्री में आया या फिर पैसे दिए? No time to waste. फ्री में भाई वो क्यों आएगा? Bro, you never know. Honestly speaking. That's why they won the last map. Let's talk about something real quick because the Reyna on Ascent, we're going to see it on Bind as well. What did you guys make of it? He played fantastically. I think he was one of the players that was struggling to get value in the previous. I still remember मैं एक इवेंट पे गया था गेमिंग के जहाँ पे लोगों को लगा मुझे पैसे मिले आने के. तो I can totally get it कि भाई जरूरी नहीं है अगर कोई बहुत फेमस आदमी है और वो कहीं पे गया तो जरूरी नहीं उसको पैसा ही मिला है. And what's impressive Depend about करता him है is वो. able to play isolation a lot here on Ascent. So that's what he needs पता to क्या do आप on उसको Bind. इंटरेस्ट That's तो where भाई he's often left उसको behind. बताता So हूँ. covering showers, covering 1B, flanks like that. ये भी नहीं मोस्टली पता है क्या होता है. दो रीजन है. या तो किसी कनेक्शन के थ्रू आया है कि भाई एक बार आके देखो ये ठीक है. ये हो सकता है कि कोई क्लोज कनेक्शन होगा इसका. ये हो सकता है. दूसरा नहीं तो मे बी क्या कहते हैं तीन ऑप्शन. एक मनी हो गया, एक कनेक्शन के थ्रू हो गया, एक वैसे खुद से आना. बट खुद से नहीं होगा. खुद से अगर नहीं आना ऑब्वियस है यार. कोई नहीं है. But we're talking tiny tweaks. Well, let's take a look and see if we do. Bro, Duelist finally 4 seconds on Duelist. OG PRX running the Euro again with the breach. Something with breach. I fell in love with this team because of this composition when they ran it all the way back, years and years ago when they went on that run into the grand finals of Copenhagen as well. They were really bringing this one out. ये देख मैप विन देख. ओए ज़्यादा मैप विन देख 85% और 42%. तो बाइंड तो पक्का PRX के हाथ में है. भाई आज एक बंदे ने बोला था 4 सेकंड को डुएलिस्ट पे डालो और समथिंग को ब्रीच पे. अबे तो भाई बाइंड पे वो यही खेलते हैं. वो बहुत पहले का नहीं बट समथिंग भाई ऐसे तो चैट पे एक ने ये भी बोला था सोलो आपको जल्द गर्लफ्रेंड मिलने वाली है. सब उठा के फेंक दिया इन्होंने. भाई सही में चैट में बोला था सोलो तुम्हें जल्दी गर्लफ्रेंड मिलने वाली. बोला था भाई कसम से भाई. One of the two teams has to take the lead here, Mike. Who have you got for this one? Elon सब खरीद लेगा, प्राइम गेमिंग खरीद लेगा, रॉयड मुझे yes, we do talk about obviously something filling in the role. नहीं, this is not last game bro. Best of 5 है. जो भी टीम 3 जीतेगी वो विनर होगी. सिर्फ 2 नहीं. I guess we'll do इसके the बाद same. कौन सा है? Do you want to do that thing we used to do? Roll it back one time.
Oh, here we go. Map 3. One of these two teams has to break the deadlock now. Lotus or Pearl? PRX going to be walking into this off the back of a fantastic performance just a moment ago. And EG Bind के बाद क्या है? Pearl Pearl. Hey, bind के बाद क्या है? Pearl ना? नहीं. Lotus फिर Pearl decider है. Pearl decider. Lots of bodies outside Fountain here. Stimbeacon will come down. Ethan hasn't actually flashed yet, but he will note the Trailblazer. Ethan, stun comes through. Chamber demon. Oh. Look at the assist on that bad boy. He was dead before he could blink. Not a chance in hell. And now Com trying to get away with. Oh my god, he still gets one. That's ridiculous. But again, it's on the aim on the back line to Boostio doing some serious damage. And the follow up from 𝙬𝙤𝙧𝙬𝙤. Wait, they're down so low. And 𝙬𝙤𝙧𝙬𝙧 on the trade. It's just the mind freak. To be eviscerated by 𝙬𝙤𝙧𝙬𝙧. कोई नहीं जब भी EG राउंड जीतती है फर्स्ट नहीं यार 2 राउंड फर्स्ट जीती है वो इस बार मैप आज हाइड्रोफ्लिक का बर्थडे हाँ मैंने स्टोरी देखी उनकी स्काई स्पोर्ट्स पे आप बना रहे हो वॉल्यूम बढ़ा दो Zero. That start was dreamy. Taking down Ethan Marie had a chance to react. The follow-up, yeah, you lose one, but that's fine. Let them take How this. did they get back in there? I couldn't even imagine that going any other way than PRX's. What a ridiculous turnaround. Team 1 now will be played in. Scope and still, Forsaken actually commits to this TP. Tag comes through, Demon 1 down to 72 HP, but still feeling pretty good about that. Someone's chilling. I think I just saw him rub his hands together. Basically, as if, yeah, I've got to kill here, boys. I'm good. Somebody's definitely taking this TP. Ethan? I thought he would just flash through to check the TP then. He didn't. He went through towards showers, but definitely leaves you wondering. वो बैठा रहेगा भाई. He's starting to get a little antsy. They've drawn over the additional body towards the side there. वहीं से स्टैंड कर देगा वो. Joining. मार्क कर रखा है उसने. Trying to sell him something, trying to indicate presence, but the two players who are left on this A site for EG, well, I was going to say they were playing deep, but Demon 1's looking for a chance. Can't quite close that gap quick enough. And something he actually came out of the TP. Oh no, he's still good for it. And they're taking the grand tour. So it falls down towards Com, whose position could be pivotal, could be everything. They're going to waterfall down, bounce once, and they're dead! Oh no. 3 back to back, and oh my god, Forsaken! As if he got that. But the time and the spike is everything. It's deep in enemy territory, and they're so unlikely to get away with any more. Trying to be a little naughty around the map, and EG keep 3 alive. Spectre absolutely farms. ड्यूटी सर भाई मुझे लगा तू सबको कह रहा है मैगी बना के खा लो ऐसा क्या खाना तेज couple of kills, one away from the pit already actually. पता नहीं भाई बस अभी कुछ और कुछ मैं बना नहीं सकता टाइम लगता है ना. Chance here even to have it to play into the bonus round here. I'm seeing the bite. He was almost went for a phantom there, didn't eventually commit to it, but जो है मतलब पता होने का ये एक फायदा है. Makes me feel as if he's probably going to play a lot. तुम थोड़ा सा खा लो तो 5-6 घंटे तो तुम्हें भूख वैसे नहीं लगती. चेक थोड़ा सा ही खा. Well, he's in the right place for it potentially. He can turn that flash and he can. He keeps him at the doorway, can't get through. He falls off from this. First blood drawn instantaneous. That's Jing gone. Lots of that burst is now removed. Read is perfect as well. The PRX is going to go for the double satchel flash into showers. Demon 1 now played in on short. Just to give up the angle for अब देखते हैं ना अब आएगा मजा तो. भगवान करे जल्दी से ये वाला गेम उनके साइड आ जाए. Nice. भाई अच्छी मूवमेंट दी जाओगी. 𝙬𝙤𝙧𝙬𝙧's movement is actually a treat to watch at the moment. Still holding a little bit of space, but PRX now starting to carve away at this A site, trying to find themselves some safety for a plant here, but the timing's not good enough. Great trade for Demon 1, Forsaken and Mind Freak, trying to break the back line. Nice. Taking away Boostio opens up this map. Just they don't should be able to get a safe plant down. Don't throw this. Now, yes, the Vandal fell into the hands of Ethan here, but this is a lot to ask. He's going to play ahead of the volley. Denies the first attempt at the block. That's good. That's and now legit good. How much value can he get? Not very much. They've taken the TP. They want out of there. No smoke though, and no molly.
for Mindfreak. कुछ नहीं है सनी एक्स्ट्रा नहीं I mean, that snake blast should land. It has. It's just outside the orb, though. Have to tank a little bit more damage there. Flash to play for Ethan. Could try and maybe allow Com a chance to close the gap, but look at the creep coming in as well. ये देख रहे हो कितना सही से हो रहा है. Working around by CT, that's a very favourable fight for him. The flash. Oh bhai, fake flash. Forcing him away, allowing Com the angle, but something still standing. Remember what he was doing on that last map. Remember, this man is a straight-up killer. Oh, but no luck नहीं चल रहा यार. वही हो रहा है 110 वाला something लग रहा है. From them. The fake flash is just beautiful. A Com. Yeah, वो बहुत अच्छा flash था. बहुत अच्छा retake किया. Every shot with the stinger from that distance. Mindfreak has to be seething after that one. हाँ, fake कर दिया. But a beautiful round from start to finish by Ethan. And the play outside the showers ahead of the volley as well. To give EG the bonus conversion here on Bind. कोई नहीं Alex, कोई नहीं. Operator in hand for Demon 1 as well. Quick to it. On the other side, full buy, and the ults are very close here too. Plenty on the cusp. Blinded. We'll find Mendes here. Oh, same sort of attempt here with the stun and the flash. TP up long here as the pistol round. Oh lol. Oh, yeah, you can investigate right away inside. They can't clear him so well. Oh, Motu! Shoot my body. Come clear him, but Ethan still with a chance. उई, भाई अभी इसको मिल जाते हैं ना रो देता मैं सही में. The two remainders. अबे लाइनअप में सारे मरते एक साथ. Now, it looks like Mindfreak's keeping a little bit of a watch towards this. Demon 1's not all that invested just yet. A kill. He's got the paint shells and the showstopper online here. Nice. आ गया. Very sharp. Yeah, safe. Nice. To hold on to this Finally. आ गया सर Demon. PayPRX will अरे find भाई. themselves first round here on Bind. मतलब कल को मैं VCT में ऐसा खेलूँगा तो मेरे को भी कहेगा ऐसे. Info gathering on the Yoru. हाँ? आप सेव कर यार. अच्छे के लिए कह रहा हूँ. Soon as that Viper pick came भाई हाँ, out, Viper के against Yuru best pick है भाई. he knew what was going on, and of course they think भाई वो रुला देता है भाई. you saw that pressure on long पिच से भागा वो बिल्कुल. tailor made to catch him off guard. He's got to find a way to handle this because we saw it in the pistol, we've seen it lent back to here. Now obviously that's with the supplementing, the ults coming in and everything else, but just straight on through. Yeah, it's tough as well because Com doesn't want to completely disengage here and allow the pit to fall, but he's in a spot here where it's very easy to wallbang. So old form that's working I mean, like the only this. real spot there behind default where it's kind of reinforced, but even then it's risky. Not many options. Still with a purchase, but you're going to see some pieces missing. Ethan on one side of it, down to SMG. Judge back out for 𝙬𝙤𝙤, but it feels like he's wanting to run that. But you're looking at the rest of PayPRX, who are now stabilizing a bit here. Seeing the lean forward from Demon 1. But the pressure once again, I'm looking at this B site, they're going to be tested time and time again here. PayPRX making no subtleties of this. Team 1 off the showstopper. Got himself a kill. Alex is Gonna follow up the Trailblazer. They're going satchel through. Oh, this Tons of space man. created. Oh भाई. यार shit यार. Trying to keep his head down. Nice. Dives in, tries to save his boys. भाई सारे ही गए. In the hands of EG, Device surrounded, he can't get away from it. Boostio the one to put him down. Forsaken, overwhelmed. EG. भाई क्या round था? Right back. EG playing with a very different pace today. क्या round था? Across the board. Different approach, happy to take these scrappy engagements, go blow for blow with PayPRX. We'll force a timeout here with a 4-1 scoreline. PayPRX going to be scratching their heads. Funds already starting to मैं सोच रहा हूँ यार अपना mouse ठीक करवा दूँ. Haven't found much success yet outside of creating opening engagements, and even then not really converting that towards rounds. कैसे ठीक करवाएगा? It was quite interesting, an interview with Poto prior to this when discussing facing the likes of PayPRX and kind of discussing the ability to have to crack जो बता रहा था वो मंगवा लेता हूँ, फिर यहीं से कहीं से जाके करवा दूँगा ठीक.
second guess, you hesitate. There is a chance PRX, they will close that gap. They'll play to the pace they always will do. So interesting to see that EG have changed a little bit of the tempo towards this, maybe more willing to brawl. As if that's the conclusion they've come to, then fair enough. But this does mean these games will be high octane throughout. We can stress that enough. And I think PRX are going to have to discuss what the buy is going to be looking like for the rest of this game. Do they fully commit towards this? भाई वैसे पता है इतना ही पैसा कमाना है कि ये माउस को मैं यूज करूं उसके लिए क्या कहते हैं किसी को लाइक फेंकने के लिए इधर उधर फेंकता रहूं और फिर दूसरा स्टारलाइट को मैंने ईमेल डाला था कि मुझे आप स्पॉन्सरशिप दो, आपका माउस खराब लगा। उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया यार। स्टारलाइट को नहीं, फाइनल माउस सॉरी स्पॉन्सरशिप दो, माउस खराब लगा तो देखो हाँ ये भी है यार। मैं फिर से ईमेल डालूंगा, मैं इस बार दूसरी ईमेल डालूंगा बट किसी और नाम से, मोलो सनन से। हाँ उससे डालूंगा, कहूँगा कि आई लव फाइनल माउस बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी पुअर एंड आई नीड मनी टू बाय, सो यू स्पॉन्सर मी एंड आई प्रॉमिस टू गो रेडियन नंबर 1 इन वन नहीं रेडियन नंबर 1 one day I don't know when but one flash turn 𝙤𝙤𝙤 back to it, the paint shell, look at the damage that could have done, already doing a lot. यार AP slipping forwards, Ethan sat in the corner, set into motion by 𝙤𝙤𝙤. That's his chance to escape. They've done serious damage. Forsaken now, यार ऑप से भी left in pieces. PRX have the opportunity closed in this round. हाँ Where do they pivot to? तुम देखा नहीं मार्शल से वो जिंग को वो कर ही नहीं पाया। Anything on the back of the window created of Mind Freak smokes being invested. Oh shit. But look who's here, Jorgmo. Cleared. Fantastic from अरे उसका फ्लैश मिस हुआ ना भाई, मैं दोनों टीम अच्छा खेल रही है यार। Counter flash comes in, but the ult gets popped. That shot. How? That looked to his feet. Not to be in the follow-up. So clean with it. Mind Freak now. भाई टैप तो ये भी खेलता है। Where's 𝙬𝙤𝙬𝙧? Trying to invest a flash. Great work from PRX. 10 seconds though. They got to get it done now. Blanc's going to come down and 𝙤𝙤𝙤 is watching. Eyes trained on this. Mind Freak looking for a fair fight, and there's not much fair about this 1v2. A molly to play, and a shot. Oh, he missed it. A quick slip out though. Mind Freak gets to reposition. भाई molly है बस टाइम खेलना है। 8 bullets. Has to find an opening headshot potentially. He's trying to play a little ahead here. A little bit of a gap to play with, not much, and that gap has been closed. molly डाल दे, अबे molly डाल देता। And try as he might, EG playing in ऐसी molly डाल देता। A nice attempt from PRX, but it wasn't enough to keep control. But नहीं यार, nice try। It's heartbreaking the comm still. भाई at दोनों this stage टीम around, यार। there's 2 snake bites to force him out of the corner. Beautiful stuff, Busio. I think both team deserve to be here, man, in final. This was a headshot. Both teams. Oi. Yeah, Busio shutting down the showstopper. Last minute, why so slow? That was a force up. That was, I think, what, 2 of the ult showstopper. why so slow बोल रहा है? I mean, we have investment Instant again as hit well, करो ना। but 𝙤𝙤𝙤 and Jing have brought down to 302. It just feels a little desperate right now. वैसे इनको पता है अटैक में जीतना चाहिए बट वही है बाइंड पूरा डिफेंड मैप है भाई। ओ भाई अरे शॉटगन पे शॉटगन। The mantle combo just stunning in his work. Jing with another essential trade, going to keep some safety on the site to maybe facilitate the block. Maybe not. Denied. This time by Busio. Pausing for thought as Ethan can now come back around. Something's in danger. Solo HP. Smokes have dropped as well. Which gives Ethan a little bit of an advantage in this situation. That's big from Jing though, identifying the position still. 𝙤𝙤𝙤's still got to do work here. They've got something pinned. Nope. And a flash in play for Ethan. Oh no, he got it. Who moves first? Trying to isolate towards Ethan, but 𝙤𝙤𝙤's got him. Yeah. Catching that cross, and now Jing with it all to do. Oh, he's found the first, but the follow-up. No! Puts him down. PRX unable to strike back. That demon smile, dude. Beautiful way to close out. 𝙤𝙤𝙤 starting to land भाई इवन तू कह रहा था कि EG को हेट मत दो, तू खुद भी तो वही कर रहा है। तुझे चाहिए कि मैं हाइट कर दूं यहाँ से। तो टाइम आउट कर रहा हूँ मैं। हाँ पर फिर भी वो जानबूझ के कर रहा है।
PayPRX, unfortunately, is another example where even in that 20-second window with Mindfreak smokes down, they don't get the plant in. 6-1 हो गया. The despair starting to show. Alex तो बहुत stress में. On the coach cam. बाल उड़ जाएंगे यार. 6-1 score line here for EG. You are looking dominant. क्या पता? क्या पता विक पहनता हो? लगता है. Trying to build. Maybe वो लग रहा है stress में, but है नहीं. एक का काम ही होता है कि लोगों को पता ना लगे. They're being cornered in the reaggress EG. वो अपना keyboard Look at तोड़ they want to दिया get है. into things as well. A 1-for-1 trade. Boostio lost and oh my god, Forsaken's gone down as well. 𝙬𝙤𝙤𝙦's just unleashing fury. Look at the भाई तो बस घुस रहा है भाई रैंक की तरह. Full confident. Zero respect, pure confidence. And Gone waiting. Smoke's dropped. As is Mindfreak Divine out. There's nowhere that feels safe. They're not playing that way they want. Chance at a plant maybe. 48 seconds. How much can one man do? He would love a kill here. Creeping closer and closer. Oh dear. Oh Noted here. 30 seconds left. But you got to feel like he has to have found a kill already, Lauren. Yep, and with Com slipping even deeper towards Xiao's not allowing it to be easy. No one is giving Divide freedom. He might have to just take a... It's a gamble at this point. The flash, yes, he now knows there's someone in Xiao, but Com, he's not going to let this slip. Look at this. This is just excruciating for Divide. He can't find these kills, and EG slip into absolute discipline as PRX slipping into despair at 1 round to 7. And a beautiful crunching showers here. Utility comes flooding through. Said 𝙬𝙤𝙤𝙤 just keeps swinging. Refusing to back down. Yep. You like that hole, baby? You like that hole, baby? Will force another timeout here from PayPRX, burning both by round 9. They're struggling here. I mean, they've... भाई अब पता 170 ना इनको थोड़ा काम कर लेना चाहिए. नहीं तो अगर वैसे ही रहेगा तो decisions in game. Because they're in a situation again here. It's going to be Stingers, Sheriffs, maybe. They don't have the same benefit with a similar purchase we saw a couple of rounds ago, but they have a showstopper on a Rolling Thunder off the rip. You're right. They have an orbital strike. One to find for Forsaken and Jing, sure, but that's the first hurdle. I don't feel like PayPRX have got past the first hurdle in a few of these rounds so far. No, they're definitely struggling to get that activation here. Not even seeing the individuals find that impact. Harder to make it work. Credit to EG for coming out looking fantastic, obviously, but this composition was a little bit of a surprise for us, and I don't even want to blame the comp on this either. It's not been the worst part of this. It's not been able to find what they need. They go back in. It's नहीं कल LAN है यार इनका. मैं नहीं चाहता कल ये बोले भाई सो नहीं पाया ढंग से. I don't know if we've got a pocket piece built around this. Maybe try and get Jing into a position here to find a kill for Stinger. You know, I mean, you know he's good for him. Again though, draws out the paint shell, the boom bot, fault line. ये देख पीक के लिए देख कैसे निकाल रहा है. नहीं timing to be drifting back up this way. They're sticking around. They're willing to disrespect the utility and re-clear. The only surprise is Jing is going to close enough towards 𝙬𝙤𝙤𝙤, and this 1v1 has been going. Generally, 𝙬𝙤𝙤𝙤's way. That's a nice change in the first. Nice Forsaken. Taking over the site now with the back of a perfect flash put into place by Divine. Blonde now and the time on their side. A 5v3, a couple of upgrades here and there, but a chance made. You think going to catch Mindfreak all the way back out? ये राउंड आ सकता है इनका. Oh, this angle. Jing could absolutely shut this down. Oh, spotted though. He might have just lost that chance. And Forsaken. Oh lol. Much better though. Forsaken activating something's there. Nice. PayPRX. Nice. Adjust. Rift ही निकाल दिया. आराम से coming in towards Lamps, clearing on through. Beautiful. Outdoing 𝙬𝙤𝙤𝙤, forcing him away.
I mean, a lifeline here, Mike. Definitely a lifeline. A very slow approach here. With a lesser purchase will net them the first round since round 4. But EG not necessarily feeling the heat in that regard. Financially, maybe. The ultimates here just missing one for a full deck. Ethan one away from the Seekers already. The pit invested here. Shut down towards B long. PRX testing the waters. See if anyone willing to take the bait towards Showers. Not the case. Ethan sees nothing. Obviously, going to note the shots, but that's about it. Now they've got to try and figure out why this PRX side is going. And it's cautious and it's slower. This is very uncharacteristic for PRX, obviously. So, do they dare challenge के towards पास अल्ट है यूरो का बट वो करेगी नहीं वो कर दिया उस साइड कर दिया We're going to pave the way here. A D1 spotted a junk P. Trailblazer will come through. How long is he standing on this man? He does have. Oh, Forsaken! Oh, bhai, ये sexy था भाई. Forsaken gets it right. That's the side where. Oh my God, the counter. The ults right on top of each other, going to deny the plant, going to come through, but Jing holding the line, defending this with his life if he has to. They want to get that plant down back line. Oh no, run Jing, please. Oh, Paint Chopper! Paint Chopper! Oh my God, this is ridiculous. They paused. They paused for a second. Is there a plant? Can Com deny this? I'm seeing the jump up as well. Trying to close the gap. Something with a big shot. Life Freak's got Com. Backline secured. The gap is getting close though. Divine now on the swing. Nice. बहुत प्यारा राउंड आया यार. बहुत प्यारा राउंड. Going to sleep with your shame on the side. For a good night. Hopefully you wake up at the right moment. The TP from Forsaken. Just come on. I mean, it's so well crafted. Evil Crew, आप support करो, but किसी दूसरी टीम को hate किसी हम ये सब क्यों करना? जो टीम को support करो उस टीम पे रहो ना. अब जैसे मैं PRX को support कर रहा हूँ, but EG को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. Because I'm focusing on PRX. Indeed, we talked about coming into that. They were one away from the Seekers, and that would have been a full deck in terms of the ultimates. Everything is thrown into that round. What do they have coming back out? Do you want to get a rifle? Timeout. Can buy. I'm looking at. You know, did you notice? Production में timeout नहीं है. Jorgo down on the stinger. He's been sitting with the judge, but still, this is far from ideal. Ben Affleck भी आया होगा. निकल जाऊँगा मैं लेट के मैच देखूँगा फोन पे अब. Guys, Ben Affleck भी आया होगा. Wild turn of events now. PRX have a little bit of a financial cushion, a buffer. Manan. हाँ. But still trailing by. Ben Affleck भी आया होगा. क्या? Ben का है? I'll come back to a 7-5 Ben Affleck. It's Batman. Just defies logic how they fought back in. The grit and determination to be able to do this would be wild. They've got a full purchase, no ults to depend on. I think they're one off from Seekers, a couple away from Rolling Thunder, but that's neither here nor there. Can they keep isolating these fights? They're going back towards the A side here, a full play stack from EG. सही टाइम पे फ्लैश हेट भी एक अलग तरीका होता है भाई. Jorgamo shuts him down. गाली देना ही हेट नहीं होता. Now they're going to lose Jing on this one. That's a problem. That's a rifle in hand too. A nice little upgrade. I'm getting curious. सिवाय और something. दवाई पहले अपना पड़ेगा. Back here. That's enough. He's in trouble though because they've taken towards long here. Forsaken is ahead of this and forced away the flash in unison. Buys him a little bit of time. Oh, Jorgo, come on. Nice shot, but something's got the trade. A 3v4. Keep in mind the weaponry, the flash to a device, something with a full kit here. He can be critical. He could change this game. But Ethan's aware. He's watching this. The flash through. Perfect from Devi. Nice. The site looking safer by the second, but Boostio on the way. And speaking of timing, that's the spike down. Molly to follow potentially. Calm on the punish. And now Mind Freak in the 1v2. He's on 13 HP. What's he meant to do with this?
Can he find Demon 1? Can he get the clean kill? He's trying to creep a little closer, look for anything, anyone to give him an inch. But they've taken a while. EG turning it around in a Thrifty. I am back. What a crazy turn of events. EG respond with a round when they basically had nothing to bring in here. They have no right to find an 8th. Give PRX the Rolling Thunder, the Seekers for round 12 here. But EG gonna be loving that. What's the options now? And it looks like a pace change actually from EG. Straight down B long, but Jing's going to take maybe the space. He's going to surely hear this. Wait, they're taking a look, but they had no idea the amount of bodies behind this. So much presence down long. They didn't expect it to be 4 of EG. The trade out is that Devi and Jing go down. I mean, the wild thing is, it's one of the few times you see PRX in some semblance of a default as well. Able to isolate a couple of players on the extremity here. 9-3 shy. Elsewhere, Mindfreak gonna get Yeah, an maybe to find they some can space on A. Com has just been playing contact towards spawn. So this is the plan all along for EG. You think commentary too? Dude, I'm not good at commentary, but yeah. I only talks on the main thing. Okay, could, but doesn't. But right now it's on Mindfreak and something. And yes, Mindfreak's got space, but as you noted, Com has been sat here waiting for this the whole time. Oh no. Look He's walking at what's into it. on the other He's side. walking into Fully it. prepared, fully aware. EG handling this round near on perfectly, and something, it ain't happening. EG on the adjustment here, pumping those brakes right back at a 9-3. And it's such a beautiful read. Even after this, they find the opening 2 kills, they sit in spawn, they're happy to just concede the entire map and play towards their strength in numbers. We are rooting paper. So well done, and a 9-3 half here for EG, firmly in I think in control the attack they will. But can they close? Hopefully in Can they get defend, over this one they will cleanly? like. We know the fight in PRX. We know these guys can absolutely Will we deliver take when the needed. curse? But for Let's now, go a then. treat as we hand Curse down to 10s on. and GB. Hey everyone, I'm here with the one and only Oh, 10, so damn. we heckin' love this guy. Yeah, we do. Hey buddy, how you doing? You feeling good? I'm feeling really good. Crowd's amazing. The matches are really fun to watch. Hope everyone else is enjoying it. Let's make some noise! It's great, right? Like, look, here, check this out. You could do, like, so long as you say something with confidence, right? Guys, can I get a yeehaw? See, all you gotta do is just say it with confidence. So you try, go ahead. Think of something. What? Lemons. All right, everyone, say lemons in 3, 2, 1. See, you just got to be confident, 10s. That's what it boils down to. Hey, I'm going to get your thoughts real fast on this matchup. It's looking good for EG, but PRX have been known to He's bring it back in the nervous, past. listen. Where are you thinking? Where are the chips going to fall at the end of this map? So it's definitely looking like EG is going to take this map. PRX cooking up a really interesting comp. Respect to the Yoru. I love that. But yeah, it's looking grim at the moment, but I could definitely see PRX surprising EG with certain like set plays that they might have cooking up in the lab. So definitely have to stay tuned and we'll see something. Yeah, no, I have no doubt about it. Now, obviously, you know, prolific player in your own right, obviously wanting to have these opportunities yourself as well. Curious to know what's the future for 10s next season? Future for 10s next season? I'll just play games. He just plays video games, baby. That's what it's all about right here. Give it up for the legendary 10s. Appreciate you, brother. See, look at that. It was not that hard, right? We're going to go ahead and send it back over to the casters to get this show on the road and see how this whole baby is going to wrap up. Lauren, Hypoc, Demon 1 is like Thank you, GB. only player who is really good, up, though, if they want to try and catch back up on and the scoreline. we can 9 say rounds is a lot to close Demon in 1 on. is They've like got 3 to their NA's name. best. A pistol would be Yeah. the first step. I won't right, even Mike? say one They of need best. to I get feel this like one Demon 1 going. is Any best plans they have in right mind, now. anything they've cooked up has to come out from the very word go. Do we see any form of aggression, any proactivity across the map? EG so far have looked flawless in terms of the reads, in terms of the setups. Nobody hits though, but the thing is like everything get overrated, which makes somehow people less, no, I wouldn't say hate, less Open up the round.
attractive or less lovable. For example, as Kerosi or in when Tens was there, when something, these everything gets overrated slowly, and then some people start kind of not lovable, but then there go haters. Flash to stall, rotations on the way. 3 players trying to come on over, and Forsaken good for a fantastic find. 𝙬𝙤𝙤𝙦 goes down, but Com does get the trade, but no that's what I for example, me, I'd never get overrated. Always be like rated, or maybe you can say kind of underrated. 40 Like, seconds left, so plenty I of time gained my to name recover from the Valorant. situation. Flash Only come through. Here's the pop coming through. Yeah, good trades. Great work from Jing. Back-to-back kills. Please. Nice. Divide doing the damage for PRX. That's the pistol round they needed that could get them back into this matchup. I don't mind. I have no clue. Like sometimes I feel like I'm really rated. Sometimes I feel like I'm very underrated. In the first half. I mean, still half of the Indian community, or I would say 80% whole world doesn't know what I did with like 5 radiants in one single act. People think that it's like 5 radiant in one episode, or maybe differently, but not one single. If I get into esports, I will make that. Like, if somebody asks me, you play really good, how and all, dude. What do you mean how? I was 5 radiant account, something like that's what I would say all the time. Nice! Nice! On the push through. Fantastic. But now 𝙬𝙤𝙤𝙤 and Com trying to do a little bit of something. They're coming back, seriously. That's a lot to do with classic. But maybe 𝙬𝙤𝙤 with a sheriff. Nah, just extra frags. I don't know. They've got the spike back. Like, but you know, the problem is Tens, Esiros, these all players didn't ask for the overrated, didn't ask for that hype. It's the people who made it. They're just going with the flow. Maybe they have to. 𝙬𝙤𝙤𝙤 trying to pre-aim the jump spot. Oh. Oh, but so can that! Dude, don't clutch this, for sure. There's a little worry. There's the judge. Nah, ho gaya, shotgun. They are literally around this corner. Something. Where there's the storm. Gets them out of danger. And the scoreline's not looking so bad anymore. Almost want to see the bonus converted though, and with 3 kills coming through. We'll see how PRX do decide to carry. Obviously the judge singing here for something in showers. But yeah, it does make it concerning, considering the deficit, the reliance on converting this bonus. Wondering how far Forsaken was going to take that, but it's double stack Tortuga that's getting my attention now. 𝙬𝙤𝙤𝙤, easy. Be careful. It's a tentative start, caution being shown. Yes, an investment of 2 players here. Flash ain't going to really dissuade too much. He's going to lean forward. Judge ready. Sides again sticking around too long. Scout destroyed. Easy place is pushing it. Yeah. This is what happened in esports. Positioning, aiming, decision making, all things matters a lot. That's Demon 1. Dry up short actually. Sometimes you just play on confidence, sometimes you just have to make a timing for yourself. Pick that back up. Get it. Filter it back through. Gain the confidence while EG playing. closer. Spike is here. This is the commit. There's still 2 players on this site here. Molly going to go through Mindfreak, hoping that's going to dissuade them a little, make him a touch uncomfortable, and gives him a fight. 𝙬𝙤𝙤𝙤 gone. At a 4v4. Jing on the back lines too, trying to wrap round towards this Mindfreak again. He can't do it again. 𝙬𝙤𝙤's got him this time. And now they're looking for the plant. Do they try and close the gap now? 𝙬𝙤𝙤 trying to get ahead though, getting aggressive. And EG just clean house. Double digits found here. 𝙬𝙤𝙤𝙤, the Yaar, only don't casualty. tell me. Wine पे PRX को जीतना है और क्योंकि लोटस पे शायद जीतेगी कॉल पे आते आते मे बी अगर बाइंड जीत जाएगी Where's that from? That can't be from in here, surely.
a bigger reaction than 10's got? Yeah, I think so. Damn. Must be nice. Yeah. 10-5. Locus back on the game now. PRX. Dude, definitely. Elon को I think पैसे देके बुलाया. 10 rounds. But I think that's a good advertising, because if he's there and everyone will like, yeah, okay, Valorant. I can't quite tell what this might be, people will play more game. Thank God. Don't find a crowd. I need more side tone. So it's a quality base, That's what I'm saying. Quality base. Full advertising, everything is quality based. I like it. Right? It's actually focusing on the quality. They don't like it. They need a more or very high base player base. They can get it later on. They're going for the quality. Tries to get ahead of that. That's not going to work out. EG get that first draw of blood here. That's why I think we have a lot of toxic players too, because I mean, baiting out. Everybody is waiting good. for the rotation, allowing a couple more seconds to pass before committing to the TP, but something hasn't budged. Neither has Jing. Rolling They've got the rifles. They've got rifles, they've got ults, and now they've got a couple of challenges heading their way. 25 seconds, EG need to stick the landing. And Jing standing ready. Paint shell over towards Showers, but he looks back towards Short. Forced a little deeper, he's got to be careful. And they're going around the map, they're taking the tour. No. Wait, he have ult? Yeah, something have ult. Ult it, right away, nice. Oh, they don't have a time. Team underneath and a bodyguard duty diving on it. भाई क्या हुआ? Holding firm, that ult I thought was the end of them. I mean, it can't get sent any later. That was as late as they could leave it. EG play the timing perfectly here to have two chances to plant the spike. But it doesn't even matter. EG find everything they need. It's a prime gaming flawless. To put EG on 11. Let's go. Good. PRX back down to a broken purchase here. SMGs, a couple of sheriffs, Forsaken's ult, but that's about it. As it stands, it looks like EG might be tipping those scales here. Oh. Now they're going to be forced. The nade's perfect. Further forward, and the spray. Oh, pretty, but the job's done. भाई ये तो यार अब ऐसा जा रहा है round. That was dirty. Mind freaking something in a 2v5. EG taking that last map personally. Didn't like that activation coming out from something. Want to put him right back down. And PRX unable to springboard forward. Not going to happen now. EG looking for their 12th. Looking to get onto that map point. They want this. And they're going to get it. Flawless round. Prime Gaming flawless. To get them on the verge of taking the lead here. Back to back. To find अरे EG बॉट डाला तो on उसको map टाइम आउट क्यों point. दे दिया लोग? They have just elevated in the last few rounds. Looking to continue those same sort of trends we saw on Split, but are happy to get aggressive. Just look for an engagement and commit to it. You mentioned that commitment earlier on. EG are doubling down. We're starting to see that come through here. Again, PRX do have a buy. They've got some key ultimates. This could be huge for them. A chance to deny, a chance to hold on. Maybe build back, who knows? But EG relentless. Look at this pace from 𝙬𝙤𝙢𝙤. He wants this done. They are also doing the way they do. He's looking at Lotus already. Why is that? EG with 3 more to find. Oh, this is Starting to get zipped up. Mind Freak looks dead to right. He is. Oh, 𝙬𝙤𝙢𝙤. भाई जो momentum मिल रखा है. And now it's all on Jing, and it's not going to happen. 𝙬𝙤𝙢 signs it. EG delivers it. They take the lead in the best of 5. An outrageous performance from Evil Geniuses. Absolute destruction of PRX, who come back out with a curveball, but it gets shut down, Lauren. I gotta say, with that performance, EG looking pretty poised right now. Hey, look. To potentially drive this one home. They've just taken the lead. I'm not writing it off yet. PRX still have a huge opportunity going forward. This is everything we wanted from a grand final. Do not go away.
Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? But we gotta find some way to save, so say hi to Glenn from work. Oh fuck man, I'm scared now. We switched to my plan from Verizon for just $25 per line. And that price is guaranteed for जीत गई? नहीं नहीं, अभी एक मैप, EG को एक मैप जीतना है और पेपर एक्स को 2. We're not gonna be needing you, so I'll see you at work. या तो ये फाइनल मैप होगा लोटस, या we will go all if Lotus won by paper X. Win by. Gives you wings. यूजी ऐसा कुछ नहीं होता यार. यार ऐसा नो, मेरे को बस अच्छी नींद चाहिए इसलिए पेपर एक्स जीते. पेपर एक्स जीती अच्छी नींद आएगी कसम से. लाइक ओनली फॉर मे बी 2-3 आवर्स बट अच्छी नींद आएगी. हाँ बट ईजी ने बाइंड में जो खेला है ना अटैक में, मजा आ गया देख. प्यार होता 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 ऐसे ही होता है. मे बी आई थिंक लोटस पे जेट रेस जाएंगे या फिर देखते क्या होता है, क्योंकि पेपर एक्स थोड़ा प्रेशर में खेलेगी अब. मैं कल का अलार्म तो लगा दूं. जिंग इंडियन है क्या? नहीं भाई, सिंगापुर. नेपाल का है जिम. लोटस में टीम इवेंट का बहुत अच्छा है. हाँ देखते हैं. सोया नहीं अभी तक.
Welcome back, everybody. Before we jump into the post-map, I want you guys to know how you can get even more from Valorant with the Xbox Game Pass subscribers. With their accounts linked, get access to all of the agents, yes, all of them, even new ones on day one, as well as a 20% XP boost on the Battle Pass and all event passes as well. Make sure you guys scan the QR code on the screen to link up your Xbox Games Pass subscription to your Riot ID and get those goodies. Today I am back here with Bren, Paperthin and 𝙬𝙤𝙤𝙬. That was a bit of a masterclass, wasn't it, from EG? Yeah, that was wonderful. I mean, the last time that they played Bind, they really struggled to deal with what was going on. They didn't have a great call. They were just sending it into the sights. Whereas this time it felt like the shoe was on the other foot. It was PRX actually that fumbled a little. Yeah, absolutely. I think this PRX comp might have been a little overcooked. I think a lot of this is set to do like anti-chamber things, like the breach stuns and the deep flashes and the teleports. We saw a little bit of that, but overall this wasn't prepped enough. It wasn't worked out enough for success for PRX. Yeah, and the big thing for me, I think, was those gun rounds as well, just getting one out across the board. I mean, just the fact that EG were playing off each other so damn well, and you could tell that the composition was a little bit undercooked, I think, by PRX in terms of them just running into this. It wasn't quite, you know, well versed or fleshed out compared to some of the other stuff that we're used to, but the coordinations are going to be a bit tight. I've been super impressed though with Comp throughout this entire run. I felt like he started out really nervous at the beginning. I was watching him in map 1, the way that he was taking fights. I remember a specific moment where he was struggling to be able to get around the corners. I mean, take a look at that all the way on the right. Game 1, dropping just over 100 ACS, really struggling. And then something awoke within him during Ascent. And on Ascent and Bind, he's been unreal. Yeah. I mean, Com, strangely enough, is actually looking like he could be an MVP candidate for the tournament because he was one of the players that got them to finals in the first place. I actually think that's a good take because everybody's talking about Ethan, Demon 1. Yeah. For me, if they're able to take this, Com would be my MVP. Yeah, I think that's very reasonable. I mean, the amount of clutches that this guy is winning across the board. I want to know what was said to him after map 1, in between map 1 and map 2, because it is a completely different game plan. But sometimes you need that, you know. Doesn't matter if you've been playing on the big stage over and over again. This is a very different feeling, I think, when you're into the grand finals. There's not many players on EG with that level of experience in terms of actually being able to perform here. I mean, they were there at Tokyo, of course. And they have earned a lot from that. Maybe that's part of it as well, and just being able to build up that resilience and being able to perform on the big stage. Yeah, the crowd here as well, as you guys can see as they're walking back out, they love EG. They've been cheering for them. But we have you, Paperthin. You're on the desk. Okay. You are meant to be PRX's lucky charm. They are 2-1 down right now. Come on, what do they have to do? We are doing this for Jing now. We got to at least get to map 5. This is for Jing. At least one more map. At least one more. So we've got some, you know, nice little portraits here to see if we can give them a little luck. See if we can give the PRX boys a little bit more fight. Is this the good juju area? Yeah, this is it. Yeah. This is the no Achilles zone. It's like you stole it from his family home. Like you just got pictures. Pearl is here and she gave it to me. Yeah. But also, it really is like trying to do it for him, right? It's his last event potentially before he goes off to do military service. And also, they've been in this position before where they came into a grand finals. They had the map veto advantage and they failed. In that series at Copenhagen when they played against FPX, they locked the breach of the Yoru alongside the Neon to try and make something happen in the final map. On Breeze towards the end, everyone was going, this is a wild comp, what's going on? And they weren't able to make it happen. And I feel like I got glimmers of that on Bind again, where maybe they're trying just a bit too hard to close it out and make it come home for them. Whereas instead, if they're just loose and they allow their players to find those individual moments the same way EG are, that might be a better strategy. And that's why I was concerned with something going off the Reyna, because he was really starting to heat up on Ascent, going over the behind, you know, this guy right here. He is absolutely, he's doing great so far, but yeah, we need to do it for Jing. But really, I think going back to the comfort picks here for PRX, I think is probably the better strategy for the rest of this. This sounds stupid to say, but they are such a vibes-based team as well. They don't have a dedicated IGL. They are all about, in terms of the confidence they've got, and Alex calling, you know, a lot of their ideas for them. We know how impactful some of the timeouts are when he gets involved with it. You can just tell it's just the way that their team structure is set up. They are so unlike any other team that we really have in just VCT in general. And I think big knocks to the confidence, like we just saw in Bind, it's so damn important now to pick yourself back mentally and get back into it. I mean, is that the soul? What do they have to do on Lotus here to make sure we at least see a map 5? Well, we don't even, at least I don't know exactly what composition they're even going to pull out on Lotus, because they've been trying different stuff over the course of not just this tournament, but, you know, their last few iterations on this map. Whereas EG, they've just made small adjustments and came out and brutalized Loud
on here, the team that took down Fnatic, I mean, they have worked on this map. We've heard it from Potter, how much work and effort they've put into making their Lotus not a detriment and making it a real strength of their map pool. So I'm concerned. PRX here need to come out with fire. I'm not sure it even comes down to any large picture strategic things, so much as the individuals feeling it and wanting it and bringing their best when it matters. Yeah, and that's what gave Loud a lot of problems when they played PRX on this map. It was like Jing blast packing at unexpected times, something grabbing both an op and a judge in that final round so that they had the flexibility to really kind of, you know, throw Loud's game off. We're going to need to see a lot more of that here if they're going to take EG down. I mean, it's the same thing for EG, right? They have a chance now for that trophy. They are so close. Brent, they need to close it out here. And they have been looking good in the past on Lotus, I think, as well. Those little adjustments they've been making, like we were already discussing. One of the things I'm most impressed with, I think, is just their calling on this. The bait and switches, you know, just poking and prodding towards one particular area of the map, making sure that they maintain control of another, especially on their attack side. They actually work the map of Lotus better than almost any other team, I think, at this event currently, just in terms of how they're able to force rotations. And it might just come down again to those big individual moments, like you're saying, Josh, you know, that form just being really nice. PRX, they don't get disheartened by that. Well, let's take a look here at the Prime Gaming Agent select. And this is the comp that PRX have decided to go for. What do you guys think? Yeah, I mean, this is what they ran last time. They've moved Forsaken over to the Astra. He said he preferred running Astra on this map instead of the Cypher, but it is still a little odd, and it's going to allow Something and Jing to really find those individual moments, but they need to grab those opportunities when they're presented. EG are such a good team, they are not going to offer you many openings. You have to take hold of each one. I'm a little bit worried for PRX. I think they don't show too much nuance in their attack side. You know, Lotus is a map where you got to, you know, take it in many waves, honestly. It's too big in terms of just being able to take the map control by all-inning at the beginning. And PRX love to all-in a lot. Lotus requires a bit of nuance. They might fall into a bit of a trap here. Yeah, and I think the big thing for PRX is they're not a team that's based on nuance. They're a team that's based on feel. They're a team that's based on speed and aggression, and EG's done a really good job of slowing this all down. Let's see if they can readjust and regroup here on Lotus. This could potentially be it, the map that changes everything for EG. PRX, they're going to have to dig a lot deeper than this, Pansy and Hypok, if they want to force a map 5. And I think all of us here would love to see the map 5, but they have to make it past EG here on Lotus. PRX is more than just the last dance. This could be the last chance to dance here for these boys. They have to pull it together. As said Jing, the final ride here to carve your name into a trophy, to take it the distance. It's a dream come true, but still EG standing tall. Champions select grand final. But now EG needs one win. It's going to be PRX on the attack, EG on the defense. We go one more time. And coming out of bind, you got to feel like the wind is in the sails for EG. An opportunity here to come towards. ओ भाई ये क्या कॉम खेल रहे हैं? वही ना. Of late. हैं? दोनों साइड वो भी. Out earlier on here in Los Angeles, did go to an overtime. What a treat that would be. Bit of a PvE mission to start things off. We'll obtain 2 orbs. Forsaken will have control of potentially the 3rd. Look how close they are to the side before contact. It's going to be Ethan on the chopping block. The paranoia is perfect. Forcing him away. You can see Forsaken. What? Oh, bye. Demon One adding insult to injury. He's still standing. Finally goes down. Finally. What's left of the 2v3, and it's vicious. Spike's not down just yet. Taking away something, and as you said, the Spike's not down. They haven't solidified this site. It's not necessarily comfortable just yet, and that's forced Divide into an unorthodox plan here. Booster has found a kill. Jing will fall, Divide will respond. Oh, nice. तूने देखा जो टीम पहला राउंड जीत रही है वही जीत रही है मैप. Exactly what the doctor ordered. You wanted confidence, you wanted momentum. मैं शायद से लास्ट मैप देख नहीं पाऊंगा अगर होगा. Shape of things to come, who knows? Look at that. Those 3 were everything. That didn't look good on the side, Mike. If I'm honest, before that plan went down, हाँ it सोने looked like जाऊंगा. EG दर्द भी होने लग गया. How is Ethan finding a kill? Shouldn't have done. But यार अगर ये जीत गई ना PRX मन बहुत करेगा क्योंकि पर्ल पे बहुत ज़्यादा चांसेस है PRX के जीतेगी.
बस momentum build up Very well करनी है. invested round 2 purchase here from PayPRX. Starting में PayPRX बहुत अच्छा खेलती है. हाँ. Just 2 away from the showstopper now. Com is going to be sat quite कम far away. passive और And Forsaken collective could be खेलता है. Yeah, good for one. Oh! Guardian spray. Forsaken makes mincemeat out of EG, who couldn't quite close the gap. I saw him. And yeah, Com, bye-bye. भाग रहा था ये. It's really clean. This is lovely from them, just to really ensure safety after that first round. I think one sheriff in hand, not really going to be given an opportunity to even find an exit here. So with how well invested this was, you don't want to see PayPRX necessarily charging down the skill. So good, Jing yeah. is 1 away from the showstopper. How much free towards no real pressure to do so, and a prime gaming flawless here in round 2, Lauren. PayPRX off to a flying start. This is fantastic for them. I don't think they can be happier with it. Nice little confidence booster, some Eco Cobra moments, yes, but you'll take them. You'll take them because it gets you feeling into the game a little bit more. Divide doing really well, Forsaken pumping up the numbers. You're getting really close to the showstopper coming out for Jing. You're 2 away from the divide. I think 3 off from those Seekers, so these are really key pieces. None quite there though for this round. Now do you see a challenge on the ult orb, maybe to deny that showstopper coming in? They look hell-bent on this one. Very close to the start. Surely they're screwed. How is 𝙬𝙤𝙤 alive? I don't know how he escapes that. Absolute Houdini inside the smoke. Jing will try and respond with the showstopper. Doesn't find anything. Closest down to one. And the paranoia landed. He knows he can close the gap. Ethan going to find at least divide with him. And Jing is nice. completely off the leash. Taking all भैया से फिर भी मार दिया उधर. 2 बंदे. Playing over by Waterfall. Maybe there's still a chance for him here. Third far away. That is still Forsaken. Spike planted. Spotted. Oh my god, what a snap. Takes away Mind Freak now, the final 2. Com was not near to this, Mike. No, he's on a late flank here. No surprises there. 𝙬𝙤𝙤 trying to run the clock down a little bit, hold on to his position, secure what he has. Forsaken gets curious at just the right time, spots down the flank. Okay, well, they found one that's going to force Forsaken a little bit closer towards the site itself. Com now wants to try and toy with that angle, see if he can play around this. 𝙬𝙤𝙤 trying to isolate that other player. The fight's there. 𝙬𝙤𝙤's got another, and it's on Jing. The man himself. The man of the moment. Oh, 𝙬𝙤𝙤. I think they got no. Does he actually have this? Have it. He does. थोड़ा सा हो गया. Between 𝙬𝙤𝙤 and Com, a crucial kill onto Mind Freak. 𝙬𝙤𝙤 just slows things down. Regains control of the situation. Planted. And the composure on display here. 3G to find their first. Nice, boys! That's the first. It's the break back in here for EG. Which are even Operators out for something. सबसे ज़्यादा risk है compared to others. Which could be very impactful, but look at the rest of the map. You're going to have Omen split towards that C side of things, and you've got the 3-play stack working towards B. Getting the lay of the land here. They're going deep on this Jing. Couldn't quite snap back for the first time, but it's Forsaken. On the second time of asking. Ethan now removed. He'll come through, Jing, nice and healthy. After that first engagement, something hasn't necessarily been given any contact over here yet, but also the operator hasn't been noted. Oh, 𝙬𝙤𝙤. Just firm presence here. Doesn't have a snake to slow this down. I think that's a personal way of expressing. 𝙬𝙤𝙤 did win out his fight, so there's still a chance they can do some damage. Why to the judge site has that? been won. Just being down. PayPRX can get that plant down. There shouldn't be much to deny it. Jing is holding on towards his doorway. It's something to deliver that 338 right to the chest. As Demon1 and 𝙬𝙤𝙤 trying to do anything they can. It's not happening here. PayPRX are gripping onto this round, Mike. They're not letting this one slip. Demon1 forced God, nice one. to head for the hills. 2K in the bank, a Vandal in hand. Wants to try and hold on to this. PayPRX find their third, coming right back out of that loss on EG's buy round.
Curious. Jing was going to have an opportunity at the start of this round to try and farm some orbs once again. Not necessarily look as if that early intention has carried across for PRX just yet. Showing a bit more pace in terms of collapsing towards one of the extremities. But now with the operator in play, there's something soul task to control. यहाँ से 1.5 घंटा लगता है तो मुझे 11 बजे से पहले निकलना है। मतलब कि मैं 10 बजे उठूँगा। चेक अभी मान लो 5 बजे सोऊंगा 6 7 8 9 4-5 घंटे की नींद लेनी फिर लैन खेल के आऊँगा या तो आके थोड़ी देर सोऊंगा नहीं तो फिर स्ट्रीम करूँगा और फिर रात में जल्दी बंद करके सो जाऊँगा फिर परसों शायद कल शायद करनी पड़ेगी क्योंकि कल आई थिंक मैं हाँ लेट करूँगा 8:30 बजे शायद करूँगा अर्ली PRX in a position to capitalize, find some space on the other side of the map. Com has to respect this. Look at this. 𝙬𝙤𝙤𝙧 actually brings it down to 45 HP. A gorgeous side take though, everything accounted for. Crossing the T's, dotting the I's. Yes, they know they're up against probably a broken buy, but they're still so methodical. One's going to go down. Now they rescind away from the site slightly, actually. Tell a lie, they're leaving at least 2 players still towards us. The lockdown going to be coming in as well. Lockdown. Oh no, run bro. The Seekers just went through, flash to force Jing away. Gap now closed, but they need to close down these kills. 𝙬𝙤𝙤𝙧's the one to do the first, but look at the response from something. Instantaneous and clear cut. 𝙬𝙤𝙤𝙧, what is going on? Oh my god! What? Has he got time? Is? He's got so much time. He can't believe Even he can't believe it. Look at the expressions. Run it back for us. I don't know how the hell he Ace मार दिया. He doesn't know. इसने Boost. Give me that replay. Boost. Please. They had 1 rifle. Okay, fair enough. That's a nice start. Oh my. Yeah, that's. एक करके दे जा रहे हैं पीक Yeah. पूरी है भाई quarter. I agree, He's already got 6 out of 8 on board. Yep. What a ridiculous round. And 𝙬𝙤𝙤𝙧 had some of his biggest tests on this map historically. He's been bullied off this map. But now, what a time to come alive for him. We've seen that within the past. PRX going to be reeling a little from that. That's going to बाकी देखो अगर टीम खेल जाती है तो हो जाता है नहीं खेल पाती तो और शायद से मेरे को रीना PRX to slow things down just a little bit. Something. Oh! हंस रहा है वो something. अरे वो भी सोच रहा होगा. And he's found a kill from it. लॉल वो भी सोच रहा होगा साला इस मार के कैसे? Sorry इस करूँ किल. पर फिर तो अब ये लास्ट था जो हमने देखा अब ड्राफ्ट ऐसे एक ही रहेगा अब. Very comfortable. अबे यार ये जोजोमो यार. No, Mindfreak's in an awful position. Rifle sticking out. A little nervous because they're locked into the site here. And there's a showstopper now. And the paint shell. 𝙬𝙤𝙤𝙧 can do so much Hold damage. करेगा वो. Pressure from Tree, going to clear that through. But the other two haven't been able to make it really towards the PRX pressure. Many of these post plants. PRX fighting for that CT space. Now let's see who gets the connection. 𝙬𝙤𝙤𝙧 still with the rocket post, but something's going to trade out, take down Com, and now it's all on 𝙬𝙤𝙤𝙧. A 1v3, a fabulous attempt. जोजोमो मार क्या रहा है? चलो आ गया. भाई मुझे लग रहा है जीत जाएगी PRX कर लेगी. Managed to get another posted. भाई तूने अब ये बोल दिया ना. क्या? यार जब भी तू बोलता है यार हार ऐसा कुछ नहीं होता अब तू ऐसे बोलेगा तो हो जाएगा. चला के ये. A tough way for the round to start there. ऊपर से उड़ता हुआ था रशियन का हेलीकॉप्टर. Couple of rifles here for EG though. Com and 𝙬𝙤𝙤𝙧. देख लिया.
We wanted to see PRX putting up a fight here, showing their resilience. They certainly are. Com, however, he's dug out the lurk so early on. Yeah, this is on a solo mission. Look at the minimap, by the way. That seems almost counterintuitive, but it works. That's an upgrade for 𝙤𝙤𝙧𝙚 to come and find. And now, actually, you give Com a second body on the flank, potentially. Something. Careful. You can see EG chomping at the bit here. They want to get in for a brawl, Oi. for a fight, and don't challenge 𝙬𝙤𝙧𝙚 on this site. He's gone down. 𝙬𝙤𝙧𝙚 something in unison, trying to clear through this. Get some safety for a block, but it doesn't feel very safe right now. 𝙬𝙤𝙧𝙚 on the hunt, though, wants to secure it. Takes away by Waterfall. He's given themselves a second. I mean, barely. Just look at 𝙤𝙤𝙧𝙚 straight here. Oh, the pressure! They're still going! Oh! You are ridiculous! भाई ये कर क्या रहा है भाई? EG weathering the storm! God. Evil Genius is starting to convert a few rounds that are फिर से नंबर 1 भाई फिर से मतलब PRX-esque. फिर से कैसे A MasterCard thrift अच्छा इंडिया नंबर in round 7. आसान नहीं होता भाई So quick to shut this down. लोगों को प्यार से हो जाए And afterwards, PRX, although they're still भाई push takes castle का they can't secure it. Desperately trying to claw into it, but man, fighting both of these teams here. 𝙤𝙤𝙧𝙚 getting a little bit dicey as well, pushing so deep. Look how far he's progressed here. They're peeling away from it. He's backfilling the space so perfectly. They had no clue. Now with the paranoia saying they might try and speed up towards A. This plays in com. Still has the Viper's Pit. Just going to come भाई through. मोमोज ही खाऊंगा आपसे कभी ओ भाई भाई क्या मारा है इसने? हाँ He saw something else, apparently. That is ridiculous. And that was the one tool for EG to heavily anchor towards A site. तो ये सोचने से अच्छा मेहनत क्यों डिपेंड कर रहा है कि दूसरे लोग लेके जाएंगे क्यों जा सकते हैं सीधा ही मत सोचना इस चीज को पहले इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग कर फिर अपने आप हो जाएगा ओ भाई भाई इसको कुछ हो गया है क्या 𝙤𝙤𝙧𝙚 has no idea. Mindfreak closing the gap. He's looking this way. Turns around. Time is running low. 𝙤𝙤𝙧 needs to clear him. He does. Time but is the time, it's five. too little, Nice. too late. PRX off the back of भाई genuinely डिलीवरी something I've never seen. तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो The worst thing is, he's just on autopilot. He just walks up to the pit. भाई क्या था भाई आपने भी हक दिया होगा पैंट में I mean, you can barely catch a breath in some of these rounds. ये something ने crucial pick लिया एकदम And it's heartbreaking as well. That's the one thing as well. Com, the timing is perfect for him. Yes. Maybe something's a जिंग ने little तो ahead of the चश्मे curve भी in लगा that लिए regard, but You don't expect that to happen. बहुत से again, चेंज no कर fear लिए of 5 anybody बार चश्मा भी swinging लगा through लिया from arches, pushing stairs, nothing coming through from Link. Yeah, one kill to define that round. थकते नहीं है क्या इतनी गेम खेल के क्यों मेरे को नहीं देखा भाई मैं तो जंगल स्क्वाड के साथ ही खेल के 2 गेम में ही थक गया भाई इतनी बसड़ हो जाती है Careful, he doesn't need to see you to kill you. भाई इसके देखियो स्क्रीन के कितने पास है ऐसे ही लगते हैं वन टैप But at 3 to 5, the scoreline is still close, right? It's not like there's a huge buffer for PRX, but it's enough that they can just take a breath here. As highlighted by the desk and all of us. This is putting your heart and soul into a performance, because this यार will मैं be probably लेट one रहा of हूँ the final बेड times पे we ever see सो जाएगा अगर लेट गया as तो it is. भाई देखते देखते ही सो जाऊंगा So to go down with a whimper would be underselling how good this roster historically has been. And right now they are putting up a fantastic fight. EG on the other side claiming 3, just coming out with timeout now. Elon hack computer. Retrieve the Zorb for 𝙤𝙤𝙧𝙚, showstopper now. Available. Com actually anchoring towards C here with an Odin. Feel the heat a little bit here. Something's
follow through on the Trailblazer. So maybe something tailored towards the retake here, though. I've got your trail. Oh boy. Oh my good lord. हाँ भाई इधर ही खत्म करनी Good, spikes down. Ish. Ethan trying to catch a second worth of timing there, but it gets closed. Very aware of that possibility of a late lurk coming back in through B, but अब आएगा for second really needs one to try and break हाँ this to flash कर दिया ना this उसने big opportunity. So they're trying to clear through the site, and we can see that mostly PRX are playing offside. There's that late challenge. हाँ यार Vandal versus Bulldog किस्मत खराब है यार 𝙬𝙤𝙧𝙚 ain't stopping. Someone needs to stop 𝙬𝙤𝙧𝙚. Someone needs to stop 𝙬𝙤𝙧𝙚. वाह यार Now the round, PRX unable to convert the post plant on C site. The first one, the lockdown, just one rifle on the other side of things. 𝙬𝙤𝙧𝙚 gets away with daylight robbery here. कलर कुछ ज़्यादा flashy है wait I can do one small thing and won't make it Bulldog in the hands of Forsaken, judge for 𝙤𝙤. Actually, yeah, that's not perfect. Something definitely especially shut down off the rim. Once you read into that, though, you're going to have to try and dismantle this three-play stack and get over towards the other side. Because PRX, well, not almost just instantly punished, but they paused for a second. The stall from Com enough to make them respect this, and only for a moment. Com has to evacuate the site. ही रहेगा But can they hold the post plant? They're still not fully in. It's just 𝙤𝙤 trying to take that space for them, secure some of it. Mind Freak looking to punish. maybe वो zoom कर रखा है ना मैंने वो zoom हटा दूँगा after watch I mean, they're hitting the rotate once again. It's 𝙬𝙤𝙡 though. Not a big performance from him here, but Oh, there's a Guardian, and of course that's a भाई ये headshot. flick ऐसे ही मार देता है Oh Christ! Give me that perspective right now. Let me watch 𝙬𝙤𝙡 here, please. This guy is just horrific at this. Oh, he's been backhanded this time. Device had enough of that. All right, 3v4 then. भाई यहाँ पे ये राउंड आ गया ना तो बहुत सही है बट बहुत मुश्किल होगा 4 versus 3 में ये ले यार ये 𝙤𝙤𝙧𝙚 को देख भाई देख भाई ओ भाई भाई इसकी सेंसी देख Another level here today in the grand finals. And he's not the only one for EG by any stretch. But looking so damn good on the raise. 30 seconds left. One enemy remaining. Beautiful cleanup here. भाई EG deserve तो कर रही है भाई. Feeling himself as well. Alex तो भाई हो गया. सो गया. Spoiler alert, that's not Potter. Yeah. But I don't know, he's not getting it. Like थोड़ा बहुत तो aim diff भी हो ही रहा है ना वो aim पे खेल तो अच्छा रहे ना. PRX वालों का अच्छा है और aim. नहीं बात aim अच्छा है but उनकी positioning भी अच्छी है वो सब कुछ है. Like दोनों टीम अच्छा कर रही है no doubt. कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि one side दिख रहा है हमें. Like EG is more powerful than PRX. Dude, इन्हीं की टीम है वो है. Yeah, PRX जीतना चाहिए यार. A number of rounds just feel really uncomfortable for PRX. And it's like a scrambled decision on the back of maybe Forsaken falling. Something in this example. सब लोग चाहेंगे कि PRX जीते. And they're rushing C. And then they can't find site control, so they back out and walk back into a late A. It's so bizarre to watch and not a situation we usually see. PRX in they very rarely back down. It's usually full commitment, whatever they do. And look at this, the Stinger, the Guardian, got what they can, and it ain't much. It's not a full buy, it's not a full force. Ethan and 𝙤𝙤𝙧𝙚 looking to pop from this. Yeah, high flash, 𝙤𝙤𝙧𝙚 swings. They're challenging on the ult orb. They don't want to allow it for free, but fortunately for PRX, 𝙬𝙤𝙧𝙚 पूरा W की. कभी बैलेंस टीम है कभी तो फाइनल्स में ओवर ब्रो. No doubt दोनों टीम फाइनल्स में क्यों हैं.
They need a kill. Nice. Got him one. A second. Not going to be happening. Demon one overwhelmed in the end though. Jing is there. Sight looking a Nice. little ये bit better. जॉर्ज में को मारना था Desperate बस. to get scrappy. Desperate to hold अब निकल on. जाएगा Ethan राउंड. doing the damage from the back line, taking down 𝙬𝙤𝙬𝙬 though. And now into the 2v2. और They're trying पकड़ to के. remove Ethan. They've got who's here. अबे यार. इसका पोजीशन नहीं पता. Spikes planted. They are both locked towards the site and on this corner. He's found one. Nice. ये हुई ना बात for second. भाई मैं ये सोच रहा हूँ अगर EG वर्सेस Fnatic हो जाता तो A Mastercard thrifty. नहीं Fnatic plays on game like game sense and mind games करती है. But nah, I think this is more PRX versus EG. Finds the opener on com. After that, भाई उसको stunned करके मारा. to find Ethan. No stone left unturned. No room for chance. Even if you are 1800 times, you still can't say They can try to catch somebody. Yeah, no, Off the start here. PRX very quickly. They're collapsed outside B here. But there's 3 players. But Pegasus, They're very ready for this. it's really annoying you are doing. Something going to get close. Try maybe play towards connector or dip a little further forward. But look at Boostio waiting. Shorty in hand. Something's got nowhere to go right now. Just trying to take some control, take some space, and drop him 3 on behind him. There's a chance for some serious damage. Oh भाई मार गया 2 मार गया बढ़िया. ये है यार high sense मेरा. Holding on to this matchup here and giving them the man advantage. अबे high sense मतलब favorite player मेरा. Thank you. Still behind. हाले तू चुप बैठ. भाई मैं दोनों सेंस में मारता हूँ ना. टेलीपोर्ट हो जाता है. हाई में समथिंग जैसा और लो में लॉल. नाइस नाइस जिंग मेरा भाई. अभी रुक जाए ये भी है भाई. इन्फो पता है उनको तो ये आ सकता है. से एक दरवाजे से आप बाहर नहीं आ जा रहा. You in a bad Jingu. 7-5. अब बताएगा ये वाला मैप. ये बताएगा डिफेंड में हो गया. 7-5 though, after what's felt like an uphill struggle for PRX. Definitely going to be feeling good अब about देखते हैं that. भाई A good recovery अपने डिफेंड में लोग क्या the final rounds. सॉरी अटैक. It could not be closer though. 5-7. This game is truly heating up. Analysts, what you making भाई of it मैं so तो far? यही ध्यान नहीं रहा अटैक डिफेंड क्या चल रहा. Fuck. We're on the edge of our seat here, Brent. ऐसा लग रहा था दोनों एक. I couldn't believe how scrappy that was, honestly. Every single round it felt like was working with the bottom of the barrel purchases. I mean, the Guardians, the Stingers, everything, because it was just back and forth, back and forth. No team could build up any economical advantage at all. At any point, you can feel how much both of them just want to either bring it to that map 5 or make it decisive and just win it out here. Yeah, we saw some great moments from Boostio as well. If we check out the HyperX reflex moment of the day, an ace in round 5, and the 𝙬𝙤𝙬𝙧, we've seen a lot of aces in this tournament. We have. This is the 20th ace of Champions 2023, and that means it's officially the most aces we've had at any global tournament ever, which is just ridiculous. I feel like every other round we've had an ace, just somebody popping off. And this one from Boostio just came Mostly out. सारे not crosses. Yeah, वही तो. Who otherwise looked like they were getting bullied by PRX, and it's been a very competitive एक half. Boostio dot पे है, something dot पे है, the white dot पे है, demon one dot पे है. EG has been doing. I mean, I can think back to that last round there. As soon as PRX goes towards C, immediately EG is hot on their heels. And if it wasn't for the fact that PRX are kings of W key gaming, they would have gotten backstab real hard and possibly lost that round. Yeah, and I gotta say, EG, I gotta feel they may feel like they've already done enough with this half in terms of it. Yes, they're behind right now by 2 rounds, but they're moving over to the attack side. I think EG's attack side calling is fantastic. They have an opportunity to really just cement themselves in the history books here. Remember, at the beginning of the year, this was a team that everybody was underestimating. They were at the bottom of the rankings across the board. They still are so damn close. It's one map that stands between them and cementing themselves in the history books. Well, this could be the last half of Valorant we see here at Champions. KFR, make some noise as we head back into the second half. Deep breaths now. 5-7. It's a lead for PRX, but it's a fine one. It's not enough to rest on your laurels for. You know the EG are fired up. They still
sit I at a haven't slept 2-1 yet. scoreline Good morning. across the board with this win here. They would become the champions. You won't So say for good now, morning, PRX maybe. still cannot relent Can for I a ask you one second. question? Yeah. Keep it cool. That's how you survive. G, chance here वही तो question to था. tie things up, starting with a pistol. Blinded. भाई इस टाइम पे हगने का क्यों मन कर? Heavy emphasis towards A and Rubble on the side of PRX. Yeah, on the side of things, Forsaken. I guess faking heavier presence elsewhere. Runs forward and just pops the door. He is commanding so much space right now. EG, very patient in approach, not really indicating too much just yet. Forsaken will be the one to notice this first and foremost. Now he's got to run. Get out of there. Call for support. फेक करेंगे भी जाएंगे. Start their first couple of steps, but ओ लाइक ए जा रहे भाई साहब. वो रोटेट ही नहीं हुए. Oh, nice. Nice. Let's go, PRX. Good job. बैठे रहो उधर अपनी. ओ भाई भाई. बचा भाई वो. भाई अभी भी किक कर रहा है. अरे यार ये जो में वो जिंग ने देख कहाँ पुश कर दिया उस. भाई इंफो दे दे भाई प्लीज. हाँ सी आ रहे. ओ भाई ये ले गया लर्क ले गया. शिट यार ये नहीं करना था बस. एक भाई बग लेगा ये. नहीं यार यहाँ पे 4 सेकंड को एक लेना था. The safety net in Boostio's lurk pays off for EG. New camera A angle. 4v2 New now. mouse Boostio will even be healed yeah. up. No smokes. PRX have to almost fight here. Commit to If it was loud against PRX, then I think I mean, we are honestly speaking, EG, PRX both are sorry, EG, PRX both are amazing. And both deserve to be on this grand final. Trying to funnel their way through. It's almost a death funnel. I think these two teams are showing that other teams are not that strong. Maybe. Said, the response is so fast from EG. Boostio feels a little bit of space. That's a good read on the situation as well. Forsaken just overwhelmed there. But this is when the adrenaline starts pumping for EG as well. You get a big round like that, you do some big damage here as well. Boostio still popping too. This isn't a round you're looking at PRX to potentially win. This is a very difficult round with just pistols. You're not going to see them in a similar sort of look. So you know this is probably a 7-7 scoreline. EG knowing they're really turning those screws, making it hurt. PRX trying to stack up towards B, but I mean, look at EG. They're waiting for this wall. Yeah. Continuously we see the anticipation from EG. The reads generally have been on point. The flash out, not going to amount to too much. Oh, it's a massacre. It's an absolute massacre in middle. 𝙬𝙤𝙧𝙚 can't do anymore. He absolutely can't. Demon won there. Gonna get him past it. Prime Gaming flawless, but the bigger picture here, Mike. We are tied up at 7 apiece. Sure, and I do want to see if EG continue putting this same wall over towards A because it actually enables this spam off the rip. And something like 𝙬𝙤𝙧𝙚 can maybe just double sat you out. It's actually him with the air. He's not going to be seeing anybody spamming off it initially here. भाई ये रश करने वाले हैं. नहीं दो यहाँ हैं तो वो नहीं करेंगे. भाई 4 जने ए पे हैं, बी पूरा खाली. Still happy as 4 to continue fighting for the space. Forsaken's on an island. Again. This makes me. I mean, he's capable, but of course he is. It's Forsaken, but he's got 5 against him. His teammates are on B. Maybe you need some help here. Someone bail out Forsaken, please. He's trying to stand and fight, but there's an army in his way. Thank God he got one though. Gonna get an upgrade, but trying to get quick to a Jing. Tries to deny him, slows him down, holds him back. Oh यार नहीं उसको पीक लेना था. वो अल्ट था ना टीम के लिए कर रहा था वो. यार ये मार देगा. Posted through here something. Lucky to be ओए alive. देखा नहीं. What's he doing? The paranoid's gone in. He's just standing there. 𝙬𝙤𝙧𝙚 punishes this. And now down to 2. Mind Freak and 𝙬𝙬𝙧 need to dig deep. The plant's not in. They've still got a second to work. You can see 𝙬𝙧𝙧 trying to have a little look.
See if you could spot out where Ethan is. They're creeping closer. There's nowhere safe in this Mind Freak with a huge pick up towards Ethan. 𝙤𝙤𝙤 still standing. It's a 1v1. अरे यार bodies मारी ना उसने head मार दिया बस यही फर्क था देख रहा है Punishing PRX on the buy. The bonus round conversion here in the second half of Lotus. Absolutely crucial. Last player standing. Ow. EG want to drive things home here. Two away from the Seekers. Cosmic Divide online here. PRX back down on a busted buy. वो तो भाई obvious है ना. Capable team, but this is so difficult for Forsaken again. Left just so alone. He couldn't have the support in 𝙤𝙤𝙤. Running through him now. And they can just pump the brakes, they can relax. I think आरे उसको deserving है क्योंकि he knows कि इसके बाद ये PRX जो है roster change होंगे थोड़े से क्योंकि जिंग जा रहा है फिर देखते क्या होगा ये सब ना. मेरे को लगता है वो पुराना वो नहीं था शीबा maybe. Two stingers of Sheriff in hand. You never know who will be. Oh. Desperately trying to avoid detection. Maybe survive for the time being. Mind Freak will fall elsewhere though. And a formality, the paint shell will find it. It's clinical. EG starting to believe. Starting to feel that finish line. See it on the horizon. Something's down. It's 9 now. We're getting closer. PRX. Confidence है भाई. Is this the final stand for you? This purchase here is everything, and that's why there's a timeout. They have a 4-buy. But Mike, if it's not now, it may actually just be never. I mean, sure, they'll have another chance, but the thing is, it's how close they are to ultimates here in this one, and how one-sided the last couple of rounds have been. Operator online, something Manan, लगता है अगर ये PRX ने कर दिया ये मैप तो फिर वो जीत जाएगी. I think EG now have figured मेरे को ऐसा लगता है कि अगर PRX ये वाला गेम जीत गई ये मैप तो मैं देख रहा हूँ मैं सो नहीं रहा. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब फिर मजा और आएगा देखने. अरे वही तो होगा. 9-7 है अभी भी जीतने के चांसेस हैं. Very concerning. बस जैसे बाइंड यार बाइंड पे कॉन्फिडेंस हो रहा है यार बाइंड पे 13-5 यार. Absolutely. I mean they came into this map so confident. क्योंकि पर्ल इनका स्ट्रांग मैप है और ये डबल डुलिस्ट जाते हैं. And the way in which some of these players from EG really elevated as well. A huge positive for them. This is a big crossroads for PRX. A gut-wrenching round. The operator has to be pivotal. Something has been given them a couple of rounds, to be fair. He has been fantastic, but they need him now. A 9-7, EG on the verge of double digits. One away from 𝙤𝙤𝙤. They've got the divide, plenty to play with, and it looks like Divide will be the first tested. Got to be careful towards A. They try to reinforce maybe towards Forsaken. I love this. They fake out a little bit. They're walking out. Forsaken being read as the solo I anchor on C here. So wanna make a deal. I will watch every single stream of yours, and if one day this Divide, the solo anchor here. I don't even remember that. Close the back door. EG have got themselves a wide open sight here. They do, but note the utility for PRX. They have plenty to play back in with Mind Freak fully set. Device still with the dog. Okay, seriously. Jing fully kitted. See, that's the thing. I don't stream just for like people. I stream for myself too. But Jing's made it ahead. 41 HP and a bit of a dream here. He's trying to play towards the back line, break 𝙤𝙤𝙤, break Con. I don't care how much viewership I get. I know 1 or 100 doesn't matter. Do it for myself. And if one person is coming, I don't see it as a viewer. I see it as a friend, as a gamer to gamer. Defuse started and 8 stopping takes him away. Nice. Mind Freak survives. He's got back on it. Well played. Oh yeah. PRX live. निकल गया. भाई मैं ढंग से नहीं देख पाया.
बहुत हो गया यार, कुछ बता अब seriously कर भाई। मैं देखो आयुष, तुझे लगता है इंडियन नीड्स मी, ठीक है, बट if 80% people think like I should be in this world, I will be. मैं अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अब तक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ इतना कि इस लेवल तक आ जाऊँ। खेलने को मैं टियर 2 टीम में खेल के टियर 1 में आ सके और नेशनल तक खेल सकता हूँ, बट जो इंटरनेशनली हो रहा है हर प्लेयर्स के साथ, इंडिया के हर प्लेयर्स के साथ, ओरेंटाइन जी, एनिग्मा, जो भी सब वो तुम देख रहे हो ना, तो सेम मैं भी वही चीज हो रहा है, मेरे को वो चीज नहीं करना। आई वांट टू बी मोर एंड मोर लाइक इतना स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ओह ये थोड़ा रिस्की है यार। मार दिया, नाइस यार। क्या मर गया भाई वो? अरे मैं नींद में, मुझे लगता है कि मैं अभी भी पेपर एक्स अटैक में, ऐसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। बेड देखने में इतना कंफर्टेबल लगता है कि मैं सोच No commitment on the back of things. 60 seconds still left on the clock. Plenty of time with Ethan spike in hand. मेरा अचानक से सर दर्द चला गया। I don't know. Over towards Mountain. It's very indicative actually there's nobody on the other side of this now. वो होता है ना कि आधे घंटे के लिए ऐसी नींद आती है, वो जब चली आती है तो नींद एकदम से वो हो जाता है। मेरा मन कर रहा है खेल लूँगे। हिम्बिल करोगे या साइन? मोस्टली साइन। ऐसे रैंक सीरीज भाई मैं हर दिन ट्राई करता हूँ। अभी मैं लैन तभी तो खेल रहा हूँ, छोटे मोटे लैन क्यों खेल रहा हूँ? क्यों लो सेंस पे खेल रहा हूँ? Let's go. नाइस नीड, नाइस नीड। भाई वो लो हो गया, देख 50 HP, मर साले मर यार तू, शाबाश। ओए वेल डन। यार खेले यार पेपर एक्स, ये था पेपर एक्स, यही मेरे को देखना भाई। एक घंटे से चचूरों के तरह खेल रहे थे, अब आया ना पेपर एक्स, नाइस भाई। ये तो बहुत दूर की बात है, मतलब यू कैन से इतना ही खेलना है, ऐसे ही खेलना, या तो इंडिया का बेस्ट प्लेयर या इंटरनेशनल टीम सोचने लग जाए कि इस बंदे को लेना पड़ेगा। देखते हैं। घुस जाता है मुंह में। ओह That's 2 consecutive retakes here. APAC 1, America 1. वाओ। देखो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं ग्राइंड कर सकता हूँ बहुत, तो और अडैप्ट जल्दी करता हूँ, तो मेरे को अगर मैं किसी टीम में हूँ एज अ 6th भी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ये भी तोड़ता होगा। मुझे अपॉर्चुनिटीज चाहिए, चांस चाहिए बस, और अगर वो नहीं मिल रही तो मैं बनाने की ट्राई करूँगा, बनाने की इन द सेंस कि और इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग करूँगा, ताकि लोग और टीम सबके उसमें दिमाग में है कि यार हाँ है कुछ तो होगा। अभी सिर्फ 50-50 है कि यार हो सकता नहीं हो सकता। भाई ये रीड अच्छी आ रही है इनको बस, और वो हो रही है यार ये जोगमो यार, ये भी एक और मार देगा यार। बस उसको देख, ग्लो देख कितना सही जा रहा है। हम तोड़ने आ रहे तुम्हारी। Mind Freak cognizant of the possibility that Comp is here. The spike finally making its way onto site. It's all about timing. He slipped through. Could he deny the plant? The paranoia is going. Does he play off the back of this? Doesn't see it on the standard spot, but it's gonna do some damage. Take away Ethan. Chip away, but it's still just 3. And with the operator, it's brutal to try and play it. 𝙬𝙤𝙤 getting aggressive. यार ये नहीं चाहिए यार, ये 𝙬𝙤𝙤 भाई कितने मार गया वो यार। कभी इनमें से कोई साला 4K करता है, अभी तक इसने कर दिया 4K, डीमन ने कर दिया, उसने एस मार दिया। बट अभी भी जीत सकते हैं भाई। एक काम करो, इनको बोलो कॉम को टारगेट करे, 5 किल है उसके बस। ये गोली मारता है फिर स्विंग करता है। Come on baby. Yeah, that energy starting to show round by round here for EG. आ गया, देख कौन से देख सैचल कितनी जल्दी पहुंच जाता है, ये देख खुद ही जा रहा है। ऐसे खेलते रेस।
फिर देखा अपना रीज कान पे लगाऊंगा तेरे को अपना रीज देखा वैसे डबल सैचल कहा जाते हैं जाऊंगा ना मैं भाई इसको डबल सैचल नहीं आते सिंगल सैचल करके जा रहे हैं feeling the game perfectly, and he's so deep on this. They have no idea. Maybe a consideration in Mindfreak's mind. He's turned to take a glance, but he's seen a देख लिया ओ भाई थैंक यू माइंडफ्रीक बढ़िया यार माइंडफ्रीक तू तो मत आ गया यार EG take that with both hands. Mindfreak saw him, and there was no reaction. ओ लॉल वो प्लांट देख कहां हुआ अबे यार क्या प्लांट है रीलोड हुआ तुम्हारा सारा यूटिल तो प्लांट पे है भाई ये क्या हुआ अबे मेरा ये हैंग हो गया अबे यार नाइस क्या नाइस कम ऑन Fuse doesn't get to halfway. He's been taken away from it. Forsaken with क्या the second यार? attempt. Look who's here. You didn't turn around. You didn't check behind you. And of course, नहीं ये हैंग क्या हो गया था भाई देख नहीं पाया मैं 11 on the board, Lauren. PRX नहीं यार 11-9 against the ropes now. चला जा भाई हो गया भाई And keep your eyes on the right side of that scoreboard. Look at the money that's going to be left here. And the enemy was punished. It's starting to feel like the home stretch here. The atmosphere is changing, Mike. You can see it in the confidence. Just look at 𝙤𝙤𝙤 the way he's playing. They can start tasting this. Can PRX stop it? Can they hold anything? Oh! Straight out of the sky! Boy! नहीं भाई ये भाई कोकेन करके आया मैं बता रहा हूँ तेरे को कोई ये मत बोल ड्रग टेस्ट अरे ये मत बोल भाई भाई क्या कर रहे हैं यार Painshell goes in. Fortunately for Forsaken, gets a second shot at things there, but couldn't quite get it ready in time. The plant's going to come through, and the gap's getting close. Solo again. He is traded this time. A 3v3. Jing wants in. He gets in. He takes down Ethan. He's got the sight. Demon won on the trade, and now the 2v2. 𝙤𝙤 held back. He can't get there. He has to try and get past Com, and he's just not letting him through. Com takes down 𝙤𝙤. It's on Mindfreak now, or it's 12. He's looking for it. He's desperate for it. Can he save PRX? नहीं यार जी चलो भाई मैं जा रहा हूँ Good night. Good night. Championship point for Evil Geniuses. The response comes through 3 unanswered. And we talked about the concerns. Please come back, please. Is playing Something. a different game right now. This is the chance, man. You saw him totally messing with expectations previously. Let's go. Let's go. There's gaps in the purchase here, Lauren. PRX, they're going aggressive. They're trying to pick themselves back up off the floor here. They've taken the space by A, but there's no one there. So it's Forsaken on the other side. He's trying to take a challenge, but he's put down to 25 HP. Slips away towards CT. 𝙤𝙤𝙤, of course, going to take any space given to him. Giving him in, she's going to take a mile. Painshell to supplement. Viper Spit is up. The brutality of this round is truly kicking into effect. 𝙤𝙤𝙤 trying to face down 3. And now the time is on EG side. And they have a vice-like grip with the Viper's pit set up here. The divide will go up as well, cause more problems. PRX, though, they're looking to get aggressive. Jing, desperate for it. He will do everything he can for his side. For that one last time, that one last round. Mindfreak towards Boostio. They're trying desperately. They still need to get towards the fight. It's all on Demon 1. हो गया 12-10. Come on. Diffuse started. Yes. दो राउंड और हो जाएगा भाई हो जाएगा A lifeline delivered. बस 2 राउंड और बस 2 राउंड unable to drag this one across the line. They threw the भाई ऐसा लग रहा है there. सीरियसली ऐसा लग रहा है इंडिया की टीम है भाई Going straight for the jugular of PRX. चीन की PRX साले सो मत तू जा अबे हाँ तू जा सोने तू जा तभी जी भाई चला जा मारूंगा भाई जीत गए भाई अब छोड़ो यार अब मैं गेम एंड करवाता हूँ यार एक बात बता PRX जी जो वुमन खेल रहा फायदा है Take a moment यार to consider the situation here. भाई प्लीज अपनी जगह से लो मत
EG on the brink of finding a 3-1 victory over PRX here. यही गलत To be जगह पे crowned टाइम the आउट आ गया champions, Lauren. नहीं अभी भी है. अब देख पता है पेपर एक्स में क्लियरली कोई ना कोई कहेगा भाई guys just 2 rounds, let's do it, come on, it's fine we lose but we will fight our best. Turn away from a Cinderella story. It started out in NA, all the way through to Tokyo, and then potentially here. See for strong paper X. But And now it doesn't matter, bro. Everything is strong. That's what we're doing. PRX, there's any team who can dig deep, Good morning. who has a reason to dig deep, to take us to OT, to take us the Oh, distance. कितना pressure होगा players पे यार. Do they have it in them? Do they have the drive, the will to push through here? We're about to find out. The problem is कि उनमें से किसी के पास अल्ट नहीं है और अगर पेपर एक्स को ये राउंड आता है तो उसके पास वहाँ से बोस्टो के पास अल्ट आ सकता है और जॉ के पास भी 4 है उसके. ये लिया 3 चाहिए अब उसको. इसको दिलाएंगे जानबूझ के सारे ऑर्ब्स. Confident to potentially the very end. Still playing ahead, still showing presence, unrelenting. They fall away now. Hoping to maybe cost EG a little utility, but it's something. He's waiting. This guy is pixel perfect. Nice. Saken's the one to find it. ओ ये यार डैश करे तो क्या शिट यार. उसकी मूवमेंट सही थी बट डैश वो ये हमारे भाई जेट में जानते हैं जी. I don't think noted just the reposition there. Shit यार. यहाँ पे डैश करना था उसकी तरफ मोड़ के करना था डैश. हाँ बट वही ना यार समथिंग अनलकी हो रहा है. 2 बार हो गया ऐसे. नहीं तो वो कर लेगा पता है मेरे को. या बस ये भाई ये पेपर एक्स निकाल देना तो ये राउंड निकाल दो बस. फिर समथिंग लास्ट में निकाल देगा फॉर श्योर. It's not anymore. And now towards the side, he's calling for backup. Does he stay? Does he leave? 𝙬𝙤𝙤 one away from his ult again. And he's going to take towards the side. भाई इसको एक अल्ट चाहिए. एक किल पे एक और पे अल्ट भी आ जाएगा उसका. शिट यार. He's going to have the showstopper. This is it. This is huge. 𝙬𝙤 now. Got to be careful. He's a little ahead of expectation, but come on the way. He's going to take him down. Still trying to dig deeper. Nice. अल्ट भी वेस्ट. बढ़िया. 𝙬𝙤 ने बहुत बढ़िया कर दिया. Still anyone's game here. Come on, the next trying to step into the ring. 𝙬𝙤 one on the other side. Ethan's found Mind Freak is down to 2. This could be it. Another chance for 𝙬𝙤. Yeah. NT. GG bhai. World champions. Well played. Well played. Congratulations to EG. But well played. PRX. From 0 to hero across this year, Lauren. PRX वाले stats देख रहे हैं. You can see what it means to them as well. All those sticks and stones thrown have just made their empire. Everyone doubted them from the word go. And with every step they've taken, they have proven themselves one of the best we have in the game. They put their hearts and souls into this to face down a team like PRX here and deliver is something incredibly special. No, they deserve it, but that's why I don't like to support one single team, bro. It hurts, man. Dude, it hurts, yaar. Seriously, it kinda hurts. That's why I like both teams. Support both teams. Best है. एक टीम को support करो ना और हारते तो दुख होता है. But again, never do a hate thing. ठीक है, it's okay. But EG really played well. Speechless. What a performance today as well. Talked about elevating, talked about stepping up to the plate and delivering. Jing बहुत नाराज होगा यार. नहीं. I think they did good fight, yaar. Okay, they didn't win, but they did fight. Respect should be given. See, everybody is respecting it. Who never became kings, but they truly standing ovation. Every single time you see them, you see that potential. You see all that they've achieved. A true fan चल favorite. भाई अब तो मैं जा रहा हूँ ये. Absolutely. And a new one is born here with EG. Another round of applause here for PRX. Respect shown down on the stage as well. Absolutely.
A team that never changed how they played, headstrong in their approach, believed in themselves and the style. And it took them this far. But today is EG's day. They had this feeling in Tokyo, they faced the finals and they fell. And now, the hometown heroes, the true underdogs, a Cinderella story. Became so close, dude, every single time, just like Cloud9, you know? But today, we get to see it happen. Every single time they come close and then... just to take stock of their performance here, it's just been speechless. What started off as a season of misery ends in a season of infamy. Give it up for your 2023 World Champions! नहीं यार, लास्ट में समथिंग के साथ बहुत अनलकी हुआ ना. एक बार वो अल्ट से मर गया, ऊपर इतना उसने मार दिया, और दूसरा वो डैश गलत हो गया. ये तो जिंदा रहता हो जाता डेफिनेटली. टीम ने भी पूरा ट्राई किया, एंड में थोड़ा सा अनलकी हो गया, नहीं तो बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ. हम शायद से ओटी देखते भी, जीतते भी, पर्ल पे भी जाते. That is a sound I love to hear. You can't beat that. Bloody hell. And they're so deserving of it. God, you can't say a bad word about them. So hard. Blood, sweat and tears have gone into transforming this team. And I mean, Ethan, you talk about talent, you talk about 𝙬𝙤𝙤𝙤 coming in. This guy, he talked shit and he actually stood the test. The turning point for this roster. Brought him in, revitalized the side. Honestly, it's been a pleasure to watch these boys figure it out, get it together. You saw the potential starting to build, and then here, what a step up. I mean, just to come away from that as well, 𝙬𝙤𝙤𝙤. Christ. What the hell was he on today? 26 kills? That's one of the most phenomenal grand finals. I just want to see the interview and then go. And you talk about brutal conditions, doing that on the likes of Split, changing the whole thing up, playing a map. ये देखिए राउंड एक बहुत अच्छा था. Had the advantage, and you come from the top side, you get that veto right, and 𝙬𝙤𝙤𝙤 still thrive. I'm just looking at it there, 26 kills, 7 first bloods. It's just unbelievable. And the crazy thing is, well, this isn't even to allude to the fact that this is possibly a solo carry performance. Everybody from EG stepped up today. Yes, yes. Yeah, no, I don't think, if you looked across the maps there, you could find a player on every single map. Very little to fault, honestly, in terms of the overall approach, in terms of the performance, in terms of even coming into a stacked veto. You feel it's hard to win a veto versus PRX, period, let alone when they get 2 bans. And they've already played you, they've already just seen you play a best of 5. You talk about even the expectation of coming in off the back of that loud game. Yep, and we also talked about EG having to potentially reinvent themselves slightly to keep up with PRX. And they said that themselves. Yes. They said that themselves. And they deliver here a 3-1. The job is done for them. What a moment. That's a very special victory. Genuinely. Truly is. Oh man, what a day. What a final. Yeah, yeah. I think a lot of us kind of looked at this and thought, you know, PRX could be the ones, at least the full distance on the maps there, but... It's tough as well because even with the scoreline here, 3-1, they came so close to doing it. Of course they did. And it would have been almost another fairy tale for them, for Jing to go out this way, but it just wasn't there. Evil Geniuses today on a different level altogether. You're absolutely right. And for PRX and Jing specifically, he's left his legacy. What was the reason? Dude, Coach, even if he react that way, I don't think so they even hear it, the team. Because
it's not only coaches are allowed only in timeout, I guess. Coaches cannot say in between of game or round, so not really a reason of the coach. It's overall. The reason can be overall or none. You guys need to understand the level, the pressurized, the every single thing. When you play on high ranks, you will get it. Trust me. But that on that stage, it's into 10. When I'm playing on high ranks, everybody play on high ranks, Radiant and all. You will get the ways. Like, yeah, into 10 taps. Give it up one more time for EG, everybody. Great job. Unbelievable stuff. Congratulations. Top to bottom. And of course, a legendary moment. Let's get into this first. Tonight. Let's talk. Actually, yeah, this was last time because he's going for the military mastermind, service. the brain trust, a legend, my good friend, Potter. You started this season off and everyone doubted you, but you believed. I remember talking to you at Lock-In. You believed, you still believed, and now you're here. You are a world champion. Yeah. How does that feel? It feels pretty good. It feels pretty good. Yeah, GB, you were there when I was screaming it from the rooftops that this motherfucker, this kid right here, and this kid, we're gonna be the best players in NA. I have two of the best initiators, the best Sentinel, the best Raze, and the best Jet right here. Right. World champions. Let's talk to the IGL. 𝙬𝙤𝙤𝙧, my man, what a journey you have been through. We've seen you really just shine in so many different roles. You try to be a playmaker for your team. From them you learn a lot of in-game leader, you're the vocal leader. You were talking a lot of trash as well. Were you talking all that trash because you felt confident that you'd hold this right here? Yeah, 100%. And yeah, my teammates are some of the best players in the world. They're some of my greatest friends. I love them to death. I wouldn't rather win it with anyone else. This has been the year of a lifetime, and I'm just so thankful for everyone, the fans, my friends, family. Thank you guys so much for supporting us. We wouldn't be here without you guys. Incredible. Now, the dog, the jaw, the one and only. My man, you were, let's get some barks going. 𝙬𝙤𝙤𝙧, you were on fire on Lotus. What was going on? It really felt like you were in this mindset of, push, because we're not going to lose this. We're going to win this game here and now. Was that the mindset? Because it felt like it, watching it from the seats. Oh, it's definitely the mindset. When I saw that double duelist, it reminded me of me and 𝙬𝙤𝙤𝙤 playing split. Yeah. I was the only duelist at the time right now for map Lotus. So I just knew I had to make all the plays and do the big plays. And I got that dog in me, so I'm going to make sure I get those plays right every single time. That's right. And then, of course, the silent assassin. The man who rarely smiles, but right now is smiling a big old grin. It's Ethan. You came into Valorant as one of the more prolific players. You had a legacy in CS that you were trying to bring over to this game. And now you have done so. Do you feel like at this point it was like a good decision to jump into this, but also to join this team as well when the offer came through? Oh yeah, I couldn't have picked a better group of guys. I love them. Yeah. I love them. This guy's trying to blow my ears out. He talks for you, talk for him. That's thank you. And then, my man, Calm. A lot of people doubted you, man. And I wouldn't be shocked if you even at points doubted yourself as well, because of just how difficult it was to get to this point. But at the start of the season up until now, obviously a massive journey that you undertook. But what did you personally do? Was it just like you getting back to the lab, grinding, working your butt off? What was it, man? Yeah, that's true. Every day, just making sure I gave it my 100%, always like my family taught me. Just always give it 100%, and I just want to say I did this for my grandfather. I finally did it. Damn right. Damn right. And last but certainly not least, 𝙬𝙤𝙤𝙤. 𝙬𝙤𝙤𝙤. Thank you, Boosty. Thank you. 𝙬𝙤𝙤𝙤,
when you came into this team, I remember seeing the conversation online, and there were question marks. People were unsure. They were like, wait, who is this guy? Why is he on this team? Is this just a meme? They weren't sure. And then you start playing, and then you start shutting people up. I mean, was that it? Was that your motivation the whole time? Like the moment you got on this team, you just want to prove everyone wrong? Oh yeah. Fuck the haters. Respect my fucking name. I'm the best player in this game. Best player! You know what? He's a champion. We'll give him that one. We'll give him that one. Hey, you know what? Last but certainly not least, you know what, Boosie, we'll go to you since you're in the IGL. Is this the start of an evil genius's dynasty? Absolutely. Absolutely? Absolutely. Absolutely. Well, Absolutely. I don't think there's anything left to say besides give it up one more time for your world champions, evil geniuses. But that's like he's from NNR, so basically even if they say those words, I think it won't be a much problem. But वहीं अगर C के ऐसे प्लेस करेगा या फिर maybe UK, I don't know, then be an issue. I don't know. I mean, I have no clue how the rules work there. Finally lifted a trophy. Yeah, I mean, so underappreciated at the beginning of the season. Everybody doubting them. We've been hitting it over and over and over again, and it just makes this moment so Off-season team come in and nailed it out, the entire season. Doubters throughout pretty much most of it as well. Even at this point, when they entered champs, people were still doubting them, despite the fact that they made the grand finals at Tokyo. But now they've proven and shut up. Chalo guys, I think it's time we should sleep. They have ended their year in more than success. It's 90-90 time. 90-90. Okay, before going, just tell me one thing. ये मैं zoom out कर दूँ अब या ऐसे ही रखना है? Tell me fast. I think मेरे को ऐसे भी अच्छा है कभी-कभी मैं वैसे रख दूँगा. Zoom out. 153 zoom in है, याद रखूँगा 150 के अराउंड. हाँ, रेव मैं देख लिया. या तो मैं ऐसे रखूँगा, नहीं तो मैं इतना 50 ऐसे रख दूँगा. कभी-कभी ये, है ना? Zoom in ही ज़्यादा सही है. I feel like zoom in ज़्यादा सही भी है, but इतना भी नहीं. कभी-कभी. ठीक है, याद रहेगा. अभी के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ zoom in. आगे देख. कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई. चलो guys, I'm off. See you guys tomorrow. Tomorrow I have to go in morning. Then I will be back. If I lose, I will be come back soon. Otherwise, I will stream around. I will stream in night. Probably I will stream in night. If I didn't. I think कल अर्ली एसेस करना है तो इसलिए मैं रात में ही स्ट्रीम करूँगा. बाकी देखते हैं. ठीक है. चलो. Take care. Good night, good morning, and good night. Sweet dreams, guys. Have a good sleep. Bye bye.